नम मते मे भी गणेश वंदना पूरा बोलिया को टाइम भी नहीं से स्टार्ट करवा गण गण गणपताय नमो तो मु रिक्वेस्ट करी आम प्रेसिडेंट सर मिस्टर सूर्य नारायण मिश्र टू वेलकम द इवेंट एंड से समथिंग टू अस। ओवर टू सूर्य भाई। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज आमर प्रवासी ओडिया विकास समिति विचार करुच्ची जे आमर 2036 रे आम ओडिशा को केमिति परिकल्पना करिबा एवं से परिकल्पना पई 2086 रे केमिति देखिबा। आज आम पाखरे जे अछंती आमर एई इनागुरेशन पाई उद्घाटन पाई सोचती ओडिशार बरपुत्र श्री जस्टिस दीपक मिश्र तांको मु स्वागत करुच्ची। मो सामने आमानक मध्यरे बहु वरिष्ठ अधिकारी एकाडेमिशियंस कॉर्पोरेट हेड्स एवं विज्ञ व्यक्तित्व उपस्थित अछंती। से विज्ञतार परिचय देवे। ओडिशा 2036 तो बहुत कम दिन अच्छी, वर्ष तो बहुत जल्दी पड़े जाऊँगी। आम मानकर बयस बढ़ी बढ़ी जाऊँगी किंतु 2036 और 86 जो आम थिबा कि नथिबा आमर परवर्ती पीढ़ी पर आम कौन छाड़ी दे जावा, परवर्ती पीढ़ी कौन देखिब, आम कि रखा ना सब सारीदवा, आमर ए देश रहिब ना तलितलांत हेब। से तलितलांतरू मुक्त रहिबापई ओडिशार एक भिन्न परिचय, विकसित ओडिशार परिचय। आम ओडिशा बहुराष्ट्र विश्वर बहुराष्ट्र मानक तुलन में साइज रे पॉपुलेशन रे बड़ अच्छी बा समान अच्छी। तो से भली जर्मन भाया स्टेट मध्य आम स्टेट सांगे कंपेरेबल, किंतु कथा होची समान आमठू बहुत आगे अच्छी। आमे गोटे जगार अच्छे, आमे सबुदिन वृद्धि करुचे, आहुरी वृद्धि करवा। आम स्टेट रे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रो आवश्यकता अच्छी। आम स्टेट रे हॉस्पिटैलिटी कोस्टलाइन रो इन्वेस्टमेंट आवश्यकता अच्छी। धीरे धीरे आसूची, नुआ नुआ चित्र लोक प्रतिफलन करुचंती, आहुरी करिवे। से विषय आज ये विज्ञ लोक मैंने अच्छा आमर लोकर आमर पाखे खाइबार प्रबलता अच्छी, किंतु जाजपुर रे किसी लोक कुपोषण अच्छा। से भली भाव में आमर भविष्य वंशधर को किंतु भल खाद्य दे परिबा, भल पोषण दे परिबा, भल व्यवहार दे परिबा, भल आमर जो भाया पुरी भाया क्षेत्र जोठी बहु सन्थ आसीथिले तांकर जीवन मोक्ष प्राप्त करथिले, सेही भली जगार वर्तमान जी जीव सी मध्य मोक्ष आड़ को मुहाई पार से भली व्यवस्था मध्य रहिबा दरकार। ये विजन सी गोटे दायित्व। जदि से टॉपिक आज ना किंतु ए टॉपिक आम 220 टॉपिक भाविचु आरे चर्चा हेबो। आपण मानकर दिनम चर्चा हेबो। विज्ञ व्यक्ति जेहेतु अबे अल्प लोक आज डाकिचु, ये 200 लोकर समागम, काली आमर 1000 लोकर समागम अच्छी जोटी कल्चरल इवेंट अच्छी। तेणु आज जो मैंने आसने काली भी आसवे। यही स्वागत सम्भाषण सहित धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सूर्य भाई। गोटे कोई इवेंट स्टार्ट करियो गले आमको गोटे बहुत मान्यवर व्यक्ति दरकार गोटे इवेंट को स्टार्ट करने या इनागुरेट करने। तो से आम ग्रहण में अच्छा सर जस्टिस फॉर्मर जस्टिस ऑनरेबल फॉर्मर जस्टिस दीपक मिश्र सर। तो मुझे कहि आम मानू किछिटा भल कथा कहे, आम मनकर किछिटा मार्गदर्शन करेंगे। आउ सर ओवर टू यू, प्लीज से समथिंग टू अस एंड एनकरेज आवर ओडिशा पीपल। सर ओवर टू यू।
Dignitaries on the dais, I think I should call you friends. I really do not know why I have been invited to this function. Ordinarily, I do not predict future. I am not an astrologer. I am not engaged in the business of calculation. I do not know how to compute. But I'll tell you some stories. From stories, you can go to 2036 and 2086. The year was 1974. A debate was given by an organization, Cuttack, in 2001 or 2001. You see, young minds, they can imagine, and they imagine this will happen, this will happen. But from 74 to 96, nothing much happened. In the sense, whatever happened was very slow. But lo and behold, after 2001 or 2004, things changed dramatically. What you could say in 1974 with regard to certain happenstances in 1996 or 2001 was quite different than what you are going to say today. I'm not saying prediction in 2036 or 1986, because there is a dramatic change in the modern world, which was not so. The reason number one is this. After globalization, there has been quite a bit of transformation in the economic world. Second, the scientific development. Who knew about mobile in 90? Who knew about internet? Who knew about artificial intelligence? I always maintain, and I still maintain, artificial intelligence cannot substitute the human intelligence. It's a tool, but this tool will assist to a lot. I would suggest, as far as 2036 is concerned, there has to be adroit endeavor to really excel in artificial intelligence. How do you do it? How do the younger generation do it? And how do the older generation accept it? That will be a futuristic phenomenon. The chartered accountant who spoke before me, he said about the data. I can't give the data, but I have a vision. You see, there is a distinction between a vision and a dream. Martin Luther King Jr. said, I have a dream. While he was speaking about that conception of dream, he was really thinking that we have to be liberated from that racial prejudice, XYZ factors. But when you have a vision, it's based on certain practical knowledge and data in present time. At present, unless you have that, you really can't imagine. There are politicians here, there are academicians here, there are technocrats here, there are, I think, other type of thinkers are there, they will imagine. I will harp on education. Everyone is saying the past, education in the past was excellent. Remember, you will go backward if you think past was the best. It's not. What men had done, men can do. Einstein
is not the end of science. There can be scientists, there can be teachers, there can be award winners in the world literature, other fields in Orissa in 2036. I presume, I don't see anyone very old here, all of you will be alive in 2036. Take it from me, this will happen. And if it doesn't happen, you write a postscript that I had told you something wrong. I can be wrong, isn't it? But take it from me. The education must be scientific, and it must allow people to develop their imagination and practical knowledge. There has to be a classical bent of mind with a slightly combined scientific, practical, and pragmatic mind. That is not happening today. That has to happen. Second, you see, the Constitution of India speaks of inclusiveness. Inclusiveness means all people must have equality and have the opportunity. We must welcome each other, we must love each other, and we must think that he is not lesser than me. I am not saying that you will abandon your priorities, your, gifted arrogance. When I say gifted arrogance, it's something different. But the man in the forest, the man in the village, the man in the town, the man in the city, all must belong, that they equally belong to Orissa, and there is no partiality. That equal feeling, a constitutional inclusiveness, the tribe, the caste, all should have the opportunity, and the state must try, people must try, not only try, they must feel. Are you feeling the same? I presume if we really make an effort by 2036, 2086, I think we'll be there. We'll be all equal in a different way, not economically, but as far as humanity is concerned. Third aspect I would like to give emphasis on is sports. Orissa is doing well in hockey, football, and some other sports. But still there are some other some other athletes like, shall I say, cricket. The young boys of other states are making a lot of money in the field of cricket. I don't think anyone from Orissa is playing IPL. Anyone? No. There has to be effort. Why they are not able to play? I think we should not wait till 2036. By 2025, there must be some players in IPL, because that is growth. Sports is a growth. And while playing sports, we must inculcate sports attitude among the players. Another aspect, are you really caring for our children? Are you really caring for the gender justice? Let's not give speeches. I know there will be speeches today. I am also giving a speech, but a significant but. Respect women. And respect women not out of any kind of
fear, but real consideration, real respect, and children allow them to grow as they desire to go. That you have to do mathematics, you have to do this English. It's not that way. If someone is interested in software engineering, let him do it. Allow them to progress on their path. Do not dominate on them, but guide them intellectually, passionately, and freely. They must have that freedom. My verbal adjectives might be seeming quite different to you, but that's life. And the last thing I would like to say, you see, it pains me. Forest areas in Orissa has to develop. There has to be afforestation. How you do it, I can't give, I'm not a technical man. I'm not a man who looks after the forests. I can give the idea. And according to me, there is many a possibility, many an opportunity where the forests can grow. And if the forests grow, we can have a proper climate. You will not see in the television, what is that? The so-and-so city is burning. I think the temperature will come down, at least in Orissa. That's a good thing for all of us. I've been told that I have to speak for 10 minutes. I can go on, but I think I will also wait for some time to listen to some people for 15 minutes. Then I have to leave. And I must say, I feel quite elated to be here. I don't think I knew personally anyone who is present here. Might have met them. And with this delight and privilege, I inaugurate this great, idealistic, visionary, futuristic, and progressive function. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for your nice advice and suggestions. आमे माने ओडिस पीओवीएस प्रवासी ओडिया विकास समिति सब बेले चेष्टा करे ओडिशा पई ओडिशार प्रवासी ओडिया जो माने दिल्ली रे अछंती आउटसाइड दिल्ली रे अछंती इंडिया बाहर भी अछंती वी ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग फॉर देम एंड ऑलवेज ट्राई टू डू सब इंटेलेक्चुअल इवेंट्स सब वर्ष आमे गोटे ना गोटे इंटेलेक्चुअल इवेंट करू गोटे कल्चरल इवेंट भी करू एंड प्रवासी ओडिया विकास समिति बहुत मेंबर मते नुआ भी देखा होचंती पुराना देखा होचंती अबिका बहुत बढ़ी भी जलानी पिछ पछ गोटे 2 वर्ष हैला कोविड बेले टिके आमे स्लो हो जाइथलु बट आमे कोविड बेले टिके आमे स्लो हो जाइथलु बट तापर आमे हमरो इवेंट्स सब वर्ष 2-2टा 3-3टा इंटेलेक्चुअल इवेंट आमे करिया को चेष्टा करू से पे विजन ओडिशा गोटे ता भितरु तो मु हमरो सब मेंबर मानकर योगदान एथरे बहुत से पे मु आमर पीयूष भाई को श्री पीयूष महापात्र भाई को इनवाइट करी स्टेज उपर को आ रिक्वेस्ट करी एलसी को प्लीज कम विथ द मोमेंटो फॉर सर एंड ऑनरिंग टू द गेस्ट बाय द मोमेंटो थैंक यू पीयूष भाई
अबिका मु रिक्वेस्ट करबी आमर प्रिय भाई सुशांत महापात्र भाई प्लीज थैंक्स टू आवर गेस्ट टू आवर इनवाइटीज आवर डेलीगेट्स एंड आवर स्पीकर्स थैंक यू ओवर टू यू सर जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार मंचस्थ पूर्वतन विचारपति श्रीजुक्त दीपक मिश्र प्रवासी ओडिया विकास समितिर सभापति श्री सूर्यनारायण मिश्र मो सामने थिबा अन्य बौद्धिक व्यक्तित्वगण अन्य सहयोगी और बंधुगण आज प्रवासी ओडिया विकास समिति आनुकूल्य रे जो कार्यक्रम होउछि यहाँ निहाती महत्वपूर्ण आज दिन तमाम आमे ओडिशार माने भविष्य ओडिशार विषय रे अनेक बौद्धिक चर्चा करिवा आउ सेथिरे आम मानकर दायित्व कौन रहिबो आमे कौन करि परिवा से नहीं भी विवेचना करिवा आज विचारपति श्री मिश्र उद्घाटक भावे योगदान करी आमर जातीयता ओडिशा जातीयता और भारतीय महाजातीयता को किपरि समृद्ध करिवा से नहीं आलोकपात करथिले आज आमे आगामी भविष्यतर ओडिशा किपरि हेबो से नहीं आमर भावना को सुदृढ़ करिवार प्रयास करथिबारु श्री मिश्र को अनेक अनेक धन्यवाद आमर स्पॉन्सर इंडियन ऑयल ऑयल इंडिया इरी एचडीएफसी बैंक वेदांता क्यूसिल सिडबी जीआरसी इंडिया वापकॉस सेल डालमा नाल्को मीडिया पार्टनर कनक न्यूज टीवी9 एवं अन्य समस्त मीडिया बंधु मानू बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान सेशन चालू रहिबो आपण मानकु समस्त को अनुरोध बसी रुहंतु एवं एथिरे योगदान करंतु धन्यवाद मु समस्त को रिक्वेस्ट करी गोटे स्मॉल टी ब्रेक पाई तो विल हैव अ टी ब्रेक फॉर बिफोर फर्स्ट सेशन फॉर दैट वी नीड फ्यू टाइम्स टू सेटल थिंग्स थैंक यू जय जगन्नाथ आमे अभी आमर फर्स्ट सेशन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ओडिशा स्टार्ट करिया को जाउचु
तो से मु रिक्वेस्ट करी जदि चा हो गलानी तो आम बसी जा so that, and I request all the members and guests, delegates, please settle down yourself. And this is the first session of this day, of this event, Vision Odisha. This is a holistic development of Odisha. So I request our speakers to the dais. Sri Amar Patnaik sir, Member of Parliament, Rajya Sabha. Sri Santosh Kumar Sarangi, IAS Director General of Foreign Trade, Minister of Commerce and Industry. Sri Surjit Bhujabala, IRS Principal Director General, DGGI. Sri Rajesh Mahapatra, Editor Press, Trust of India. Now I request our moderator of this panel, Mr. Surya Narayan Mishra, please come to the dash with our guest. Volunteers, please guide our speakers to the dais. Thank you. Five chairs required, na? Here this view. The first session of the program, requesting all the delegates who are in backside, please get seated here. Within a second, please take cognizance of this. Request Please all be our seated. delegates, please settle down yourself. The panel is going to start, so request from the registration desks as well. Who are in front of the registration desk, please settle down yourself. Our volunteers will help you also. Volunteers, please guide our delegates to settle down themselves. Now I am introducing in my right Sri Amar Pat. Currently serving Member of Parliament, Rajya Sabha, and also the head of the IT wing and spokesperson of BJD. He is the former Indian Audit and Account Service Officer under the Comptroller and Auditor General, and also served as the Principal Account General for the states of Sikkim, Odisha, West Bengal and Kerala, but he opted out for the voluntary, and now is beside as a role of politician, he also has a role of author and is also a regular columnist in most of the national newspapers of India, and also advises different clients on data privacy, data protection, technology and corporate affairs. Mu tanku ei hisabe re janichi khali padhe tanku. Thank you for here. You have accepted our request. Sri Bhujabal sir kandi. Surjit Bhujabal. Sri Santosh Kumar Sarangi is currently working as the Director General of Foreign Trade under the Ministry of Commerce and Industry. He is from Odisha cadre, IS officer. The 1994 IS officer has earlier worked as Additional Secretary in the Department of School Education, Literacy in the Ministry of Education. Mr. Sarangi is the first ODI IS officer to take charge of the DGFT. Please have a clap. He has 5 long years of serving in the Ministry of He has 5 long years of serving in the Ministry of Commerce as Joint Secretary and Chairman APEDA. Mu correct karneli se ako mu ako purguri aru odia thile. Welcome him.
Sri Surjit Bhujawal. He is a revenue cum custom officer and has been recently appointed as the head of the principal director general of GST intelligence, the apex intelligence institution of the intelligence functioning under the CBIT custom department revenue under the Ministry of Finance. It is a proud moment of our state as he is one of the senior officer to be entrusted in the tax collection and coalition and dissemination of intelligence in relation to the evasion of the goods and service tax duties of central excise on the pan India basis. से भद्रभक्ति से व्यक्ति जे कही कस्टम ऑफिसर जो पूर्ण मैंने भारत इतिहास जो अच्छी तार फोटो गुड़ाक अच्छी कहले ओडिया लोक मान फोटो ये लगे दरकार केते ओडिया प्रिय देखो ओडियार लोक जानवे जे कौन कौन किए किए कम करते ओडिशा रे से होचंदी से सुरजित भजबल आम सांगे अच्छा श्री राजेश महापात्र. Rajesh Mehta has been at various points over last 25 years a business journalist, political analyst and public policy expert, editor and newsroom leader. He has worked with the international publications such as Associated Press and Breeze News, formerly Knight Rider Financial Services, before an extended stint at Hindustan Times, where he drove organizational change and digital innovation. He is now editor of Press Trust of India. Press Trust of India is the largest news provider. And he has more than 300 journalists bringing news that breaks in the field of politics, economy, sports and everything else. He is also the founder and director of Odisha Dialogues, a non-partisan thought leadership forum that promotes Odisha focused research and advocacy. Rajesh studies economics at the Delhi University in JNU, where his research focuses on political economy of food and security. Now, I am requesting. Actually, this session should be moderated by Sri Manoranjan Mishra, editor Connect TV. He is on the way. The flight will come late, so he is on the way. I am taking care. Now, I request Sri Patnaik. Every panelist has to say 5 to 7 minutes on their vision. Then the next action plan, if Manoranjan is coming, he will put the questions. So, before that, I request all the panelists to have give their vision for 2036-86. That is the economic growth and other holistic approach. This is the holistic growth of Odisha, and these people are the best people who can give us the idea and the formulations. Whatever the best is, we would like to hear from you, Sri Patnaik. Thank you so much. उपस्थित अच्छा समस्त को मोर नमस्कार. प्रवासी ओडिया ट्रस्ट को मत एठाकू डाकी निमंत्रण दे समस्त को धन्यवाद दूची ऑर्गेनाइजर्स मान को एठारे उपस्थित थिबा इंडिया फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑनरेबल श्री दीपक मिश्रा सर को नमस्कार करुच्ची. आपण समस्त को एठारे देखी बहुत खुशी लगुच. मु दिल्ली रे ही पढ़ी थी ग्रेजुएशन लेवल रे दिल्ली यूनिवर्सिटी रे. तेणु मु प्राय से समय स्टूडेंट जो मैंने थिले दिल्ली यूनिवर्सिटी रे आ जो मैंने प्रोबेबली JNU रे भी थिले से मानक संगे कांटेक्ट थिले. किंतु एठा को आसिला परे पार्लियामेंट को आसला परे आई इंटरैक्ट विथ a host of people from Orissa who have been excelling in different fields. I feel very proud of being an Oriya. Sir ja कहले एबे कहउथिले ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा कि फ्यूचर रे कोन हो जणा नहीं किंतु गोटिए कथा कि Odisha रो आइडेंटिटी एज एन Oriya, one feels now proud to say that you are an Oriya anywhere in the country and maybe even abroad. Orissa has achieved quite a bit. Orissa has achieved a number of, crossed a number of milestones. One of the speakers was saying our growth rate is currently higher than the national average. But you know, Sethira, one should also be careful to say that we have to maintain this growth rate over a long period of time, and only then probably the fruits of development, fruits of economic growth would percolate down to all sections of society. मु आ उपरे डिटेल कहवा पूर्व खाली गोटे जिनस कहवाई चाहिए कि आम जो विजन 2036 कथा हो कि विजन 2086
we also have to realize, we also have to take into account that our vision has to take into account what is happening around us, what is happening nationally, what is happening to the society, how the society has changed, society's composition has changed. For example, Orissa currently is one of the states besides the southern states which has already reached the population replacement ratio of 2.1, which basically means you will only see in future an older Odisha compared to a younger Odisha now. The same thing is already happening in the south. India will have the demographic advantage thanks to UP and other states for certainly another 15 to 20 years. But Orissa will not be having that advantage anymore. So this is a reality. So I'm trying to tell you that the context of having a vision of 2036 and 2086 has to take into account the changes that would be happening in the society at the social level, at the political level, at the economic level, at the cultural level, at the gender level. All these realities also have to be taken into account while preparing a vision or while making a vision. Now let me say, I talked to you about society level. I said that we will be getting older. Now what does it mean? What it means is that households will have to spend much more money on health. Purely as an economist, you would understand that the household income, a substantial portion of it currently is about out-of-pocket expenses is on an average to the extent in India itself is about 52-53%. But it will even increase further. Now what has happened now? The reality is in Orissa we have the unique Orissa model of universal health care, the Biju Swasthya Kalyani Yojana. Why it is different from an insurance-based model? Because insurance-based model, you have to prefer your claims, and some of the claims may be accepted, some of the claims may be rejected. In the claims, in the insurance model, you will also have a situation where outdoor patients, jone loko gala patient tara godeta bhangala se sange sange plaster kariki pale as peribo taku inpatient admission haba darkar no pay pade, kintu sei portion is not covered. Whereas if you have a universal health care like the Biju Swasthya Kalyani Yojana, then you will find that every hospital treatment would be covered. Now what would be the meaning of this? The meaning of this is, if we have to continue the universal health care in the health sector, and which is required because Orissa is getting older, so older people in households will not have to spend more money on health, then to maintain this, we need to have that kind of budget provision in our budget for another 10, 20, 30, 50 years. Now if you want to have that kind of a budget provision, it automatically means that our revenue sources also have to come, it has to increase substantially. The revenue sources come from two sources. One is the tax revenue and the non-tax revenue. Currently, Orissa's happy position is because of the non-tax revenue, particularly coming from auction of the minerals and mines-based industries. But what would we also require is that we will also have to get more resources from our revenue means. Now, revenue sources are very limited for most of the states, including Orissa. Now, how does then one feed this health system? This health system is something like the NHS of UK. Completely, the government is bearing this expenditure. This is desirable. This is unique model. Maybe the country will follow this, but we need to have these resources. So my vision for health would be, we would have health coverage for every Odia, everywhere in the state, outside the state. We should also have Orissa build up as a health hub, in which case our tertiary health care would be attractive to people out around the region who would probably come and spend there. We could also have the alternative health, that is wellness centers, the Kerala model. We could actually make it stronger because we have the strength in this. We have the strength in taking advantage of relive some of our old traditions of treating diseases and make it available to people just as Kerala does. Kerala
गेट्स प्रिंसिपल एजी केरला थी मुझे देखी people from the Middle East, people from the Gulf come in huge numbers to these hotels just for wellness, and there are pre-booked packages available, Siddha, Unani, in various health disciplines, alternative health disciplines. So that could be one area, that vision. I think we should have this. For building our revenue stream, there are limited scope for building the revenue stream for most states, including Orissa. So what is the alternative? The alternative is to get capital from outside. Capital from outside can come through two sources. One is domestic capital, the other one is foreign capital. Now we have to, our vision, my vision is that we should be able to, we have not really unlocked that potential to the extent possible. We may have built these huge industries, extractive industries, but I think there is enormous scope for building the electronic sector, the digital sector. Orissa, I visualize in 2036 and beyond, should also be taking the lead in the digital economy of this country. Currently, it is doing very well, but we have to take it forward, and for that we have to invest in our various innovation laboratories. We have to invest in our startup ecosystem, make it better, and most significantly, what I foresee which is going to happen in 2036 if we go that way is making our growth process completely or largely women-led. Now, how that would happen? We are already progressing in that direction. Currently, the participation of women in the labor force in the country as a whole is very less compared to the southeastern region, compared to many other countries like Vietnam, China, and many others, US. What we can do, I have written on this earlier, is that since we have already built a very robust women self-help group ecosystem in our state, and we have about 70 lakh women in 7 lakh women SHGs groups, we have to empower them now slowly to levitate or graduate into a small and micro sector. Now, if they go into a small micro sector, it would require processing. There was a discussion, agro-processing. Agro-processing could be one area where we should be able to position ourselves through these women SHGs, and it will create jobs, it will empower them, and most importantly, they will become a part of the driver of the growth in the state, which is lacking in most of the states. There we can actually take the lead. Whenever I go to the field, I'm extremely pleased to see the way women have taken charge in remote areas, in Raigada, in Malkangiri, in Bolangir. So I think there is a lot of potential there. It has to be unleashed. Younger people, we have to diversify the skill set that we are giving to them. Younger women who are into the self-help groups, they would not like to make the traditional items that they used to make. They would probably like to be in beauty segment. They could be in handlooms. They could be in designer wear. That kind of a training, we have to graduate them, and that is what my vision is, and I think that is what probably is going to happen if we follow the current trajectory. The another point I will say is on the since I have very little time, I'll come probably when you take the next round, but I'll say that the strength of our political society, the society that we have, is that we have always been, compared to the rest of the country, extremely peaceful state. Whenever I talk to, I have been a student here, as I said, in Delhi University, right from 1984 onwards. Whenever I have talked about Orissa with people outside, Orissa's identity has been something like wedded to Jagannath culture. And Jagannath culture is, as it says, Jagataranatha Jagannath, Vasudeva Kutumbakam. So that kind of culture, since it is so strongly rooted in the outside Odisha mind, I think we will have to actually build that, establish our identity based on that, and therefore we will remain a peaceful state as long as we believe in the Lord of the universe, and that is what we do. So my future vision is that there will be stability, there will be continuity, there will be peace, there will be no civil riots, there will be no communal riots, there will be no inter-caste riots, which happens in many states.
we have to maintain that fabric. All of us, the society has to maintain that fabric. In the gender front, I have already spoken. I also, sir had spoken about, Orissa. I see that it will become a sports hub. It will become a digital hub. It's already transforming itself into an education hub. It is also, I talked about the health hub. I brought a new dimension that you can bring alternate health systems and excel in that. And one more thing, which is again our strength, and which would be a source of employment, is to somehow take the lead in the sector in which we have already the competitive advantage. That is the handloom and the handicraft sector. And it is currently linked to our culture. This is a soft power. This soft power is what India is striving to have. And this soft power, if it can be led by Odisha, which I foresee happening in the future, if we really work on it, then Odisha could be actually the soft power capital of India. So whenever India tries to project India's power abroad, then Odisha's story should come. Odisha's soft power should come. And that will be driven by culture, heritage, handloom, handicrafts, nature, circular economy, a green path, because Orissa people always live in communion with nature, live in harmony with nature. We should not destroy it. Last point that I would make is that the ambition, the aspirational level of the young Orissa, young Orias are currently very high. It should continue to remain high. It should continue to drive them to have unicorns in Orissa, to set up businesses which are quoted by rest of the country, quoted by rest of the world as having been in Orissa. Just as we are talking about skilled in Orissa, that should finally transform into something bigger. And that is the vision that I have for 2036 and going forward 2086. But as I said, the society will also be undergoing changes. Population composition will be changes. We'll be seeing changes. There could be migration. The climate change effect could be there, in which case coastal areas people might migrate. The inequity that currently persists in different regions of Orissa, I foresee that that will reduce. For example, the multidimensional poverty index in the southern part of Orissa is about 59%, whereas on an average for Orissa it is about 29.3%, which basically means that that is the area, or those are the regions of Orissa in which more investment has to be given. The people have to be given more health and education so that they become equal to the rest of the state. So equitous, sustainable, rich both in soft power and in hard power is the future that I see for Odisha in 2036. That's the vision that we have to strive for. That's what we have to drive at, and therefore all of us have to contribute in all this activity. Odisha's uniqueness, which I tell everywhere. In fact, yesterday I was telling to Amitabh Kant and Naina Agarwal Kidwai, Naina Lal Kidwai, and many others in a MP's gathering, that Odisha's strength, which people don't realize, is actually community resilience, community power. If Odisha has succeeded and been an example globally for disaster management, it is because of this community power. After 99, this community resilience has increased. The buy-in in government's programs for disaster management has increased. People take charge of themselves whenever a disaster hits. Now, this particular power has to be transformed to other sectors of the economy as well. When people take charge of their own lives to achieve the vision of 2036 and 2086. With these words, I would, I think, end my first round of speeches. Thank you so much. I'm sorry if I've spoken much. Sorry for the interruption. He don't need my introduction actually. She is none other than Sri Manoranjan Mishra, editor in Kanak TV. He was awarded with the Odisha Journalism Award for his outstanding contribution in the field of journalism. Apart from shaping the editorial contents, he is known
for his impeccable anchoring style. He shows Manoranjan Bistro live every time, but now he is with us. Thank you. Over to Manoranjan Mishra. हेलो धन्यवाद मु प्रथम क्षमा मागिबी मोर टिके विलंब है सो आम सीधा सड़क प्रसंग भितर को जीवा सीत अमर पट्टनायक आमको बहुत भल कथा कहते ओडिशा केमती आगू जाऊँगी मु गोटे मिनिट समय नेबी सीत षडंग पाखक जीवा पूर्व आम सब गाँव पिला ओडिशा को भल भाव आम जाचु गाँव जाचु आउ भुवनेश्वर आम मु बहुत वर्ष है रही तो मु आपन को गोटे कथा केवल कहबी सी तो षडंगी बहु वर्ष धरी ओडिशा रे काम करथिले दिल्ली रे रही एबे ओडिशा को देखुचंती मु जेतले मते प्रश्न पचारे जाए बा मु जेतले काहाकू प्रश्न पचारे जे जदि गोटे समस्या कथा कहा जिवो जे ओडिशा रो सबुठारु बड़ समस्या वर्तमान कोन मु आम गाँ को गले आम लोक मान को गोटे कथा पचारे जे तमे मासकू केते टंका रोजगार करूछ जड़े स्कूल टीचर हूँ जड़े क्लर्क हूँ जड़े नर्स हूँ गाँव में कई तो भल ऑफिसर कई ना यही श्रेणीर अच्छा सरकारी चाकरिया मैंने से बाद दिंतु मु केवल गोटे कथा जानापी चाहे जे मासकू आप केते टंका रोजगार कर गोटे फैमिली जो मैंने गाईटे रखिंट जो मैंने दिन मजदूर कर जो मैंने गछरू नड़िया तोलुंट जो मैंने यात्रा पार्टी काम कर टोटाल इनकम गोटे मासरे केते मु देखे आम गाँव 70% लोकंकर रोजगार 10,000 टंकारु कम आपण थरे चिंता करंतु जदि गोटे परिवार 10,000 टंकारु कम रोजगार करिवो से बंचिबो केमिति ता लाइफस्टाइल कौन हेथिबो तेणु मो विचार रे ओडिशार सबुठारु बड़ समस्या होउची लोकंक हाथ रे टंका नाही एटा होउची सबुठारु बड़ चैलेंज आउ सेही चैलेंज पाई कि सारा ओडिशा वर्तमान काम करवा दरकार जे आम लोकंक हाथ रे टंका केमिति पहुँचबो एटा मो विचार रे सबुठारु बड़ समस्या सबुठारु बड़ चैलेंज शीत षडंगी आम गणरे अछंती बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण विभाग दायित्व थिले अतीत रे भारत सरकार अधीन रे से बहुत काम करुछंती ओडिशा को अति पाखरु देखिचंती मु तांको फॉरेस्ट पार्क रे देखे सबले फिजिकली फिट रहिया पई से चिंता करंती शीत षडंगी को मो अनुरोध करी से आज आलोकपात करिवे ओडिशा को से कौ दृष्टिकोण रे देखुचंती आ ओडिशा पाई तांकर समाधान सूत्र कौन रहिबो जो सब समस्या रही। धन्यवाद मंचासेन मनोरंजन बाबू ऑनरेबल एमपी श्रीयुक्त अमर पट्टनायक माय फ्रेंड एंड माय डियर फ्रेंड राजेश महापात्र माय सीनियर कोलेग मिस्टर सुरजीत भुजबल माय सीनियर कोलेग मिस्टर जतीन्द्रनाथ स्वाई एंड डियर फ्रेंड्स आज शनिवार रे मॉर्निंग रे आपण माने समस्ते बसी एठी ओडिशार विजन विषय रे 2036 रे कौन हम 2046 रे कौन हम से विषय रे विचार आलोचना करुचंती सुनुचंती एटा आपणकर ओडिशा प्रति स्नेह श्रद्धा एवं प्रतिबद्धता दर्शौछे। ओडिशा विषय रे आपण माने उणादि के समस्ते जानिचंती केमती गोटे रिसोर्स रिच स्टेट मिनरल विषय रे आपण माने समस्ते जानिचंती कि भलिया मिनरल रिजर्व अछि एवं इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिसोर्स रिच स्टेट्स इन द कंट्री से विषय रे मु बेसी समय नेबी नहीं बट आउ केते गुटे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स अछि ओडिसा रो सेटा होछि जे एटा गोटे कोस्टल स्टेट 480 किलोमीटर कोस्ट लाइन अछि जेकोसी स्टेट जदि कोस्ट लाइन स्ट्रॉन्ग अछि तार केते गुटे इनहेरेंट एडवांटेजेस थाए एवं ओडिशार पोर्ट्स एवं कोस्ट लाइन आमको से इनहेरेंट एडवांटेजटा दबा कथा आपण जदि वेस्टर्न कोस्ट रे देखिए गुजरात हो महाराष्ट्र हो केरला हो दे आर हाईली डेवलप्ड and they have leveraged their coastline to push that development आमर आउ गोटे एडवांटेज होची ओडिशा भितर गुड़ाए एग्रो क्लाइमेटिक जोन अच्छी विभिन्न प्रकार पनीपरिबा फसल इत्यादि हो पार एग्रो क्लाइमेटिक जोन गुड़ाक 1500 मिलीमीटर रेनफॉल होची
आपण जदि राजस्थान आड़ को आसवे 300 मिलीमीटर रेनफॉल, ओडिशा रे 1500 मिलीमीटर रेनफॉल, उर्वर माटी। तेणु एग्रीकल्चर सेक्टर रे गोटे बड़ प्लेयर हेबापी ओडिशार क्षमता अच्छी। एवं सबुठु बड़ एडवांटेज होची बहुत पीस लविंग लोक, जेते दुर्दशा थाऊ जेते दरिद्रता थाऊ, जमती मनोरंजन बाबू कहते 10,000 टंका मासकू इनकम परिवार केबे भी क्या ब्लेम करें। जहाँ ही प्रभु जगन्नाथ का इच्छा, माँ समलेई इच्छा, माँ पाटनेश्वरी का इच्छा, बट अन्य को ब्लेम करेंगे नहीं। तेणु गोटे बहुत पीस लविंग आउ गोटे माइल्ड कम्युनिटी कहले अत्युक्ति हम नहीं। आमे जदि आजिका दिन रे 2023 रे देखिबा ओडिशा बहुत गुड़े सेक्टर रे भल काम करिछ। आपण जदि इंफ्रास्ट्रक्चर देखिबे ओडिशा भीतर देखि गुड़ाई एनएच जाउची एवं 4 लेनिंग 6 लेनिंग ऑफ एनएच हेकरी गुड़ाई काम होइछ। आपण वेस्टर्न ओडिशा रे देखिबे बिजू एक्सप्रेसवे आउ राउरकेला आउ संबलपुर भीतर जो एक्सप्रेसवे हेइची सेटा डेफिनेटली आमर डेवलपमेंट को पुश देबार सहायता करुछ। आमर बहुत गुड़े रिसोर्स को बेस करिकी इंडस्ट्री आछि। आमर जेहेतु बॉक्साइट रे माने बहुत रिच, बॉक्साइट एल्युमिनियम इंडस्ट्री आछि। आमे जेहेतु क्रोम रे बहुत रिच, गुड़ाए फेरोक्रोम प्लांट, फेरो अलॉयज और स्टेनलेस स्टील प्लांट आछि। जेहेतु आम माने कोल रे रिच, गुड़ाए पावर प्लांट आछि। किंतु ऑल ऑफ दिस आर रिसोर्स रिच और रिसोर्स इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। आउ गोटे जिनस देखिए ओडिशा और सेंट्रल गवर्नमेंट भितर समन्वय प्राय भल रही आछि। सेतपई सेंट्रल गवर्नमेंट रा फंड फ्लो अनइंटरप्टेड रही। ओडिशा गुड़ाए सेंट्रल फंड लिवरेज कर पारिछि लास्ट 20 वर्ष भितर बिकॉज ऑफ गुड कोऑर्डिनेशन विथ द रिस्पेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट्स। बट जदि फेल्योर देखिबा केते गुड़े जिनस रे आमे बोधे जो मिसिंग द बस कहती ताकू आमे करिचे। किछि समय पूर्वर ऑनरेबल एमपी श्रीजुक्त अमर पट्टनायक मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स विषय कहते। आमे जदि सेटा देखिबा ओडिशा रे मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स रे पाखापाखि 30% लोक पोवर्टी लाइन तले अछंती। एवं जदि साउथ ओडिशा को देखिबा से विषय मध्ये से मेंशन कले जोटी नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी, रायगड़ा ये सब डिस्ट्रिक्ट गुड़ाक 50% रु अधिक लोक पोवर्टी लाइन तले अछंती। 2021 रो एटा स्टडी। आजिका डेट रे जदि लोक मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स रे तले रहिबे माने जोटा मनोरंजन बाबू कहते मासकू इनकम 10,000, 12,000, 15,000 टंका भितर रोचन से माने परिवार। किंतु ओडिशार पर कैपिटा इनकम केते 1.5 लाख टंका। तो जदि परिवार रे 4 जण अछंती ताले आइडियली 6 लाख टंका परिवार आय हवा कथा। किंतु जदि 20,000 टंका मासिक आय है परिवार ताले 2,40,000 टंका वार्षिक आय। 6 लाख कोटी 2,40,000 कोटी। तो यही जिनसटारे जो इक्विटेबल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कथा कहते से निश्चित भाव आमर गोटे बड़ गैप रही जाइए। आहरी बहुत गैप अच्छे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो ग्रासरूट गवर्नेंस सिस्टम अच्छी, जो ब्लॉक कहतु, तहसील कहतु, आरआई कहतु, से भितर अनेक गुड़े डाइल्यूशन देखा मिली। आमे केमती ग्रासरूट गवर्नेंस सिस्टम और अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव करवा तार बहुत आवश्यकता अच्छी। मु गोटे केवल एग्जांपल देवी। आमर टीचर माने ओडिशा रे से माने पे स्केल अनुसार कहीं भी 50,000 टंका तल पाऊना। आपड़ देखिए सरस्वती शिशु मंदिर 12,000, 15,000, 20,000 टंका पाँच। किंतु पिला माने जाइकी सेठी एडमिशन नौचंती आमर गवर्नमेंट स्कूल रे नौना। सो अकाउंटेबिलिटी ऑफ ग्रासरूट गवर्नेंस केमती इंप्रूव करवा तार मध्य आवश्यकता अच्छे। तृतीय जिनस है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री तो आसीगला, सॉरी रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज तो आसीगले। पावर प्लांट आसीगला, स्टील प्लांट आसीगला, एल्युमिनियम प्लांट। बट जो जिनसटा आपण माने कई शुणी थे डच डिजीज कहती बा रिसोर्स कर्स कहती। गोटे इकोनॉमिस्ट थिले रिचार्ड ऑटी, से रिसोर्स कर्स विषय कहते जो 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 जगह गुड़ाक बहुत नेचुरल रिसोर्स एंडाउमेंट रे स्ट्रांग थाए से एरिया रे डेवलपमेंट हुए ना। बिकॉज
कैपिटल आउ लेबर केवल गोटे सेक्टर रे इंटेंसिव थाए अन्य सेक्टर को डाइवर्सिफाई करि पारने एवं सेटा ही मोस्ट प्रोबेबली ओडिसा रे हिची आमे स्टील इंडस्ट्री देखिले एल्युमिनियम देखिले पावर सेक्टर देखिले बट सेगुड़ा सब होउची कोन सेगुड़ा सब ओडिसा भितर कि यूटिलाइजेशन हो नहीं आपण जेतेबेले एचआर कॉयल आ बिलेट करिकी बाहर को पठेले कास्टिंग बाहर हबो फोर्जिंग बाहर हबो एक्सट्रूजन बाहर हबो ट्यूब्स एंड पाइप्स बाहर बना हबो आपण एल्युमिनियम इनगट पठेले तार केबल्स एंड कॉइल्स बाहर हबो तार वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बाहर हबो तेणु यही सब आस्पेक्ट रे आमे माने वैल्यू एडिशन विद इन द स्टेट करिवारे बहुत आहुरी प्रोग्रेस करिवार आवश्यकता अछि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज गुड़ाक केमती आमे ओडिसा रे अधिक आनी परिबा मु एठी कंट्री लेवल रे जतेबेले देखुची सेतेबेले देखुची जे जदी एप्पल आसिला इंडिया को आ बेंगलोर रे तार सेटअप कला प्लांट सी तार चारिटा एसोसिएटेड मैन्युफैक्चर को आणुची फॉक्सकॉन को आणुची पेगाट्रॉन को आणुची विस्ट्रॉन को आणुची जेतेबेले नाइकी आसिकी चेन्नई एसएजेड रे तार सेटअप करूची सी तार चारिटा एसोसिएटेड मैन्युफैक्चर को आणुची से माने इन एंड अराउंड चेन्नई तांकर बेस सेटअप करूचंती जेतेबेले आपार इंडस्ट्री एल्युमिनियम रो वैल्यू एडेड प्रोडक्शन करूची कोठी करूची अहमदाबाद रे नॉट इन ओडिशा अहमदाबाद रे करूची ता आखरे पाखरे आहुरी 10टा एल्युमिनियम बेस्ड इंडस्ट्रीज ता संगे रे एसोसिएटेड होई रहउचंती तो आमे माने केमती लेबर इंटेंसिव सेक्टर रे जो गुड़ाक स्ट्रांग को गुड़ाक स्ट्रांग लेदर इंडस्ट्री इज वेरी लेबर इंटेंसिव आपणकर अपरेल एंड गारमेंट टेक्सटाइल एंड मेडअप्स माने कौन आपण माने जो माने बेडशीट करूचंती बेड लिनेन करूचंती कुशन कवर कुशन्स तार डिजाइन करूचंती सेगुड़ा सब मेडअप्स तार ओडिशा इंडिया रु एक्सपोर्ट ह्यूज बट ओडिशा भितर गोटे भी मेडअप बेस्ड इंडस्ट्री नहीं अपरेल रे केवल शाही इंडस्ट्री हैज सेटअप वन यूनिट इन एंड अराउंड भुवनेश्वर ता बाहर अपरेल एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग नहीं आपण तिरुपुर जिबे तिरुपुर रे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन अपरेल एंड गारमेंट सेगमेंट आपण माने सूरत जिबे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज so how do we attract and create an ecosystem in Odisha where these kind of industries flourish is something that we need to think of. Sri Amar Patnaik food processing sector विषय कहले very relevant. Odisha रे आज्ञा 21% होची contribution to GDP of agriculture and allied sector. Ideally गोटे developed economy रे सेटा 12-13% रहिबा कथा 10 रु 12% रहिबा कथा 21% रहुची माने आमर डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर टू जीडीपी अच्छी अर्थात आमर अन्य सेक्टर सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग जेतिकी आगु को बढ़िया कथा जेते आगु को बढ़िबे आमर एग्रीकल्चर शेयर टू जीडीपी सेते कम होबा कथा किंतु एबे भी 21% अच्छी माने दिस इज नॉट ए गुड इंडिकेटर एवं सही भितरे आपण जदि देखिबे मराइन सेगमेंट आमर जतेंद्रनाथ स्वाई सर अछंती यूनियन फिशरीज सेक्रेटरी आई थिंक ही विल बेयर मी आउट जे आपण जदि ओडिसा रु मराइन एक्सपोर्ट देखिबे प्राय $450 मिलियन रहउची किंतु आंध्र रु जदि देखिबे तार 11 टाइम्स रो एक्सपोर्ट होउची प्रोडक्शन अबाउट 12 to 13 टाइम्स आमर नेबरिंग स्टेट सो एही सब सेक्टर गुडा करे जो थरे लेबर इंटेंसिटी अच्छी पैसा अच्छी लोकमानकर अधिक इनकम होबो एही सेक्टर गुडा करे अधिक फोकस करिवार आवश्यकता अच्छे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आमर कंट्री रु एक्सपोर्ट प्राय $25 बिलियन $1 बिलियन होची 8,200 कोटी टंका $25 बिलियन एक्सपोर्ट जदि आप डोमेस्टिक मार्केट देखिए $100 बिलियन ओडिशा रे फार्मास्यूटिकल रो शेयर टू द इकोनॉमी इज ओनली अबाउट 40 to 50 करोड़ कहीं कौन सी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नांती से मंचेश्वर आ कटकर से जो खपुरिया पाखे 2-3टा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत कष्ट चलते सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री केमती आगु को बढ़िबो से विषय में चिंता करियो अछि आमे जदि वे फॉरवर्ड चिंता करिबा आगु को कौन करिवार अछि जो पॉइंट ऑनरेबल चीफ जस्टिस फॉर्मर चीफ जस्टिस कहते ह्यूमन रिसोर्स रे डेवलपमेंट रे इंटरवेंशन हैज टू बी द बिगेस्ट इंटरवेंशन इन ओडिशा
आमको जदि प्रोग्रेस करिवार अछि ताले हाउ डू आई टैकल द चेंजेस व्हिच आर गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर। आपण मान भितर हुए तो किसी लोग चैट जीपीटी बा GPT-4 यूज करते कई करछंती चैट जीपीटी? हाँ 6-7 जन हाथ देखुचे एक्सेलेंट। GPT-4 जदि यूज करेंगे ताले मु जदि गोटे PDF डॉक्यूमेंट बा वर्ड डॉक्यूमेंट दे दूची ताले इनविटेशन कार्ड हो गोटे ऑफिशियल लेटर हो बा कौन सी एनालिटिकल डॉक्यूमेंट हो चैट जीपीटी मते तार रिप्लाई करके दे दूची। सो आगु को आमर जो माने अकाउंटेंट जो माने क्लरिकल स्टाफ जो माने PS और PA एभलिया लोक मानकर आवश्यकता रहिबो नहीं। आर वी गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ सिचुएशन? आगु को आमको जो वॉल्यूम रे टीचर आम रिक्रूट करूँ स्कूल रे हुए तो सेतिकर आवश्यकता रहिबो नहीं। एवं 2036 रे जोड़ा ऑनरेबल दीपक मिश्रा कहते जे हेई पारे गोटे सिचुएशन आपणकर मनीष इज हाफ ह्यूमन बीइंग हाफ डिजिटल बीइंग। आपण भितर गोटे चिप थी आपन को चैट जीपीटी टाइप भी करिया पड़िबो नहीं से चिप को आपण ब्रेन रु डायरेक्शन देबे सी आपन को रिप्लाई दबो। इट्स क्वाइट पॉसिबल एंड इट माइट हैपन 2036 बाय 2036। आर वी गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ एन इवेंचुअलिटी जे आमर लोअर लेवल रे केते गुडे ब्लू कलर जॉब एलिमिनेट हो तार रिक्वायरमेंट एवं तार सब्स्टिट्यूट करबा पई हाउ डू वी यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हाउ डू वी यूज AI, हाउ डू वी लिवरेज सम ऑफ दिस एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तापाई आमे माने प्रिपेयर्ड होचु ना हो ना। आजिका डेट रे विक्रम देव कॉलेज जयपुर रे बा GM कॉलेज संबलपुर रे बा बीजेपी कॉलेज रे आमर जो पिला माने पाठ पढ़ुचंती से माने ए जो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी होची से विषय फैमिलियर होचंती ना नहीं तांकु से विषय जना जाउची ना नहीं। जदि न जना जीवो से माने हुए तो दे विल मिस द बस अगेन। एवं ह्यूमन रिसोर्स अगेन श्री अमर पट्टनायक बहुत रेलिवेंट पॉइंट कहले हेल्थ उपरे फोकस केवल एजुकेशन नुहे हेल्थ उपरे इक्वल फोकस इज ऑल्सो एसेंशियल बिकॉज गोटे चाइल्ड रो ब्रेन टा डेवलप कर जाए बाय 6 वर्ष एज से समय जदि ताकू ठीक हेल्थ केयर न मिली न्यूट्रिशन न मिली then we will not have intelligent human beings coming out of Odisha. So सेटा extremely crucial एवं तापाई हमको जहाँ करिवार आवश्यकता अछि। So focusing on value added industries, focusing on agriculture and marine sector, focusing on our education and health system are some of the extremely crucial things. And coming back to my department, एक्सपोर्ट्स आपण माने देखिए जे ओडिशा गत वर्ष 7 नंबर रे थिला एक्सपोर्ट रे एथर पुणी 10 नंबर को खसी कहीं खसी आसला ना स्टील एवं मिनरल उपरे गोटे एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगे थिले। सो दिस प्रूव्स द इंटेंसिटी ऑफ मिनरल एंड मेटल एक्सपोर्ट्स इन ओडिशा's export basket. So how do we diversify that export basket to add a lot more products so that temporary measures like export duty doesn't affect Odisha's export is also very, very crucial. So in terms of measures, I have already outlined some of the actions which are required. It will require collective action on the part of all of us, Government of India, Government of Odisha, all the intellectuals like all of you. And I am a strong optimist, and I think Odisha's time is definitely coming, and in the next couple of years we will see a very developed Odisha. Thank you. Thank you, Sita Sarangi. Brilliant speech. मो जड़े IAS ऑफिसर को एते सुंदर भाव में ओडिशार इश्यू को एते भल भाव से अनुभव करिसेंती एवं निजर मत प्रकाश करुछंती। गोटे कथा केवल कहवाई चाहिए सार कहला बेले बहुत भल कथा कहले विक्रम जयपुर कॉलेज हो SBM कॉलेज जगतसिंहपुर हो केन्द्रापड़ार कॉलेज हो एटी जो पिला माने पढ़ुचंती से माने ब्लॉकचेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ChatGPT एवं बदली जाउथुवा दुनिया संपर्क में सचेतन अछंती कि
मुझे कहवाई चाहिए जदि आपण देखिए आम कॉलेज गुड़िकर अवस्था हुए तो आम बस को मिस करने जाऊँ गोटे भल पॉइंट सार उठे जे ए परिवर्तन होता समाज सहित खाप खुआई आम कौन करुचु ए संपर्क में श्रीत अमर पट्टनायक निश्चित भाव में सरकारी दलर जड़े तुंग नेता हिसाब से आगू चिंता करेंगे ये गोटे बहुत बड़ समस्या आम समय आपड़ देखिए जदि केन्द्रापड़ा कॉलेज जगतसिंहपुर कॉलेज रू जड़े किए ग्रेजुएट बनूची ग्रेजुएशन पर से केते टंकार चाकरी करिपारियो जदि मु केन्द्रापड़ा छाड़ी भुवनेश्वर न आसबि मु भावुची केन्द्रापड़ार जगतसिंहपुर बा कोस्टाल बेल्ट जेकोसी कॉलेज को आपड़ जीवे जदि गोटे ग्रेजुएट बाहर से 8 ରୁ 10,000 टंका भितर चाकरी करने बाध्य हम आम डिस्ट्रिक्ट गुड़िकर आम से इंडस्ट्रियल सेंटर बनईनु जोटी गोटे पिला मासक 15,000 बा 20,000 टंका दरमा पाई चाकरी करिपार वर्तमान समय ये हूँ सबुठ बड़ चैलेंज टेक्नोलोजी कथा आम पाखे पहुँची ना किंतु आम भीतर बहुत संभावना अच्छी मु खाली गोटे छोट उदाहरण देवी से तो राजेश महापात्र आपण पाखु जीवा पूर्व जे 2 दिन तले आम गोटे खबर जाजपुर प्रकाश करूँ ए खबरटी गोटे ट्राइबल झील को नहीं से झीटर ना हूँ राणी सिंह यूट्यूब रे गोटे चैनल करी 33,000 टंका भितर रोजगार कर 33,000 आपण मान बहुत बड़ न हो पारे किंतु गोटे अपंतरा गाँव गोटे ट्राइबल झील जे क्लास 10 रे पाठ पढ़ुची सी 33,000 टंका यूट्यूब चैनल करी रोजगार करिवारे सक्षम होईची ए खबरटी देखला बेले मते बहुत भावप्रवण लगिला से ता घरे केमती से खाऊची कौन पिंधुची ट्राइबल कल्चर केमती चलीची ए संपर्क रे से वीडियो पोस्ट करुची ता पाखरे आईफोन न थाई पारे टीम कुक को से न जानी पारे एप्पल कौन उद्भावन करुची आविष्कार करुची ता संपर्क रे से हुए तो बेसी सचेतन न थाई पारे किंतु यूट्यूब रो व्यवहार ट्राइबल झीलटे कर 33,000 टंका रोजगार कर चैनल को 2 लाख रु अधिक लोक सब्सक्राइब कर तो आम पिला भितर जदि गोटे ट्राइबल झील राणी सिंह भितर एते संभावना अच्छी ताहले एसबीएम कॉलेज जगतसिंहपुर रे केन्द्रापड़ा कॉलेज रे पढ़ुवा पिला भितर संभावना नाही बोली आमे कहि पारिबुनी किंतु ये टेक्नोलोजी सहित आमे तांको परिचित कराउछु तो से तो राजेश महापात्र आपन को अनुरोध करी धन्यवाद सम्मानीय अमर बाबू भुजबल बाबू बंधु संतोष बंधु मनोरंजन आज सभारे सामिल होता अतिथि वृंद आपण मैंने समस्त को नमस्कार ओळगी आ जुहार आउ एई जो आज कार्यक्रम को जो माने ऑर्गेनाइज करछंती तांको भी मो तरफ अनेक अनेक हार्दिक शुभा जाउछि मो अच्छा मूलरू कहबी नमस्कार ओळगी जुहार सब तो मिलला आजिकल बहुत चर्चा होछि ओडिशा एट 100 किछि दिन पूर्वे ओडिशा इकोनॉमिक एसोसिएशन रो हेतिला गोटे चर्चा भुवनेश्वर रे अमर बाबू आम दुहे सेठी थिलु so I was telling him that so long as the Odisha at 100 agenda is on I think we are destined to meet again and again अनेक प्रकार चर्चा मु शुणुची अनेक समय रे अनेक लोक बहुत तथ्य सामना को आणुचंती बहुत पॉलिसी विशेष कथा कुहा जाउची आज एई सभारे मु ना गोटे सांबादिक हिसाब रे ना गोटे अर्थशास्त्री हिसाब रे मोर कथाटी रखिबी मु गोटे नागरिक हिसाब रे मोर कथाटी रखिबी ओडिशार किभଳି विजन हेबा आवश्यक ओडिशा आउ जहाँ कहबी से मु किछि हुए तो ओरिजिनल रहिबो नै सबु कथा समस्ते कहउचंती आज भी सभारे अनेक भल भल कथा कुहा जाइछि आउ टिके परे कहिबार एडवांटेज एया जे आमे सांबादिक हिसाब रे अन्य माने जहाँ कहिचंती ताकू बहुत जल्दी आमे तार समराइजेशन करदेबू एंड वी कैन साउंड इंटेलिजेंट ऑल्सो एट द सेम टाइम तो मु प्रथमतः
जेकोसी गोटे विजन आम कल्पना करने चाहूँचे ओडिशार 2036 ओडिशा जितेबाला 100 वर्ष हम से ओडिशार गोटे जदि पुनर्कल्पना करने को हम से ओडिशार जदि गोटे परिकल्पना करने को हम ताहले से परिकल्पना और पुनर्कल्पनाटा आज जो सांप्रतिक परिस्थिति अच्छी ताठू अलग हो पारना। आज सांप्रतिक परिस्थिति कौन? आज सांप्रतिक परिस्थिति विभिन्न लोक विभिन्न भाव में देखिपारे। मु कहबी जे आमे गोटे ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मोमेंट दे अग्रसर होचे। अनेक भल जिनिस होची किंतु अन्य तरफ रे गोटे आर्थिक मंदी आसी जाइछि। अनेक प्रकार डिस्ट्रेस आम शुणा पाचु। फार्मर्स डिस्ट्रेस हो, लेबर डिस्ट्रेस हो, मिडिल क्लास डिस्ट्रेस हो, शिक्षा भविष्य तो नहीं करी गोटे अनेक अनिश्चितता अच्छी। आमे गणतांत्रिक अनुष्ठान उपरे एक आमूलचूल परिवर्तन हेबारे लागिछि जहाको मु कहि परिबि जे देयर आर अटैक्स ऑन द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। So when we talk of a vision for 10 years later, 12 years later, can we delink them? I don't think we can delink them, and I think whatever is happening today, we have to locate our vision in that larger context. राष्ट्रीय स्तर रे हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर रे हो, बा क्षेत्रीय स्तर रे हो, सामाजिक कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, अर्थनैतिक कॉन्टेक्स्ट, ये सबू जिनिस गुड़ी को ध्यान में रखा पड़ो। सब जेहेतु समय सीमित आज जो पर्यायर टिके विलंब आरंभ है मु तीनोटी बिंदु रे मोर कथाटी को रखी। प्रथम है जे समस्ते कही सारी जे जो आमे गोटे विजन किंबा ओडिशार भविष्य विषय जिते चिंता करुचे से भविष्य विषय चिंता करिबारे सबुठु आज जो खास करी जो कॉन्टेक्स्ट कथाटी मु कहली आमे गोटे महामारी बाहर को बाहर होकर आसीचु आ महामारी समय रे कौन है सी तार गोटे बहुत बड़ बड़ लेसन्स आम पाखे रही जाइए। तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य यही दुईटी जिनिस आमर सबुठु बड़ गोटे एजेंडा रे रहिबार दरकार। सबुठु उपरे मो पई सेही जिनिसटी रुहे। किंतु किभली शिक्षा और किभली स्वास्थ्य, गुणात्मक शिक्षा, सार्वजनिक गुणात्मक शिक्षा सेटा उपरे आमर फोकस हवा दरकार। सेही भली आउटा स्टेट्स एडुकेशन इज अ पब्लिक गुड, एडुकेशन शुड बी द स्टेट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी and it has to be quality education which is accessible to all. ये जिनसटी आम बारंबार कहूचे किंतु कथाटा होची जे रियलिटी रे आम अनेक दूर। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक गोटे मो स्कूल अभियान आरंभ कले। तांकरी निमंत्रण में मुझे जोग देइथिली 2018 रे एडवाइजर हिसाब रे। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थिला। किछि समय पर मते ओहरी जावाक पड़िला कारण मु देखिली जे शिक्षा व्यवस्था को आम सुदृढ़ करिया को जतेबेले भाबुचे आम प्रथमे भाबुचे स्कूल बिल्डिंग केमिति बनेबा, इंफ्रास्ट्रक्चर केमिति बनेबा, सुंदर चिकन चाकण केमिति बनेबा। शिक्षा शिक्षक बिना शिक्षा नहीं, शिक्षक बिना शिक्षा नहीं। आमर शिक्षकों को ऊपर कौन इन्वेस्टमेंट नहीं, खाली बिल्डिंग बनई देले। गत 35 वर्ष है जमी अमर बाबू कहले मु भी बीए करने ये आसी दिल्ली भितर मु अनेक प्राइवेट स्कूल देखी बिल्डिंग ठिया होकर बड़ हो जाइए, चमकाचक हो जाइए, किंतु सेठू आवर स्टूडेंट्स माइट बी गोइंग टू स्कूल बट दे माइट नॉट बी गेटिंग एडुकेटेड। ये जिनसटी कहवा मु कहीं कहूँ जो थे मु द्वितीय बिंदु उपर चलीजी आ द्वितीय बिंदु उपर टिके ध्यान देवे। आ मोर अनुरोध आ निवेदन पैनल जो मैंने भी कहले आमे जहाँ कथा कहबा से कथारे कंसिस्टेंसी हेबा निहाती आवश्यक। ए विजन कैनॉट बी बिल्ट इफ यू हैव इनकंसिस्टेंसी अमंग एलिमेंट्स ऑफ दैट विजन। जेतेबेले आमे कहूचे कि आमको आमर निजर अर्थनीति को सुदृढ़ करने को हम आमर दुईटी जिनिस इंडस्ट्री एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री हैज टू बी स्मार्ट किंतु आमे से जिनिस कथा गुड़ी कहले आमर संतोष कहीकि गले कि किभली चेंज होची
टेक्नोलोजी किभली ड्राइव करुच्ची जिनस को गोटे छोट उदाहरण देवी मोर इलेक्ट्रीशियन एवं मोर घर काम चली 3 दिन आगे कहला साहब ये सब आप चिंता मत करिए 2-3 साल के बाद ना ये चुनाई पोताई प्लास्टर ये सब के लिए लेबरर्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, मशीन आ जाएगा, आप प्रोग्राम फिट कर दीजिएगा, सब हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रीशियन का काम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर जो है दीवार के अंदर गड़बड़ करते हैं, वो नहीं हटा सकते हो। तो मु ताकू कहली बाबू सेंसर चलुची मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो पार तार पकेबू पड़ो ना, ताहले कौन हम? ठीक कह रहे हैं। चलीगला 5-10 मिनट घर भीतर बुलिक आसला, पचारला सर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कथाटा होची जे आज आम जो जिनस गुड़ी को नहुकी कहूचे आम कथा कहूचे जे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को आम आगु को बढ़ेवा आवश्यक। कहीं डज द फ्यूचर बिलोंग टू लेबर? नो, द फ्यूचर इज गोइंग टू बी ए नॉलेज सोसाइटी। We must be talking about how to build a society full of knowledge workers, how to build a society of innovators. आमे आम निजर गोटे एम्बिशन और एस्पिरेशन इतने लो कहीं करुचे? आमर हैंडीक्राफ्ट बहुत सुंदर, आर्टिस्ट बहुत करुचंती, सेथिरे इनोवेशन कौन हो पारिबो? वी शुड नॉट बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, वी शुड बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज दैट ओडिशा दैट वी विल बिल्ड व्हिच कैन टेक एडवांटेज ऑफ द फ्यूचर दैट इज कमिंग। एथिरे सबुठु गोटे बड़ भूल होची तिरुपुर सूरत ए सब उदाहरण दियागला। से उदाहरण कौन? से उदाहरण होची तांकर 20-year-old सक्सेस रो उदाहरण। They are now thinking how to navigate the future, and we are thinking to emulate the 20-year past of Surat and Tirupur. No, you're wrong. You're going down the wrong path, because when you would come to emulate Tirupur and Surat would have moved on to something new. And then what would you be talking about? So therefore, we have to be very clear on one thing. We should be ashamed that we take pride in tom-tomming our mineral resource richness, because we are taking shelter under a 50-year-old, rather 75-year-old extractive growth strategy, which we have not changed. And Santosh said the right thing. When Apple comes to Bangalore, it brings Foxconn, it brings several other associates. When Nippon comes to Odisha, it only brings itself to extract iron ore, make steel out of it, raw steel, and send it out. जो जिनिसटा 100 टंकार सेठी बिक्री होची सेटा अन्य एक राज्य रे जाइकरी ता परवर्ती समय जो वैल्यू एडिशन होची 1000 टंका। तो 100 टंकार तो आपनको लोक को 10 टंका ही मिलिबो। जो राज्य रे 900 टंका जोड़ी होची सेठी किछि नहले 300 टंका मिलिबो। एटा कोन कॉमन सेंस नुहे? द्वितीय कथा, आपण माने समस्ते आ जदि देखी नाहंती जातु। मु चाकरी छाड़िली 2018 मसीह 2 वर्ष ओडिशा रे बुलिली, 30टा डिस्ट्रिक्ट बुलिली। जो माइनिंग लेड ग्रोथ स्ट्राटेजी को लेकर आम एते गर्वित होउछे। आपण रायगड़ा चली जातु, आपण केउंझर चली जातु, आपण अनुगुल चली जातु, कैंसर, अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ कैंसर, जो भलिया एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डिह्यूमनाइजेशन हो जाउची सेठी लोकंकर प्रत्येक स्तर रे आपण देखिक सही पारिबे नाही। आमे कोन सेही ग्रोथ स्ट्रेटजी को लेके आगु चाहू? वी हैव टू डिफोकस फ्रॉम ए माइनिंग लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी। सो इंडस्ट्री हैज टू बी स्मार्ट। क्लाइमेट चेंज, ओडिशा इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल स्टेट टू क्लाइमेट चेंज, एंड येट अमर बाबू कहले कम्युनिटी रेजिलियंस इज ए थिंग। यस, it is. We have demonstrated community resilience. But my question is, why do we talk about community resilience only vis-a-vis our preparedness to face cyclones? Why don't we talk about community participation in policy making? Why don't we talk about community participation in driving change? Why do we have a very top-down approach to development in Odisha? This is the reality you have to focus and face. Odisha, the development strategy is absolutely top-down. Every policy decision is made at the top. Everything is run down. Show me a society which has actually the future that you are talking about, has stepped into that future by being a top-down policy-led society. No,
You talk of the best of Scandinavian countries. You talk even a country like Japan, even a country like Australia. There are fair enough resilience at a third-tier governance system, second-tier governance system. So we need to think about how to be smart with our industrial vision, not how to be extractive with our industrial vision. That brings me to the second aspect of my second point, which is agriculture. Agriculture, and I for one don't think that if agriculture is 20% of your income, it's a bad thing. I don't think agriculture, if it is 20% of your GDP, it is not a bad thing. But if it is 20% of your GDP with 80% of dependence of people, livelihood, then it is a bad thing. There is tremendous opportunity for Odisha to reimagine its agriculture sector, make it climate change adaptable, make it, how it can take advantage of the new technologies and raise productivities. That is why jo Manoranjan Babu jota कहले आमे टंका लोकंकर केमिति बढ़ेबा टंका केमिति बढ़ेबा जगतसिंहपुर पिलाटा पास कला आगे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर बनातु से डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर 5 वर्ष पर बंद हो स्टेट सब्सिडी पर बट इफ आई मेक माय रूरल एरिया a vibrant economic entity, there will be employment. Why do we think that rural-urban migration for an upliftment of livelihood is a given? Why can't we reimagine a future where there is urban-rural migration? It can happen. It has happened in many places. And the future, which is going to be driven by knowledge, they're not going to be driven by plants. They are going to be driven by knowledge workers sitting at any location. I grew up in a small remote outback of Odisha, Chitrakonda. Today I feel confident that I can go to Chitrakonda and I can work from there. And why do I feel confident? I am a beneficiary of the public school education system. Because the government schools, when we were studying, were robust. I came from there to study in another public university. From there, I went to another public university. I got quality education. I could navigate the corridors of metropolitan cities, and that is why I am standing before you today. Why can't we think differently? I think, we are being lazy while envisioning the future of Odisha. We need to work harder. We need to work harder. We need to question every wisdom that is at our disposal. If we really want to be a winner in the future, we need to think afresh and think. And the third point, very quickly I will summarize, Manoranjan, I know you're getting impatient. All of that they said, we have to look at the question of social justice. We have to think how Odisha has 19% Dalit population, 24% Adivasis, 42% of our people have no say in anything that you do that affects them. They have no say. And we very proudly say there is no casteism in Odisha. We need to relook at that question. If there is no casteism in Odisha, show me the representation of this 42% in the affairs of Odisha. You will not find their names. You will not find those surnames in the corridors of Nautala or the Secretariat building. I said it in another meeting also. It is all Das, Satpathy, Panda, Mahapatra, Patnaik. We need to think about it. Why is it that every nameplate in a third floor corridor only happens to be this surname? No, we don't want to question that because it can affect our standing. If we really are committed to a new future for Odisha, we need to ask that question. The question of gender was also raised. There is a great program, in Odisha. A lot of celebration is done around SHG. They did a fantastic job in pandemic. Are they only a utilitarian value? Or do they actually have a stake? I don't know. If women in Odisha, because look at our panel, it's a manel. The previous panel was also a manel. How? 50% of the population can't have a person here? Is that not a reflection on how we think and what we do? Now, if I'm sounding agitated, if you don't get agitated about these things, you will never change these things. Chalta hai.
चली तो आज्ञा एमती हुए आउ then you will 2036 you will be in the same place as you were in 2016. My last submission is, please, every time you think about a future for Odisha, and this is not my এটা ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ଗୋଟେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ଛୋଟ କଲେଜର ପ୍ରଫେସର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ତାଙ୍କର ଏଇ କଥାଟି ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭାରେ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ସେଇ କଥାଟି କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ପୁନର୍କଳ୍ପନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ନା ଜୀବନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା Biju Patnaik Expressway, IDCO Tower, 18 Mahla, all these things are necessary. They are good. We are very proud of them. But they will not give you a Jivanta Odisha. They will give you a Joda Odisha. Jivanta Odisha kon darkar? Jivanta Odisha re nagariko ruhe. Joda Odisha re consumer, खाउटी खाउटींकर समाज बनइबो जदि जड़ ओडिशा चाहिए नागरिककर समाज बनइबो जदि आपण जीवंत ओडिशा चाहिए अनफॉर्चुनेटली a lot of people today think development can be for many people actually development is premised on the belief that it can be delinked from democracy. That is wrong, and unfortunately let me concede saying in Odisha the dominant belief is that development can be delinked from democracy. That has to change. जदि सेटा परिवर्तन तार परिवर्तन हम ना ताले जीवंत ओडिशा केबे हेले बनिबो नै जदि जीवंत ओडिशा बनिबो नै भविष्यतर ओडिशा रे नागरिक नथिबे खाउटी थिबे सेही कथा को नै करी मु धन्यवाद जणाउछि आपण माननकु मौका गोटे देले जदि किछि कथा खराब लागिथिबो क्षमा करिवे किंतु भाबिबे प्रत्येकटी कथा आपण जदि निजको सचोट रूप में चिंता करेंगे आपन को बुझा पड़ो जे यही सब जिन गुड़ी बदलवा पड़ो आ बदलवाई केवे समय लेट में आज आम यहाँ प्लेस नहीं पारिबा आम बदलवा ओडिशा गोटे नुआ ओडिशा बनइबा जो थे कि जो ओडिशाटी जीवंत ओडिशा हम जो थे नागरिकंकर ओडिशा हम यही नागरिक जार दायित्व भी अच्छी ड्यूटी भी अच्छी किंतु सर्वोपरि अधिकार रही अधिकार वाला नागरिक नागरिक अधिकार आमर राज्य अनेक गुड़ाए गड़जात को लेकर गठित तेणु गोटे साइकोलोजिकल सोशो साइकोलोजिकल लेवल उपरे आमर राजा प्रजार प्रथा चली आसी राजा प्रजा प्रथार प्रजार केवल ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी थाए राजा हैज ए डिवाइन राइट टू रूल छामू ना छामू को लेकर जीवंत ओडिशा भविष्य बनी पार नहीं प्रजा नुहे नागरिक दरकार नागरिक जीए जार अधिकार जे से माने ही डिसाइड करेंगे किए शासन करिबो आ किपरि भाबे शासन करिबो धन्यवाद हेलो धन्यवाद राजेश बाबू आपण बहुत उपादेय कथा कहले किंतु मु आपण सहित टिके एकमत होइनी किंतु समय आम पाखरे नाही श्रीत पटनायक गोटे भल कथा कहउथिले आजिकल यंग पिला माने बेसी समय मैराथन स्पीच सुनिया पे भल लागुनी तांको से रिजेक्ट करूचंती कारण आमे सब रील्स जुगरे अछु छोट अल्प समय हेले आम पई ना ना आपण को कथा मु कहउनी ना ना मु आपण को लक्ष्य करी कहनी रहे सब मु सामग्रिक भाव में कहवाई चाहूँगी जे धैर्य आमर कमी जाऊँगी जदि आप गोटे बृहत्तर ऑडियंस पाखे पहुँचापी चाहूचे आमर यूट्यूब रे आप देखिए जदि वीडियो को तो प्रतिदिन आम लक्ष्य करुचे तेणु आमे आम कथा शुणापी केते दूर आप बहुत भल भल कथा कहले गोटे कथा खाली कहवाई चाहिए जे आप तिरुपुर उदाहरण देले एठी जो मैंने बसचंती नेशनल कैपिटल दिल्ली रे से माने अनुभव करी केते दूर करि पारुछंती जदि गाँ सहित संपर्क थिबो से गाँर दुखटा को बुझी पारुथिबे आम पिला माने एठी बहुत असुविधा अछंती कॉलेज रे पाठ पढ़ा बहुत खराब स्कूल रे स्मार्ट स्कूल सब बर्तमान हेलानी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ीगलानी किंतु जहाँ राजेश साहब कहते टीचरंकर क्वालिटी बहुत असुविधा अच्छी आम पाखे किंतु सेति बेले जो पिला माने सब बाहरचंती मु गोटे कथा खाली श्रीयुत पटनायक को क्षमा चाहिए जो नेता पछरे जिते अधिक राली आपण देखुचंती आपण ओडिशार दारिद्र्य आउ शिक्षा केते खराब अवस्था अच्छी तार प्रमाण आपण पाउचंती
जो नेता क्लेम करूँ मो पछरे लक्षे लोक आउचंती मोटरसाइकल रैली रे मु कहबी जे ओडिशार दारिद्र्य बढ़ी जाउची बेकारी बढ़ी जाउची एते पिला समय कोट पाउचंती मोटरसाइकल आ 500 टंका पाइकरी आपण को पछरे गोड़ेवा पाई की कारण आम पाखरे शिक्षा कम अच्छी आम पाखरे गोटे बड़ पर्पस ना तो यही भली एक सामाजिक समाज भितर आम दे जाऊँ आउ एतिकी बेले तिरुपुर कथा आपण कहले आम पिला तिरुपुर बर्तमान जावा दरकार आम इकोनॉमी आईसीयू रे अच्छी आमे बहुत कंफर्टेबल पोजिशन में नहीं नॉलेज इकोनॉमी आमर दरकार मु आपण कथा को स्वीकार करुच्ची चैट जीपीटी मशीन लर्निंग एआर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आमे पढ़िबू किंतु वर्तमान समय जो पिला सब नेता पछरे रैली रे बुलुचंती तांको हठात आपण कौन देबे तांको पई किछि नाही ओडिसा रे गोटे डिस्ट्रिक्ट को आपण जे देखिबे 10,000 टंका 10,000 टंका अधिक पैसा दवापाई दरमा दवापाई आम डिस्ट्रिक्ट गुड़ाकर कैपेसिटी नाही तो वर्तमान समय आमर मासिव इंटरवेंशन दरकार जे प्रति जिले में अंततः गोटे गोटे शिल्प खोल जोटी से गाँव पिला 10,000 टंकार चाकरी करें परवर्ती समय आम निश्चित भाव में नॉलेज इकोनॉमी कथा चिंता करवा आपण पूरापूरी 100% ठीक आम नॉलेज इकोनॉमी को जीवा दरकार किंतु आम वर्तमान आईसीयू रे अच्छू आईसीयू रे जे अच्छी ताकू तुरंत इमरजेंसी मेडिसिन दरकार सो मो शीत सुरजित भुजबल पाखक जावाई चाहिए सर आपन ठारू अनुरोध करी ओडिशा संपर्क में निजर दृष्टिभंगी प्रदान करेंगे ता पूर्वर शीत चारुदत्त पाणिग्राही को अनुरोध करी शीत पाणिग्राही आसवे स्टेज को आउ तांकर गोटे क्लाइमेट चेंज संपर्कीय गोटे वेबसाइट को शीत अमर पट्टनायक इनागुरेट करेंगे हाँ कौन सा अरेंजमेंट मुझे जानी नहीं एक्चुअली कौनटा सर 1 मिनट खाली कहि दो ना 30 सेकंड पे आपन वेबसाइट ऊपर सर हाँ सेठी देइथिबे से क्लिक करिया पे आपन किछि परिचय सर नहीं नहीं से माने देइटा हां सेटा को क्लिक करिया सर क्लिक सो क्लाइमेटिस्ट्स इट देखिबो दैट वाज द होल रीजन दैट वाज नहीं सेटा देखेबार थिला एटी सर किछि देखाउ चाहिए हाँ जी हाँ जी आपन स्टार्ट कर climatist.org गोटे प्लेटफॉर्म जोटा आम क्लाइमेट चेंज रो सब किछि दिग गोटे रिपोजिटरी ऑफ क्लाइमेट चेंज रो जहाँ भी इनफॉरमेशन अच्छी ग्लोबल पोर्टल climatist.org राजेश वी आर नो मोर राइटिस्ट्स वी आर नो मोर लेफ्टिस्ट्स वी आर क्लाइमेटिस्ट्स दैट्स व्हाई दिस नेम क्लाइमेट नथिले ए विजन आ सब किछि नथिबो छात तो नथिबो आ स्कूल कोन पाठ पढ़िबे तेणु क्लाइमेट चेंज फॉर ओडिशा इज मोस्ट रेलेवेंट से climatist.org एटा बर्लिन रे हेइछि ओडिया टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स बर्लिन रे करूछन यंग पिला एंड वी आर सपोर्टिंग दैट तेणु सबु किछि तांकर काम सो वी आर जस्ट सपोर्टिंग देम एंड आई वुड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू लॉन्च इट आपण मान को अनुरोध समस्ते climatist.org को टिके जातु आ निजर जहाँ जहाँ अच्छी से इनपुट्स दातु यहाँ कहार पर्सनल प्रॉपर्टी नुहे कि कहार पर्सनल इनिशिएटिव नुहे यहाँ ओडिशा पाई इंटरनेशनल सब इनफॉरमेशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट इम्पैक्ट वाटर रिसोर्सेस एयर पोल्यूशन सिटी मैनेजमेंट ओडिशा स्पेसिफिक ग्लोबल तो आमर जिते साइंटिस्ट अच्छा बाहर से भी ये करेंगे सो यू सपोज टू क्लिक दैट हाँ मोबाइल हाँ सेटा climatist.org climatist हाँ देखे दे से करू ऑल दी यंग ओडिया टेक्नोलॉजी पिला बाहर जो मैंने अच्छा से मैंने यहाँ कर एंड आई एम सपोर्टिंग मशीन लर्निंग फर्निंग वाला जो गोटे ग्रुप अछि से बना No, these are people from 3 IITs.
ओडिया पिला फ्रॉम 3 IITs आईटी चैनल अच्छा कहि दियंतु से ठीक है कहि दियंतु I'll leave. थैंक यू सो मच लेट्स क्लैप that's the whole idea So ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର thank you so much ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରମିସନରେ ଯିବି ଭାରି କାହିଁକି ନା ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁଡେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍ କହିକି ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଛାଡ଼ିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଥରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ମିଳେ ଆମ ଛୋଟ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ 5-6 ମିନିଟ୍ ସୋ ତା ଆଗରୁ ଜଣେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ପୋକ୍ ଅବାଉଟ୍ 40 ମିନିଟ୍ସ ତ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୋ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ମୋ ସ୍ପିଚ୍ଟା ଛୋଟ ସ୍ପିଚ୍ 4-5 ମିନିଟ୍ସ by saying that I do not have the luxury of indulging in rhetorics. गोटे लाइन कही तापर मु मोर स्पीच वेरी ऑब्जेक्टिवली कही एवरी लाइन दैट वी स्पीक हियर आई और ही और एनीबडी आई थिंक माय एडवाइस इज क्वेश्चन इट फॉर द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड rhetorics. To every politician, to every thought leader, to every person who is speaking to you, that will build the knowledge capital that Rajesh Babu is talking about. That will make a thinking and a thought leader of every Odia. Ask questions to every sentence that we speak. If someone says that I'm not referring to anything. If someone says that I want to build industry in my village, all of you are educated. There is something called production function. It is a function of many things. There has to be capital, there has to be land, there has to be labor, there has to be managerial ability, there has to be linkage. If you want to have an agro processing in cashew nut in Bhubaneswar, it will not work. No one is doing any charity. So anything, anybody, as educated intellectual people, whatever anybody tells to you, whatever you hear in parliament from anybody, ask questions. Okay, how much of it has a rhetoric value? How much of it is objective? Whether it is achievable or not achievable. That will truly make us thought leaders of the world, thought leaders not only of India. Thank you. तो श्रीयुत सुरजित भुजबल को अनुरोध करी प्रोग्राम रे सबू पार्टिसिपेंट्स मानक मोर नमस्कार मनोरंजन बाबू को मोर धन्यवाद श्री महापात्र. So before I start this program, बहुत खुशी जे POVS इनिशिएटिव टा नहीं विभिन्न स्पीकर विभिन्न ऑडियंस को गोटे जगह एकत्र करी गोटे इश्यू उपरे आलोचना कर चेष्टा. मु स्टार्ट करिया पूर्व आई वुड जस्ट लाइक टू से a few words that जो भी प्रोग्राम हो सबु प्रोग्राम रो समय सीमा रखिकी कार्य करे गले भल हम क्या वी आर ऑलरेडी एक्सीडेड इनटू द नेक्स्ट टेक्निकल सेशन. आई थिंक मिस्टर स्वाई इज ऑलरेडी हियर एंड देयर आर अदर स्पीकर्स. सो मो तरफ रू आई विल मेक एन एंडेवर दैट आई विल नॉट टेक मच टाइम. आई विल टू कीप इट एज ब्रीफ एज पॉसिबल. शेष स्पीकर गोटे सेशन रो हबार गोटे लाभ भी अच्छी किसी क्षति भी अच्छी. लाभ जे मो पूर्वर जो स्पीकर मैंने जहाँ जहाँ कहीगले सेटा आम समस्त बहुत बुझा को एप्रिशिएट करिया को गोटे भल अवसर थिला. ता नेगेटिव होची आउ किछि कहिया को बाकी न थाई पारे. किंतु द टॉपिक फॉर टुडे एंड आई थिंक द ऑडियंस विल बेयर विथ मी तार
पैराफ्रेज आउ तार जो डेप्थ आपण चाहते विजन ओडिशा होलिस्टिक डेवलपमेंट ना जो मैंने MBA करछंती मैनेजमेंट स्कूल रे से मैंने जानी जे विजन्स माने कौन ऑब्जेक्टिव माने कौन गोल माने कौन विजन समथिंग इट इज नॉट टू बी अचीव्ड इन द इमीडिएट फ्यूचर इट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म माने बहुत किसी से भविष्यता रोचे आज गोटे बहुत प्रमुख दिवस आज हूँ विश्व पृथ्वी दिवस द वर्ल्ड अर्थ डे पृथ्वी सारा जगत सारा लोक आज गोटे प्रतिज्ञा नियंती कि जहाँ पृथ्वी प्रति आम क्षतिग्रस्त करें ताको रिवर्स करने को गोटे उद्यम आम नबू इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव जो इनिशिएटिवटा US अमेरिकार न्यूयॉर्क रे केते वर्ष तले आरंभ होता आज सारा भारत वर्ष रे और पूरा जगत रे सब लोग आज एकत्रित होगी ये ग्लोबल अर्थ डे पाई गोटे प्रतिज्ञा नियंती आम टॉपिकटा होची बहुत बड़ा आई लाइक टू मेक इट एज ब्रीफ एज पॉसिबल I would like to touch upon the historical aspects of Orissa because when I come to the end of my speech, I will come to very few words and phrases which I think encapsulates the vision for the state of Orissa. You know, the state of Orissa is historical. ए राज्यर इतिहासटा अन्य बहुत गुड़े राज्य टू पूर्वर अच्छी यहाँ डॉक्यूमेंटेड होगी अच्छी आपणकर जो 106टा खंडे एबे जो आविष्कार होती जोरा कहती पत्थर रे जो पेंटिंग कराई रॉक आर्ट पेंटिंग्स से जना पड़ी कि 5000 6000 7000 वर्ष पूर्व कि 10,000 वर्ष पूर्व ओडिशा रे सभ्यता बहुत एडवांस स्टेज रे थिला इवन आमर जो 2013 मसीह रे जो गोटे नुआ सहर नगरी को आविष्कार करागला हरिराजपुर रे सेथुरु जहाँ देखा जाउची कि आमर सभ्यता गोटे सिविल सोसाइटी हिसाब रे एबे 4000 वर्ष पुराना बहुत यंगस्टर मानकू ए विषय जानिया को गर्व हबो कि ओडिशा भाषा is one of the recognized 6 classical languages of the country तार गोटे बहुत बड़ा महत्व अच्छी आ मुझे आपको पचारि अन्य 5टी भाषा कौन आप निश्चय कहे कि तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम संस्कृत तापर ओडिशा आप से विषय जानीपारे कि जो कहती एंटिक्विटी माने तार पूर्वर कौन अस्तित्व थिला ओडिया भाषार अस्तित्व बहुत किसी थिला जो 2011 मसीह जो कॉन्स्टिट्यूशन को ये लैंग्वेजटा आमर पार्लियामेंट रे अप्रूव करागला सेतबेले सब ओडिशावासी मानकर बड़ गर्व दिन थिला अगेन लाइक टू टच अपॉन द इश्यू दैट ओडिया रे जो लिपिटा आपण ब्राह्मी पूर्वर लिपि ब्राह्मी और ब्राह्मी पर लिपिर गोटे कंटिन्यूटी है अच्छी ओडिया भाषा कहूला बेले आमे सब बेले मन रखा कि ओडिशार 28% जनआबादी होचंती आदिम जाति आदिवासी तांकर लेखा शैली तांकर कथा शैली तांकर जीवन शैली आमठू केते भाबरे मिसे किंतु केते भाबरे अलग थाए से मानकर उद्यम भी अच्छी कि जोटा महापात्र बाबू कहले कि कौ मंच रे से माने तांकर निज भाषा तांकर निज डिमांड निज एस्पिरेशंस को रखा को चेष्टा करेंगे कि अवश्य ये समय आजिका समय यहाँ बहुत गर्व कथा कि भारतर राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू भारतर प्रथम नागरिक वी आर ऑल प्राउड ऑफ हर वी आर प्राउड ऑफ आवर ओन हेरिटेज Orissa needs to think about its development keeping in view of its past. जदि आज आम नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी कथा कहूचे ओडिशा's knowledge was at its premium. आमर लिटरेचर जोटा कि उभरी है कि पोएट सारला दास कर हाथ रे जो लेखा 15th सेंचुरी जो से उद्यम रखिते महाभारत को गोटे नुआ प्रकार रे आम समाज के सामने पेश करिया
କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଯଦି ଆମେ ଆମ ରାଜା ଆମର ପ୍ରିନ୍ସ ଆମର କିଙ୍ଗଡମ୍ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କଥା କହିବା ଖାରବେଳକ ସମୟ ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୌରବ ସମୟ ଥିଲା। ମହାଭାରତରେ ଏ କଥା ନିହାତି ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବେଦମାନଙ୍କରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି କି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାନ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଆରୋଗେଣ୍ଟ ବହୁତ ଫିୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ହାଇଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦେୟାର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ has been existing in our society since thousands of years, and till today if you look at the USP of Orissa, this is one of the major binding factor in a modern day India. And today I think आपण माने समस्त जानिथिबे रथ यात्रार प्रैक्टिसटा खाली भारत वर्षरे नुह इस्कॉन जरिया हो कि जहाज जरिया भी हो, इट इज एन एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ सेलिब्रेटिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन दिस अर्थ। आपण ताको श्रीकृष्ण भाव में देखु, आपण ताको पेनु महाराज जोटा कंध ट्राइबल समाज रे पूजा जाउथला से भाव में देखु। ये जो आदिवासी आउ हिंदू प्रथार जो कंटिन्यूटी रही ओडिशा रे भारत वर्ष रे अन्य जगह भी थिला, किंतु जो प्रकार ये जो प्रभु जगन्नाथ को कल्ट जोता कहती जोटा कि उभरे आसिक सामना को आसिला, इट इज वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट अचीवमेंट्स ऑफ द स्टेट ऑफ ओडिशा। आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज वी हैव टू इंस्टिल इन आवरसेल्व्स द प्राइड ऑफ बीइंग एन ओरिया। आप ओडिया कहतु कि ओरिया कहतु, टाइम्स विल चेंज, किंतु वी आर बॉर्न ऑन दिस लैंड एंड वी आर प्राउड। गोटे समय थिला जेतबले ओडिशा राज्य ओडिशा प्रांतर जो जंगली हाथी मानक धरा है कि एंड दीज एलिफेंट्स वेर इन हाई डिमांड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। आपन जानिथिबे जेतबले कार्पेथियन इटली रे आजिर इटली जते माउंटेन्स जो एल्प्स जो माउंटेन को क्रॉस करिया को जते उद्यम रखा था कहा जाउची कि गुड़े हाथी जो से यूज कराई ओडिशा प्रांतर हाथी थे, जो कि मेडिवल पीरियड रे हमर राजा मान को गजपति कहला, किंतु टुडे द सेम एलिफेंट इज नाउ प्लीडिंग फॉर आवर अटेंशन। मोर ये विषय गोटे कहबार अच्छी, जदि गोटे श्रीलंका राज्य हाथी टूरिज्म जरिया रे $1 billion इनकम जनरेट कर पारछंती, कैन ओडिशा थिंक ऑन दोज लाइन्स? कैन ओडिशा बी इनोवेटिव? कैन ओडिशा इंस्पायर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया, द ग्लोबल वर्ल्ड इन टेकिंग द लीडरशिप which it has been doing for thousands of years? The spread of Buddhism from the land of this country, where Orissa played an extremely major role, कि today the Chinese research scholars are able to take out documents where our scholars from our land had been to that far off Far East country and had promoted this religion. Very recently we had the Global Buddhist Summit. So we have to think in a very clear-cut manner whether, as my previous speaker said, we want Orissa to be a soft power or we want it to be the iron power. Today the gross state domestic product of the state of Orissa, it comprises of around 65 to 70% of mined products, whether it is iron ore, whether it is coal, or whether it is refining of petroleum. If you are going to have a basket in a very limited context, as 70% occupying a major share in a gross domestic product, we have to think in providing variety. The ways and means to provide variety which we provided in the years past when the people of Orissa navigated through the internal river system, whether it was Kuakhai or it was Prachi or it was any other river or Daya. And from that internal river system, they developed the expertise to spend 6 months at a time
on the Kalinga Sagar, renamed later as the Banga Sagar. I don't know why it was renamed, because people from Orissa didn't object or we didn't have a voice, but we allowed that to happen. It did happen sometime during the British time. To reclaim our past prestige, to inspire the future generations should be our vision. Economic activity is definitely a part of living, but it's not the whole. We have to live a life. We have to live a life along with the other living creatures on our land. ओडिया रे ओडिशा को गोटे बड़ शॉर्ट डिस्क्राइब करा होतला वन पहाड़ रे घेरा राज्य सराउंडेड बाय फॉरेस्ट एंड हिल्स इज द स्टेट ऑफ ओडिशा. सिमिलरली आपण शुणिथिबे इन वेरी ब्यूटिफुल लाइन्स इन ओरिया अरणा मईसी रहिछि अनाई मईसीर पास न जाओ दनाई. The simple lines which speaks about the wild buffalo, sadly today, ये जो प्रजातिटा आज नहीं आम पाखरे. The state of Chhattisgarh is making a mega initiative to repopulate its forests with this ancient animal. The Honorable Prime Minister has taken this initiative to introduce the extinct cheetah in Kuno. I feel the state of Orissa also should endeavor to regain its lost prestige, because in this lost world, in our lost ancestry, lies our future. We also know that our well-known Chilika has been beautifully worded by saying Maralo Malini Nilambu Chilika. You know, today, in the current context, when we are celebrating wetlands as our own cherished natural resources, because why I repeat all these natural ecosystems is, these are the sources of income generations, these are the entrepreneurial activities which may be possible in future. We also have in mind that while doing so, it is our duty, our daitya, that the beautiful lake of Chilka lives for posterity. Whether we say that a brackish lagoon life is limited, but the fact of the matter is the 182 villages in and around Chilka live a life which is integrated to the waters of Chilka. Do we, while doing so, think about a development which will retain the character of this big lake? Today, this lake has a hosting capacity of 1.2 million birds. 12 लक्ष पक्षी ए हर्दरे गोटे समय एकात्रित होकर रहती, which is a record for this whole of Asia, recognized by internationally by the Ramsar Convention. It is our duty again to see the strengths of this state. While saying this, I am also equally happy that when the government, state government, took this initiative of hosting the World Cup in hockey, it was a moment of pride. I think many of us will appreciate that the city of Bhubaneswar, Tri Bhubaneswar Nare Jota Sahara Gatana Hela, is the only city in the whole of the world which has hosted the World Cup in hockey on 2 different occasions. There is no other city in the whole world which has hosted this sort of an international event. I myself have seen at close quarters the enthusiasm of the Orias in watching these international games. We can only hope that sports as a medium of growth, as a medium in showcasing our capabilities and abilities and taking the name and fame of Orissa beyond to the shores of the world, is a potential which needs to be tapped. We are equally proud, I think the world over recognizes us, that when the olive ridleys come swimming to the shores of Orissa, swimming thousands of kilometers, what is there in the state of Orissa for them to come to this place? 485 long coastline. Whether that coastline will continue to afford conducive environment to these olive ridley turtles, Ejo Koinchomane, who live to the lifespan of 150 years. ଆମ ମାନଙ୍କ ମାନବ ଜାତିରେ 150 ବର୍ଷ ରହିବାର
amaro khyamata nahi, but they live and survive for 150 years. There is something in the state that it attracts this 10 lakhs of olive Ridleys every year. Why do they come? Are we in a position to ensure that the future years would belong to them also, as it going to belong to the citizens of this proud state? Narration-wise, we are part of this great country, there's no doubt. As India progresses, there would definitely be beneficial fallout for the development of the state of Orissa. The 30% of poverty line, which has been spoken about by our predecessors, is true, it is a reality. The endeavor has to be as much inclusive as possible, whatever we aspire for. It has to be inspirational. It has to take into account the views and the concerns and the wishes of all our segment of society. Because only then this great state will continue to survive, steeped in history, steeped in culture. You talk about food. Today, we have a move to inculcate healthy food, healthy feeding habits. Very few outside this hall, or maybe outside my state of Orissa, will realize that some of our traditions in cooking, amaro khadya tiyari kabar jo pranalita, is one of the healthiest. ଆପଣ ଛେନାପୋଡ଼ ବିଷୟରେ ବି କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ତେଲ ଅଂଶ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ରନ୍ଧା ହୁଏ, ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଖାନସମା କି ରାନ୍ଧୁଆ ସେଥିରେ କେହି ଛୁଅନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ବଡ଼ କିଚେନରେ କେତେ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ। ଏସବୁ ଜିନିଷ, these are all soft elements of soft power. Can we leverage on this power in the coming years? Can we leverage on our capability of varied aspects of culture which is there in our state? We feel proud that the Odissi dance is one of the most ancient dance forms, because in the 1st, 2nd or 3rd century BC, Christ ko Purbaru, this dance form has been depicted in our rock art caves in various aspects, and it is one of the most modern dance forms also, because 1950 provided the contemporary format for Odissi. This rich past, very few regions in this country have. We are steeped in culture, we are steeped in knowledge, we are steeped in our enterprise. And this is what should, I think, provide us the animal spirit to be a leading entrepreneur, the animal spirit to provide leadership in the field of technology, whether it will be a labor-based or it will be an artificial intelligence-based. We all know that it is challenging times not only for the state of Orissa, but the whole world. Whether by artificial intelligence will have subsidized elements of our society living on this earth, whether like in the European countries, we'll be providing subsidy to the people who don't have a job, will definitely be points to ponder. But this is an excellent opportunity to leverage on the intellectual prowess of our people. Our traditional knowledge, our traditional achievements, everything should be leveraged. And while seeing all this on this grand day of the World Earth Day, I feel, and I like to end my talk because I don't want to take much time, that I feel the 4 cornerstones of any policy which will provide a vision for the state of Orissa to the year 2086 and years beyond. The 4 cornerstones should be, I think all of us could agree, and I request the organizers that whatever speakers have spoken in the past should be duly recorded, because otherwise we talk and it is lost. People like you, I think, are hearing, maybe in future years, you will be the speakers, the future generation will hear you. But I feel the first, as a private individual, I'm grateful to have been invited to occupy this stage. I feel the first cornerstone should be an element of inclusiveness. We have to include all segments of society. The policy and the aims and objectives of this great state should be inspirational. It should inspire the whole world. It should not limit itself to getting inspired locally or in the regions outside the state. It should be innovative. We need to innovate. We need to reposition ourselves. We need to re-establish, re-emerge from all the difficulties which we have got. And keeping in view the dangers of climate change, we recently had the website on climate change being inaugurated, an excellent initiative by Mr. Panigrahi.
we need to have all the plans and programs keeping in view the sustainability of the natural resources on hand. I feel with these four elements of a vision, I feel we can take the state forward. Thank you very much to POVS for giving me this opportunity. बहुत धन्यवाद सहित भुजबल आपण जो भली ढंगरे ओडिशार कला ओडिशार संस्कृति आपको निजर वक्तव्य माध्यम प्रदान कले निश्चित भाव में स्पीच टी रेकर्ड हो रही कथा परवर्ती जेनेरेशन चिंता करिब जे आजिर दिन में 2023 मसीह आम आगामी ओडिशार स्वप्न देखुचु जो ओडिशा गोटे पाद आगे थी आमर प्राचीन परंपरा आमर संस्कृति ये आम भितर थी किंतु आम नुआ कथा चिंता करूँ अनुरोध आसूची गोटे दुटी क्वेश्चन नापाई हाँ फास्ट क्वेश्चन किए करेंगे हाँ मु मीनाकेतन बेहरा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कहूँ मोर क्वेश्चन हूँ आम आपण भी मनोरंजन बाबू कहते जे आमर पैसा कथा 10,000 इनकम भी होनी तेणु बर्तमान आमर एपर्यंत जो एम्प्लॉयमेंट अच्छी जो लेबर इश्यू लेबर सरप्लस अच्छी जो ट्राइबल एरिया आमर लगभग SC ST की मिलाई देले 42% हो जाऊँगी से कंडीशन देखिले माने बहुत तापर एपर्यंत ओडिशा गवर्नमेंट किभली भाव में जो एम्प्लॉयमेंट इश्यू को आमर 236 को जो प्लान टा अच्छी कौन एम्प्लॉयमेंट उपर कौन है कारण बड़ बर्तमान सबुठारु माने समस्या देखिबो ताले एम्प्लॉयमेंट सबुठारु बड़ कथा मतलब लोकों क्षेत्र एम्प्लॉयमेंट नाही सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिसअपियर इंडस्ट्री नाही एम्प्लॉयमेंट कौच नाही आम बर्तमान टेक्नोलोजी बेस आगो आगुच तेणु ये क्षेत्र में आम किभली भाव में माने आ ऊपर एम्फासिस करवा राजेश बाबू को ए प्रश्न मुझे पचारे चाहिए राजेश बाबू आपण ओडिशार अर्थनीति उपरे गोटे कर्मशाला करुले प्रति सप्ताह संपर्क में चर्चा करुले मु दुईटी कथा ए संपर्क पचारि एवं चटापट आम ए सेसन टी सारिबा जे आजिर दिन में 10,000 टंका ओडिशार सबु परिवार रोजगार करने समर्थ होना आपण भावुं कि गोटे समय आसब अंततः 10,000 टंका ओडिशार प्रत्येक परिवार रोजगार करिपारुथि एमती गोटे दिन खूब शीघ्र आसियो बोली आपण आशा करुचंती आसी पारिबो सबु सबु किछि हेई पारिबो जदि हम चाहिबा मु कहूछि जे 10,000 टंका ही आपण काहे कि रखुचंती एम्बिशन आमे ना ना मोर प्रॉब्लम ता सेठी जदि आपण 10,000 कथा भाबिबे आपण सेई तिरुपुर रे लोएस्ट वैल्यू चेन रे केमिति मु शामिल हो पारि से कथा भाविबे सो व्हाट मीनाकेतन वाज आस्किंग एंड इनफैक्ट यू नो ही इज मोर कॉम्पिटेंट देन मी ही टीचर्स इन JNU he studies labor economics I think people like Minaketan and all should actually take up this responsibility he has shied away from me I have been chasing him for last 1 year to put together a group of economists on this issue the employment question because that is going to be paramount so let us forget for a moment this 10,000 12,000 let us say the question of employment is not only paramount at a national level, at a state level, but also at a national level. And that is where I am emphasizing again. There are two things. One is I don't look at 10,000, 12,000. I look at meaningful employment. Now, what is meaningful employment? Meaningful employment has got two things. One, that there is a certain remuneration जोटा कि आपणकर यथार्थता अच्छी जो कामटी करुछंती जेति यथार्थता अच्छी सेति पैसा आपनको मिलू द्वितीय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि स्थायी हेबा दरकार आमे माने सब आमे सारिबा हां सो द टू थिंग्स मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट मींस रेम्युनरेटिव एंड जॉब सिक्योरिटी ए दीटी जिनिस जदि आपण भाबिबे ताले आपणकर रास्ता खोली जिवो 10,000 टंका रु बाहर को जातु जॉब सिक्योरिटी इज मोर इंपोर्टेंट आज 20,000 कमे भी काली की 2,000 कमे पारि नहीं किछि नुहे दैट इज नॉट मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट ओके बहुत भल कथा राजेश बाबू कहले कि मु केवल एया कहया चाहूतली जे आजिर दिन रे ओडिशार गाँ गंडारे लोक मानकर अर्थनीतिटा कौन से संपर्क में चिंता करबा दरकार गोटे
मैट्रिक पास कले तो आम +2 को जीवा कि मिनिमम लेवल आम बर्तमान सुधा ना 2036 मसीहा बेलू ओडिशार अर्थनीति कौन हो से दृष्टिकोण आम चिंता करवा दरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। मो प्रलय बहाली एडवोकेट बाय प्रोफेशन लॉयर was working since 2009 in Delhi। मोर गोटे राजनैतिक क्वेश्चन जेतबले राजनीतिक इच्छा शक्ति बिना कौन सी कार्य संभव हो पारिबनी। आमे सब बही रे पढ़ी ओडिया माने कौन समस्ते पढ़ी ऑल बैक बेंचर्स आर ऑल पॉलिटिशियंस दे डोंट हैव विल पावर। आमे जति भल लोक माने राजनीति को आसीबा पई सुजोग पाउने बा चेष्टा करूने बा से विल पावर नहीं आम पाखरे से पाई केते राजनीतिक दल चिंता करुछंती केते राजनीतिक नेता माने चिंता करुछंती आउ आम भली बुद्धिजीवी माने केते चिंता करछंती सेटा होची मोर आजिर ए उपस्थित समस्त समाज ओडिया प्रेमी मानकु मोर प्रश्न। जय जगन्नाथ। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन सार गोटे मत देले क्वेश्चन नथला किछि। ओके हां दियंतु प्लीज। नमस्कार मु सरोज कुमार साहू कालकाटू आसी पहुँची मोर आमर जो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कि मीनकतन भाई क्वेश्चन कले ता रिलेटेड क्वेश्चन आम ओडिशा रे जते आमर स्टूडेंट माने बाहरुचंती जो माने रोजगार करिया पई एस्पिरेंट ग्रेजुएशन करचंती पोस्ट ग्रेजुएशन करचंती किंबा इंजीनियरिंग करचंती किंबा आईटी लाइन में जाउचंती जे कोनस लाइन में जाउचंती से माने केते कॉम्पिटेंट है बाहरुचंती से मानकु आमे केते स्किल्ड भाव में देखा चाहूँ से माने अनएम्प्लॉयमेंट 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 खाली कही चलीजे किंतु जेकोसी गोटे एम्प्लॉयमेंट को आसवाई से जो स्किल डेवलपमेंट दरकार से स्किल डेवलपमेंट पाई आमे जो माने प्रवास ओडिया माने रहउचंती जो माने कैपेबल जो माने सरकार को पाखर पहुँची पारिबे सेति पई आमे किछि करि परिबा कि कारण एटा सित भुजबल के आंसर रखि नहीं एटा जो माने कहउछंती कि ओडिया ओडिया हिसाब रे ओडिसा रो फेरी के हमें कोन करि परिबा। I can only share with you because I don't have much time. I was requesting Mr. Manmohan. We are exceeding into the next technical session. See, one of the few features which I have seen एबे जोटा मु देखिया को मिलला कि मो समान बयसर जो लोक माने एबे मु देखुची जो मो संगे पाठ पढ़ले बाहर चाकरी करथिले 10-15 जन मु जानि छी माने एबे ओडिसा फेरी आसी चाकरी छाड़ी की बिजनेस छाड़ी की ओडिसा आसी की ओडिसा रे इन्वेस्टमेंट करी की जेत सब अपॉर्चुनिटी अच्छी माने दिस इज द टाइम टू टेक होल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपणकर बैंक ऋण हो कि आपणकर निज जमी जगह हो कि आपणकर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो यू हैव टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज व्हिच इज अवेलेबल एंड पीपल आर डूइंग एंड अगेन इट इज एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज आपन देखो तो बिजनेस जदि के करिया को देखिबो वी शुड नॉट लुक एट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉय हिसाब रे न देखि कि एम्प्लॉयर हिसाब रे देखिले जोटा कि मत बहुत भल लगे कि दिल्ली सरकार गोटे उद्यम जोटा चली कि लेट अस बी एन एम्प्लॉयर नॉट एज एम्प्लॉय। आई थिंक दैट विल बी एबल टू बी अ गेम चेंजर बिकॉज वी बीइंग लीडर्स ऑफ द सोसाइटी विल बी एबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मेनी। See, upon the present context, देखिए, one of the largest number of medical colleges, largest number of engineering colleges are in the state of Orissa. So I think we cannot deny that the skilled manpower is being generated by the state of Orissa. Now, similarly, if this skilled manpower, which is currently, मनकर Bangalore अपन जिबे, Bombay जिबे, हमारा बहुत संख्या रे ओडिया से चाकरी करछथि, कार्य करछथि. Now, whether they would like to come back and invest in this region is something even for the government of Orissa as well as the government of the state as well as the society in general should be able to motivate them to come and do it. Because there is a limitation on the government driven jobs. Government जरिया चाकरी दबा I think एबे ओडिशा सरकार जोटा 60,000 खंडे NMR एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्चुअल को परमानेंट कला एटा सब दिन तो हे परिबनी because there are limitations. Government is withdrawing itself from many spheres being an employer. Disinvestment होची विभिन्न प्रकार कार्य होची. We are permitting the society to engage and to do govern themselves. टाइम सरी जाउची आमे कार्यक्रम को शेष करिबा कारण सार जा कहते नेक्स्ट सेशन पाई कि गेस्ट मैंने अपेक्षा करिसंती समस्त को धन्यवाद देबू 2036 मसीहा बेलू गोटे नुआ ओडिशा आमे देखुथिबा गोटे समृद्धशाली ओडिशा जो ओडिशा रे अंतत गोटे भल जीवन जीवा पाई सुजोग थिबो यही आशा और विश्वास सहित आज ये सेशन को शेष करिबा बहुत धन्यवाद।
Thank you, Manoranjan sir. Before second session, I just want to, sir, please, for a moment. I request Manoranjan sir to felicitate our sir, Mr. Sri Surajit Bhujabal sir, IRS. Next, once again I request our Manoranjan Mishra to felicitate our Sir Sri Rajesh Mahapatra ji. And our program coordinator, Mr. Priyadasi Bala, please be in our dais. And please felicitate our Manoranjan Mishra as, okay, sir wants to give. And thanks to Manoranjan bhai, कि से ओडिशा रो बंदा इतने short notice रे आसिले and आमो program को जो awesome rate रे मतलब rating है जे सेटा समझते कहबे. That's not me only. Thank you so much to him. Yeah, it's our honor. He. Thank you, sir. Thank you so much. For the second session is the sustainability in food, nutrition and agriculture. So I just request Dr. Pavan Agrawal, Principal Secretary ICAR, National Institute of Plant Biotechnology, New Delhi. Sri Jatinder Nath Swai, IAS, Secretary Department of Treasury, Government of India. Dr. Basant Kumar Kar, the Nutrition Man of India, Chief Advisor, Global Center for Nutrition and Demographic Dividends. Sri Aditya Das, MD of Rams Surya Group of Companies. Then our moderator, our own Dr. Swati Naik, Scientist and South Asia Lead, Seed Systems International Rice Research Institutes. Thank you. Dr. Swati Naik is our moderator of this session and is currently working as scientist in IRRI, South Asia Lead for Seed System and Product Management. Also acting as global lead for Rice Seed System under one CGIAR initiative, SeedQual. Thank you. Over to Swati ma'am. Start the session. Thank you. Thank you, Vijaya. Am I audible? Is this working? I saw some technical glitches in the beginning. It's okay? All right. So, thank you very much, POVS, for thinking that you will start your technical session with a very pertinent and important topic, that is sustainability in agriculture, food and nutrition for Odisha. And I am privileged to get the opportunity to host and moderate renowned policymaker, renowned scientists, renowned practitioners and industry expert. As diverse as it can be, our panel is. Before I start this process, I would request all the people in the room to kindly please settle down. Can everyone please settle down? Yes, request everyone please settle down, don't roaming around the hall. And I humbly request, please do not indulge in any side talking, please. We have a great opportunity to listen to some of the really technical and pertinent subject, and we will try to keep it in time. And I am humbly requesting all my panelists. Earlier we thought that we'll have like a 15 minutes, slot for each of us, but we will try in our best level to keep it crisp and targeted so that
we are not getting delayed, and it is not unfair for other sessions, other speakers, and also the lunch is getting also delayed. So in this context, let me, yeah. So I just want to like to tell that I will keep it in a very structured manner that, there are some few broad questions, burning areas or very important discourse, जो विषय कि आम माने चर्चा करिबा आमर डिफरेंट डाइवर्स एक्सपर्ट्स जो माने बसी छंती सेमानक पई कि किछि गोटे ब्रॉड क्वेश्चन जोटा आमे रिसीव करिछु तांको पाखको वी विल प्रोजेक्ट दैट क्वेश्चन एंड वी वुड लाइक टू हियर देयर पर्सपेक्टिव एंड देयर थॉट ऑन दिस एंड इन द एंड आमे किछि समय दबा ऑडियंस को से माने भी तांको भीतर चलतिबा किछि प्रश्न जोटा कि से माने पचारिबा को चाहिबे सो वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी सो आई विल स्टार्ट विथ yes, of course. I wanted to follow a sequence for flow, but I will. Yes. Yes. All right. Thank you, sir. I'll take a clue from our earlier speakers in the inaugural session. We heard about Odisha's potential around aquaculture, the coastal line, the marine trade, and with us we have our secretary from fisheries and a well-renowned policy maker in the sector. He has contributed significantly to this. Sir, according to Odisha Economic Survey that has been completed, we have evidence that there is significant increasing trade in production of fish in Odisha. But still, when we look at a little deep down into the data, we see that there is still import dependency on other states as well. But we do have a great potential, and we know that this is something critical to our diet and critical to our food pattern culture. And how do you see that? How can we make sure that we are becoming a self-sufficient and also flourishing state in fish production and trade? Okay, thank you. Very difficult question to answer. I just see the Odisha's data. The sector has shown a very good growth between 2001 to 2021. At least the official data says that the freshwater production has gone up by about 5.2 times. And the brackish water production, which is primarily shrimp, that has increased by about 10 times. So, and the official data says that the consumption per capita in Odisha is about 17 kilos per capita, as against the national average of 6 kilos. So, looking at the advanced fish eating nations, which is basically Japan, China, and some of the Western European countries, where the average is about 25 kilos, 24 to 25 kilos per capita. So we are about 60% of that. So in terms of domestic consumption, we have another 60% growth from here. Yes, we can do a lot of export because a lot of areas do not produce fish, so we can export. So looking at the freshwater production, currently it is about 9 lakh tons or 0.9 million tons. It has grown by about 10% annually. We see that it can grow about at the same rate of 10% for next 12, 13 or 13, 14 years. So expect that it will double. What are the things to be done in that? One, I think we should make seed available. That's the most important part of it. Whether in terms of fries, whether in terms of fingerlings, whether in terms of earlings. So fries is much easier to do. Earlings means you have to create a system of nurseries prior to letting this earlings grow in the ponds. So Odisha has done very well in terms of increase in the seed production capacity. What I would suggest here is that
the existing state hatcheries as well as whatever is coming up can be done in PPP. There is a lot of private hatcheries that have come up. If you are talking about species diversification, freshwater is primarily restricted to rohu and katla, rohi vakro and miracle. These are the three major ones. Going beyond that, then probably some of these hatcheries or the seed production capacities, I recommend that they should come in PPP, where the offtake is guaranteed by the state for about 3 to 5 years before the market for such new species get a foothold. So then the second one, second imperative to increase fish production is availability of feed. Feed constitutes about 50 to 60% of the production of fish cost, production cost, and if you get cheaper feed, then you are become more competitive. Currently, the feed ingredients which are maize, grown in Odisha, soya meal, unfortunately no, it comes from MP and Maharashtra, and because the feed factories are outside, so you don't get a competitive advantage. So developing feed clusters with associated production areas for soybean can be a focus area. Yesterday I was talking to Collector Latur in Maharashtra. He received a prize from the Honorable Prime Minister on the Civil Services Day. He says most of the areas in Maharashtra have switched over from cotton to soybean because there is a very good market for soybean. So similarly, there can be some initially incentive mechanism because there is a demand for feed. Aditya is a practitioner, so he will know what is the demand for feed. So this is something that can do so that comparative advantage in feed production can be obtained. Thank you. Thank you, sir. Thank you. It was a very crisp and targeted overview, and I'm sure we will be talking more detailed, deep down into it. But जहाँ जेतिकी सार आमको वर्तमान कहले से आमर जो मत्स्य उत्पादन पाई आमर माछ चाषी मानक पाई बहुत स्कोप आ अपॉर्चुनिटी रही ओडिशा रे आउ जदि आमे एग्रीकल्चर आजिकली आमे एग्रीकल्चर क्रॉप सिस्टम भाव में कथा कहने आमे ताको गोटे फूड सिस्टम अप्रोच रे कथबार्ता करूचे इटा माने आमर गोटे आमे मिक्स्ड फार्मिंग ऊपर कथबार्ता करूचे आमे केमिति भिन्न भिन्न एंटरप्राइजेस फूड सिस्टम ऊपर बिल्ड हो पार आमर चाषी भाई भौणी मानक पाई कि ता ऊपर भी बहुत किछि चर्चा करा जाई पारिबो आमे से ऊपर भी आम सहित प्रैक्टिशनर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी अच्छा आम निश्चय फेरिक आसवा इन द मीन व्हाइल आम जिते यू नो फूड सिस्टम विषय कथबार्ता करुचे आमर जो मुख्य एग्रीकल्चर अच्छी आमर एग्रीकल्चर सिस्टम अच्छी सेटा आमर गोटे बैकबोन एंड आम जानी 76% ऑफ पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर लाइवलीहुड एंड आज वी आर नोइंग दैट 20% टू द GDP contribution as was highlighted and etc. Now we have Dr. Pawan Agarwal who is representing ICR, you know, the apex institution which is working for agriculture research for development for our country. Sir, we know that Odisha, you know, last year in 2022 also indexed as a top ranking state for food security index. So let's give a big clap for that. And we have come a long, long way. And today we know that, you know, main crop like rice, we are like, you know, contributing significantly to the central pool. But still, there is something like, you know, where we do think there is disparity in the food security and there is a disparity in, you know, nutritional aspect. And still there are pockets, there are farmers, there are belts where we still see that, you know, the pain in our neck. We talk about hunger, we talk about malnourishment. So, sir, please, what is your thought on that? Thank you, Dr. Swati, esteemed Secretary Dr. J.N. Swain, all the dignitaries on the dais of the dais. Mo prashna ta ko tike broadly kahibi tike. Last 2 hours, whatever we have listened, few of the facts are there. Odisha is a agrarian state, of course, whole country. आमे 60 लाख हेक्टर चाष करुचु
आम 10टा एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी ओडिशा रे होल इंडिया रे 17टा एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी तो मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइमेट आम ओडिशा रे अच्छी तो गुड़ाए lot of type of crops or crops related agriculture related commodity can be grown or are grown. Also we are proud that we are 4th largest fish producing state. We are producing 65 lakh liter of milk. We are 6th largest producer of goat meat. Lot of product like kondamal, turmeric, hala, similipal, honey, hala, they are very famous. The state is almost 15% surplus for rice. And again we have a question that we are talking about food security, nutritional security, income security, labor security, livelihood security, environment sustainability, and life as a whole is an issue of discussion. So I like to talk some of the aspect because I saw Odisha very closely as a Vice Chancellor of Odisha University of Agriculture and Technology. I also had occasion to contribute to the state planning or state working or training, skilling, education or technology development. So I like to touch. It is good that India is the only country probably, that is true for Odisha also, कि आमे फूड सिक्योरिटी को बाय लॉ आमे एग्री करिछु दुनिया रे कौन सी कंट्री इंक्लूडिंग अमेरिका डजंट हैव ए लॉ टू हैव ए फूड सिक्योरिटी फॉर द पीपल ऑफ दैट कंट्री इंडिया हैज हैविंग टोल्ड दैट एंड आल्सो गरीब मान को कम पैसा रे टंकाटे 2 टंका रे चाउल दबाटा बाकी सब सोशलिस्टिक एक्टिविटी आमे गुडा करिछु तो आज जो जने कहबो मते कैलोरी मिलुनी तमे खाए पई गंडा मिलुनी देन देयर इज सम प्रॉब्लम ऑफ सिस्टम. It is per se is not a problem. Having told that, still we have challenges. Challenge of nutrition is a big challenge. Livelihood is a big challenge. अन्य मन जीवन कमी कहले लेबर by income, livelihood is a big problem. ओडिशा रो कृषि समृद्धि ओडिशा 2020 रो जो प्रोग्राम हम देखिबे, it is very inclusive, very forward looking. Balram program also is very inclusive, very forward looking. किंतु that is not enough. यदि अपन देखिए आम जेकोन से क्रॉप प्रोडक्टिविटी हो फॉर एग्जांपल राइस आम नेशनल प्रोडक्टिविटी और कम अच्छु दैट इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कमोडिटी किंतु ताको जदि आप डिसाइड करिवे एंड यू विल एनालाइज वेयर वी रियली वी स्टैंड 40% ऑफ ओडिशा लैंड इज इरिगेटेड more than 50% or 40% is low land or upland. Upland रे धान लगेबे आपण गुटे टन भी पाइबेनी वर्षा बनी गला चल जीवो. लो लैंड रे धर जो गुटे मीटर पानी अछि आपण धान लगेबे व्हाई यू एक्सपेक्ट ए प्रोडक्टिविटी और आउटपुट सो दैट मेक एवरेज वेरी वेरी पुअर. तमने आमे आम डाइवर्सिफिकेशन टाकू प्रॉपर्ली करि पारिनो. आपण जो गत 50 वर्ष इतिहास देखिबे 1970 रु 2020 पर्यंत 50 वर्ष आम एग्रीकल्चर प्राय 10% डाइवर्सिफाई करिछु राइस रु कला परे भी वी आर 15% राइस सरप्लस. बहुत लोग मत कहती से जिते मुझे थी आज भी प्राउडली कहूँ आपन बहुत इट इज ए हेडेक आम सरप्लस अच्छी इट इज ए प्रॉब्लम मुझे इट इज ए अपॉर्चुनिटी. आपन जो कहीं कही था ओडिशा 10% माइनस अच्छी आप मुंडर हाथ दे बसते जेहेतु यूर सरप्लस यू ओकेजन टू डाइवर्सिफाई केमती करें आप राइस को राइस डाइवर्सिफाई करें यू कैन ब्रिंग वैल्यू एडिशन आपन बासमती भाया सेंटेड राइस करें नॉट एक्चुअली बासमती आप एक्सपोर्ट बढ़ी पारे राइस ऑलरेडी इंडिया 80,000 कोटी टंका अधिक एक्सपोर्ट करुच्ची राइस एंड प्राय 2 लाख कोटी टंका अधिक आम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करुचु आज इंडिया. सो वी आर नॉट दैट बैड सेप आम अलग क्रॉप को करें अलग कमोडिटी को डाइवर्सिफाई करें जो 10% पाखे अच्छी टिपिकल अपलैंड है आम हर्टिकल्चर क्रॉप करें वेजिटेबल अच्छी फ्रूट्स अच्छी. आपन जदि आ गोटे 2टा एस्पेक्ट अच्छी जोटा होल देशपाई इश्यू इट इज ए प्रॉब्लम फॉर द होल कंट्री एंड दैट इज वेरी ट्रू फॉर ओडिशा. वन इज पल्सेस अदर इज ऑयल सीड्स. इवन यू टॉक ऑफ एनिमल साइंस फिशरी एवरी सेक्टर योर मोर देन 60-70% कॉस्ट कम फ्रॉम फूड फीड आप एनिमल कौन फीड कहते
And that also has to come from agriculture, crop production, crop or related commodities. So ultimately आपन को निज खाए पे रखिया पड़िबो, एक्सपोर्ट पे करे रखिया पड़िबो, आपन न्यूट्रिशनली रिच फूड करिया पड़िबो. It can be a primary crop like rice, wheat, maize, or it may be diversification to other commodity. It may be fish, it may be fruits, it may be vegetable. आज इंडिया लक्षे कोटी टंकार अधिक फ्रुट्स एंड वेजिटेबल नष्ट करे. एंड यूथ माने आज बेकार अच्छा. मुझे ओयूटी थी 2-3टा कम गवर्नमेंट थ्रू बा ओयूटी थ्रू केतरा कम मु आरंभ करी. फॉर एग्जांपल आप कहते आवर यूथ आर एग्रीकल्चर, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर, दे डोंट हैव एम्प्लॉयमेंट. एंड आम डिबेट कर 10,000 टंका 15,000 टंका. मुझे छोट 2-3टा कथा कहूँ. इट इज वेरी इजी टू एम्प्लॉय यूथ. आज यूथ कौन चाहूँ, दे डोंट वांट टू गो टू द फार्मिंग फील्ड इज ए टिपिकल वे. बापा दिन जाऊला हल धर हल कर चाहूनी. ऑल्सो व्हाई यू वांट टू सी एग्रीकल्चर द सेम वे व्हाट इट वाज देयर. You can bring some entrepreneurship, you can bring skilling, you can bring management, you can make market intelligence and they can help. I am giving 2-3 example. ओडिशा मेकानाइजेशन बहुत कम. अपन के मना कला ओडिशा कृषि समृद्धि प्रोग्राम रे आजिर बा आगु भी प्रोग्राम अच्छी that you can make a custom hiring center. Government give more than 75% subsidy. You make a young people. अपन क्लस्टर 10-12टा गाँव में मुझे क्लस्टर करंतु यंग को यूथ को स्किलिंग करंतु ट्रेनिंग करंतु आ से गाँव लोक मान जदि अपन वेजिटेबल बा फ्रुट्स मु अपन एक्चुअल कैलकुलेशन कहूँ आपन जो सोलार बेस्ड गोटे स्टोरेज करेंगे 20 टन बा 10 टन आपन गोटे वेजिटेबल गोटे दिन रखिए गोटे केजी आप टंकाटे खर्च हम. आपन जो चाषी को 7 दिन लिवरेज देवे रखापी तार कष्ट नहीं. कष्ट चाषी कौन करे संध्यारे बिके गला बिक्री है फिंगा फिंगी करदेव कि डेस्परेट सेल करदेव चली आसब. सो इफ यू कैन मेक इट लाइक दैट कस्टमाइज बाय यूथ. सेकेंड कथा कहूँ यू स्किल द यूथ. टुडे यूथ वांट्स तापर मोबाइल थी पाखे टेक्नोलोजी थी एडवाइज थी धर से फार्मर जो मार्केट रो इंटेलिजेंस को से फीडबैक देव. आज मार्केट रे बर्तमान प्रोडक्ट ग्लट हो गलानी आ बिक्री हेनी. से चाषी कह डोंट टेक प्रोडक्ट टू फार्मर व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड रिसोर्सेस. सो स्टोर रखिए अपन. सिमिलरली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. टुडे इज ए वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स. आमे भाबू लोकों को ठिया करदेबू किसी काम देवनी हेनी. एंड विदाउट ए स्किल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिग स्किलिंग प्रोग्राम इज गोइंग ऑन. इवन आई हैपन टू बी पार्ट ऑफ द कमिटी ऑल्सो. सो आई कैन एप्रिशिएट. तो कहवा अर्थ है द स्किलिंग हैज टू कम. सेकेंड गत 50 वर्ष तले 1960 मसीहा लेट मी टेक यू आवर एग्रीकल्चर वाज एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्शन. आम के मैक्सिमम प्रोडक्शन करूँ तार कारण कौन आम खाइबा लोक थे पार्टी बड़ था खाइबा अमाउंट कम था. आप जहाँ प्रोड्यूस करेंगे से जीव पेट भीतर को. टुडे एग्रीकल्चर इज डिफरेंट. वी हैव फूड सरप्लस आर पीपल हैव मनी टू पे. वी हैव चॉइसेस. आज सबुठ गरीब लोक को जो आप पचारे तू कौन खाइबू मुझे कहली मु पिज्जा खाइबी मुझा खाइबी मो प्लेट डाइवर्सिफाई हो गला. मो पाखे पैसा अच्छी. सबुठ गरीब लोक पाखे पैसा जो चॉइस करने से जुग गला 50 वर्ष तले 40 वर्ष तले माई फैमिली बैकग्राउंड ऑल्सो आम से डाली खाइबू से भात खाइबू से रुटी खाइबू. वी डू नॉट हैव लिबर्टी ऑफ डूइंग इट. टुडे वी हैव लिबर्टी. सो योर प्लानिंग प्रोडक्शन टू फोर्क सबू प्लानिंग रे अपन डाइवर्सिफाई करेंगे चेंज करेंगे ताको आनिबे. फॉर एग्जांपल आपण जनक इकोनॉमी केमती हेबो गोटे यूथ ताको आपण स्किलिंग कले ट्रेनिंग देले एंटरप्रेन्योर कले. आज ओडिशा सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते सकाळे इट इज ह्यूज नंबर. एपीओ मु एज ए वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी आई क्रिएटेड और सपोर्टेड 105 एपीओस. मुझे एंड वी ट्रेन लाख्स ऑफ फार्मर्स लाख ऑफ स्टेक होल्डर्स. फार्म ट्रैक्टर मशीनरी रे मोर मन अच्छे मु 200 रु अधिक को ट्रेनिंग देती ओडिशा रे. कहवा अर्थ है आप जब लोक को कैपेबल करेंगे हाउ देन द फेलो विल बी कैपेबल टू अर्न. आप ब्लेम कर केते दूर करेंगे.
मुझे बहुत गुड एस्पेक्ट कहूनी ऑफकोर्स प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन डाइवर्सिफिकेशन दीज आर ऑल इंपोर्टेंट पॉइंट मुझे दुई तीन पॉइंट टच करके कथा रखुची क्वेश्चन आंसर जी मत पचारे आई विल एलाबोरेट लॉट ऑफ थिंग्स किंतु आज एग्रीकल्चरटा केवल भेराइटी को लिमिटेड नुह not related to individual like fish or crop or horticulture like that. You have to see everything as one agriculture one. क्या चाषी देखिनी मु क्रॉप लोक ना मु माछर चाषी ना मु दुईटा महिषी रखी सब गुटे तेणु आपन आम प्लानिंगटा भी सेमती हवा दरकार आम एक्सटेंशन भी एमती दरकार आमको प्रोडक्शन टू मार्केट टू वैल्यू चेन टू प्रोसेसिंग टू कंजप्शन सबू आमको लिंक करिया पड़िबो आपन जानी ना मार्केट इंटेलिजेंस मोर प्रोडक्शन केते हबो मोर मार्केट अच्छी ना नहीं मोर इनपुट कॉस्ट कम करिया पड़िबो चाषी आज दुईटा चीज देखे मु केते कम पैसा रे रिलायबल इनपुट पाइबी मु प्रोडक्ट कला परे मार्केट के बिक्री हबो दिस टू आर क्रिटिकल थिंग्स एंड हाउ वी आंसर दैट ए सहित मु आ गोटे पॉइंट आपन कहिकिर मु कथा रखिबी आ तापर जदि आपन प्रश्न पचारिबे आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर आपन फंडामेंटल क्वेश्चन आपन मेसेज होची एग्रीकल्चर कैन गिव एवरीथिंग एक्सेप्ट द मिनरल्स बेस्ड प्रोडक्ट that includes fuel, that includes clothes, everything. We have not groomed agriculture that way 60 years back, but today we have occasion. For example, biofuel. Another 20 years, more than 50% fuel will come from biological sources. Sugarcane, already it is a known biofuel. Maize, it is known biofuel. Second generation biofuel, rice. Odisha re Bargad re already BPCL made a factory, and that we groomed that to some extent, and I am sure every district of India will have a biofuel center. Biogas will be a part of biofuel tomorrow or energy system. So my point is, think beyond what we are thinking for state of Odisha for agriculture. Lot of scope, and everybody has a role to play. A policy maker, a young youth, a skilled, unskilled, super skilled. Make people capable. It is not only knowledge. It is your knowledge, it is skill, it is your technology, it is all together. And the youth in the center, life in the center, production to consumption, everything together, the life of the Odia people will make a difference. Once you make change by 2036, I am sure. What Honorable Prime Minister says, 2047 we should be a developed country, I am sure. Agriculture point of view, by 2036 you can achieve that, and I am talking very realistically. If we plan very properly and we execute it meticulously. With this, I am thank you very much for giving me occasion, and thank you for keeping a patience for listening me a little more probably. I will be happy to add anything more if there is. Thank you very much. Thank you, Dr. Agarwal. That was very comprehensive and insightful overview of Odisha, possibilities and opportunities also in Odisha's agriculture. I mean, definitely last end रे किछि questions नबा समस्तंगटू सर गोटे बढ़िया कथा कहिले सर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन उपरे कहिले केमिति आमे भिन्न भिन्न चाष करि परिबा ता उपरे कहिले से सर कहिले जे आमे टोटल केमिति फूड सिस्टम अप्रोच नहीं परिबा केवल एग्रीकल्चर रे कारण चासी पाई धान हो बिरी हो बा माछ चाष हो से गोटे कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम रे काम करूची तार परिवार तार जमी तार जहाँ भी संपत्ति अच्छी ताकू से व्यवहार करची निजर ओवरऑल लाइवलीहुड पाई कि सबू फैक्टर को आमे आम सहित आज अच्छा आमे जहाँ को बहुत फंडली कहू न्यूट्रिशन मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर वसंत कर सर यस मुझे जानची सर अपन बहुत पॉपुलर एंड इंस्पिरेशनल ऑल्सो आपणकर जो काम न्यूट्रिशन सेक्टर आम समस्त को बहुत जना सार जड़े ब्रीडर सार बहुत सारा भेराइटी डॉक्टर अग्रवाल जन ब्रीडर बहुत सारा भेराइटी सी बाहर कर रिलीज कराई एंड आम जाचे जे ग्रीन रिवोल्यूशन जो आम कहू से मॉडर्न भेराइटीज रो बहुत कंट्रीब्यूशन रही एंड से ब्रीडर कम्युनिटी को आम सब बेले विल बी थैंकफुल एट द सेम टाइम right now in the policy making aspect a lot being said that can we make all our varieties for main crops like bulk consumption crops like rice आमे ओडिसा रे भात न खाइले हबनी आमे सबुदिन भात खाइबा भिन्न भिन्न चावल पसंद ग्रो करिबा तो
आमर जो रिसर्च आम कि से जो खाद्य आहार जो आम नौचे ताकू केमिति पोषकयुक्त बनई पारिबा कैन वी मेक इट टिके अधिक से कैन वी मेक बायो फोर्टिफाइड राइस प्रोटीन रिच माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच एंड लॉट ऑफ आम जहाँ भी आमर खाद्य जो कल्चर पार्ट आम ताकू केमिति अधिक न्यूट्रिशन ओरिएंटेड करि परिबा आउ से पर्सपेक्टिव रे आमर रिसर्च आउ डेवलपमेंट सेक्टर कौन करि परिबो मु टिके अनुरोध करिबी आमर डॉक्टर करन को जे से विषय रे हमको इनसाइट्स देबे। धन्यवाद स्वाति मंच बसी सचिव स्वाई बाबू दास बाबू एंड अग्रवाल सर मु प्रथमे कृतज्ञता ज्ञापन करी प्रवासी ओडिया विकास समिति को एवं सूर्यनारायण मिश्र सार को जे मते डाकी भल कथाटी पचारे स्वाति जितेबाला सबुज विप्लव है ग्रीन रिवोल्यूशन है 1964 65 66 मसीह से भारत में टोटाल से जो सीरियल प्रोडक्शन माने गहम चाउल एवं स्मॉल सीरियल जो मांडिया अंतर्भुक्त से मांडियार भाग थिला 100 भाग रु 37 रु 38 भाग किंतु सबुज विप्लव परे मांडियार भाग वर्तमान 17 रु 18 भाग माने प्रोडक्शन रो भाग आइडियली माने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन मतरे आमर खाद्यर 1/3 मांडिया हवा उचित मांडिया हूँ एमती जिनस जोटा कि माक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट माने से विभिन्न प्रकार खाद्य अच्छी पुष्टिसार अच्छी एवं विटामिन्स मिनराल्स अच्छी तेणु मांडियार पतन जमती घटी सेमती बहुत जिनसर पतन घटी जोटा स्वातिक मतरे आमर फूड सिस्टम रे बहुत बिगड़ी जाइए आमर फूड सिस्टम कह केतक कहती ब्रोकेन केतक कहती डाइल्यूटेड केतक कहती नष्ट हो जाइए तेबे आमे देखिबा ये नष्ट जो होगला तार परिणाम कौन आम G20 कथा कहूँ अन्य एशिया महादेशर विभिन्न देशर कथा कहूँ ओडिशार कथा कौन स्थिति आम ओडिशा रे देखिबा जदि स्टंटिंग जोड़ा ओजन पिलांकर ओजन कम एवं स्टंटिंग हेले से पिलार बुद्धि कमी जाए आम जो पिलाटी क्लास रे अंक फेल हुए इंग्राजी रे फेल हुए घरे आसी थापड़ पकाऊ कि बेले बेले आम गोटे पिला को कहू अरे ट्यूबलाइट माने से डेरी रे बुझे कि आम बेले बेले आउ समय कहू ईस्टर्न इंडिया रे लोक गुड़ा भारी अलसुआ यार प्रथम और मुख्य कारण हूँ माल न्यूट्रिशन बा पुष्टिहीनता माने वैज्ञानिक विज्ञान अनुसार सिद्ध एवं गोटे देश बा जाति को आपण बा गोटे परिवार को जदि उन्नति करिया चाहिए तेबे न्यूट्रिशन शुड बी द टॉप इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी जो देश न्यूट्रिशन ने इन्वेस्टमेंट करिसंती से माने आजिका दिन में प्रगतिशील देश देखंतु आमर ओडिशा रे 31 भाग पिला होचंती स्टंटेड माने उच्चा कम आदिवासी पिला 42% आम ओडिशा रे ऑलमोस्ट 25% होचंती आदिवासी पॉपुलेशन किंतु चली जातु आपण जापान को सेठी 5.5% पिला होचंती स्टंटेड आनेमिया इज ऑल परभेसिव माने 70 80 90 हाराहारी आमर ओडिशा रे होची 65 भाग होचंती महिलांकर आनेमिया 72 भाग आदिवासी महिला आनेमिया आपण पळै जांतु श्रीलंका आनेमिया आपण पळै जांतु भल भल देश को माने यूके रे 11% अमेरिका रे 12% तेणु कहीं ए देश ए जाति आगेबेनी आमे बहुत डेरी रे बुझिलु किंतु भल कथा होची भारत सरकार माने प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व में पोषण अभियान आरंभ कले 2018 रे एटा टार्गेट ड्रिवेन एवं ओडिशा सरकार भी कमिटमेंट एथिरे आसिलानी जोटा कि से न्यूट्रिशन बजेट होची ओडिशा गोटे प्रथम राज्य न्यूट्रिशन बजेट होची मांडिया मिशन होची आउरी बहुत कथा होची ओडिशा रे किंतु वर्तमान जो परिस्थिति अच्छी से ही परिस्थिति रे 2036 हो बा 2086 हो मोर जो हिसाब अच्छे गोटे स्लाइड जो देखे होता से माने जदि आमे आमर इनिशिएटिव बा उद्यम 3 4 5 गुण न करिबा तेबे कमिबो नाही
बा 2036 सुधा आमे ओडिशा को गोटे डेवलप्ड स्टेट करि परिबानी सेथिपई बोधे आमको राति दिन काम करिया पड़िबो बहुत कारण नहेले 65% 70% आनेमिया महिला एवं शिशु को नहीं आपण गोटे सिक ओडिशा बट गोटे रोगिला ओडिशा देखिए नुआ ओडिशा देखिपारे किंतु मु देश में कम कर विभिन्न जगह कम कर गोटे रॉकेट साइंस नुहे एटा को करी हबो आपण गोटे नॉर्थ ओडिशा आनिबे जदि नॉर्थ ओडिशा आनिबे तेबे आईक्यू निश्चित बढ़ी जीवो आपण स्टंटिंग रे आईक्यू माने जीडीपी 5 रु 11% अफेक्ट करे तेणु नहेले ओडिशार जीडीपी बा जीएसडीपी तो से राज्य में कहती 2 3 4 5 6 आप ओडिशा हो भारत रे बेसी ओलंपिक प्लेयर नहांती कहीं बेसी नोबेल लॉरेट नहांती कहीं तार मुख्य कारण होची बा जीडीपी आम डबल डिजिट होनी कहीं तार मुख्य कारण होची माल न्यूट्रिशन 42% आडोलोसेंट ओडिशार जिंक डेफिशिएंट आ जिंक डेफिशिएंसी हेले आपनकर इम्यूनिटी रहिबनी 20% माने पिला विटामिन ए डेफिशिएंट आउ गोटे सबुठारु बड़ कथा होची डबल बर्डन आरो गोटे स्लाइड देखिया हो कि आउ गोटे नेक्स्टा देखिया हो आउ गोटे कथा होची डबल बर्डन एटा तो देखैले सिंग एटा देखतु माल न्यूट्रिशन 10 अवतार माने ग्रासीची केवल अंडर न्यूट्रिशन नुहे मु स्टंटिंग वेस्टिंग आनेमिया कथा नुहे सेठी देखंतु मोटापा बढ़ी गलानी 20% पिला विथ प्री डायबिटिक आम लड़ू दौचु मिठाई दौचु माने विभिन्न प्रकार रसगोला दौचु मांडियार भी लड़ी दौचु कौन लाभ हम से प्री डायबिटिक पिला डायबिटिक हम एवं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हम माने ऑलमोस्ट माने हाराहारी 25% पॉपुलेशन मोटापा हो गलानी 22-23 खोर्धा गोटे जिला जोटी भुवनेश्वर अच्छी 39% महिला मोटा तेणु जोटा स्वाति भल कथा कहले आम जो जो स्थिति आप देखुं से कैंसर हम डायबिटिक हम विभिन्न प्रकार बुद्धि भी कमिब प्रोडक्टिविटी कमिब एवं आम गोटे जो नुआ ओडिशार स्वप्न देखुचु जदि आम इन्वेस्टमेंट ए न करूँ बा राति दिन काम न करूँ केबे आम डबल डिजिट ग्रोथ पाइबानी केबे आम नुआ ओडिशा देखि पारिबानी जो स्किल उपर बहुत आलोचना सकाल ठू एपर्यंत होची कोड स्किल आसीबो कॉग्निटिव पोटेंशियल डेफिशिएंसी आप स्किल कौट आणवे आई को कौट आसो तेणु यहाँ हूँ कोर आउ क्रिटिकाल तेणु मोर अनुरोध जेहेतु सचिव अच्छा मैं स्वाति प्रश्न थिला जे आम कौन करा आम मिनिमम 6टा फूड ग्रुप कम से कम जदि लोक दे पारिबा बा छोट छोट पिला को 4टा फूड ग्रुपर खाद्य दे पारिबा से निश्चित भाव में आम गोटे नुआ ओडिशा दे सृष्टि करिपारिबा से फूड ग्रुप रु 2टा होचंदी सारंकर डिपार्टमेंट सेटा होची गोटे गोटे होची फिश आ गोटे होची मिल्क से होची टोटल 10टी फूड कैटेगरी गोटे होची सीरियल आ मिलेट द्वितीयता होची डाली तृतीयटा होची मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट चतुर्थ होची रूट टीवर पंचमटा होची ग्रीन लीफ वेजिटेबल अदर वेजिटेबल फ्रूट सुगर फैट एवं फिश एग आपण माने दुख करिवे भारत रे 90% पिला जो माने करो मिनिमम पिला माने जो माने 1000 डेज अप टू 2 इयर्स जोटा कि सबुठार बड़ा महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन पाई माँ पेटर 2 वर्ष पर्यंत को आम 1000 डेज को 90% बा 89% पिला 4टा फूड ग्रुप पाते ओडिशा रे 80% पिला 4टा फूड ग्रुप पाते तेणु आमको सेठी कैलोरी हंगर अच्छी प्रोटीन हंगर अच्छी हिडन हंगर बा माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी अच्छी ओबेसिटी है कौन आप करेंगे किंतु एटा रॉकेट साइंस नुहे प्रत्येक जिला जोटा कि आप आजिकल भारत सरकार कहते सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर प्रत्येक जिले में कौन आम 6टा फूड ग्रुप को सेल्फ सफिशिएंट करें जम्मा रॉकेट साइंस नुहे मनरेगा को लिंक कर मो उपकारी बगीचा ओडिशा कर न्यूट्रिशन सेंसिटिव कर हाँ तेणु बहुत गुड़े प्रोग्राम आमर चलती जोटा डायरेक्ट न्यूट्रिशन एवं इनडायरेक्ट न्यूट्रिशन माध्यम आम गोटे सुनार ओडिशा बा नॉर्थ ओडिशा बा आमर स्वप्न साकार करने नुआ ओडिशा देखा न्यूट्रिशन पर इन्वेस्ट करी थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वसंतकर इनफैक्ट डेफिनेटली आम ये काम कर जो सर कहले जो आम सुनार ओडिशा जोटा कि न्यूट्रिशन फोकस रहिबो आम समस्त से योगदान रहिबो
आमे एग्रीकल्चर विषय डोमेन विषय कथा कहूचे आज आमर सहित एक्वाकल्चर एंड फिशरी सेक्टर सीनियर पॉलिसी मेकर एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स अछंती आम सहित अछंती श्री आदित्य दास जी की मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ राम सी फूड एक्सपोर्ट डिवीजन एंड ऑल्सो currently vice chairman of MPEDA, India's one of the largest. Still on the board. Thank you sir for correcting me. And private sector आमर एंटरप्राइज डेवलपमेंट रो बहुत बड़ा रोल रहिबो जदि आमे आमर वी वांट टू स्ट्रेंथन आवर aquatic enterprises and also the marine for products and the industry for it. We know that Odisha is known for its coastline, one of the longest and highly potential. In this context, there are many countries who are marching ahead, being sustainable for fish farming and other different models, be it Ecuador or other Vietnam and other many Asian countries which is having great coastlines. So a perspective रे आम ओडिशा पाई भी बहुत पोटेंशियल रही फिशरी आउ इवन श्रिम्प कल्टिवेशन तार प्रोडक्शन आउ एंटरप्राइज डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एनहांसमेंट ऑफ द फार्मर्स हु आर इन्वॉल्वड इन एक्वाकल्चर ए पर्सपेक्टिव रे मिस्टर दास को कहबी जे तांकर पर्सपेक्टिव रे रखिबे कौन पोटेंशियल आम ओडिशा अच्छी आम केमिति आमर रिफोकस करवा दैट एई एरियाटा आहुरी फ्लोरिशिंग हबो आउ गोटे मेजर इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटी भी बाहरिबो आमर चासी मानक पई के. Thank you, madam. Respected dignitaries on the dais. One request, madam, please let me know jatare time besi ejiba. So a jo vision exercise ame jo karu chu 2036 or 2086. So I feel very honored that I've been invited for such an important thing. I'd like to keep myself my speech short, and let's start with what is my vision for 2036. What is it? So one vision should be, maybe let's start, why can't we be like neighboring Andhra? एबे जस्ट आमे कहले कि आंध्र प्रदेश रो प्रोडक्शन ओडिशा रु 10 गुना 10 times. At least let's say by 2036 it should be double. Let's catch up. But why stop there? सोच भी बड़ी होनी चाहिए. Why can't we be like Thailand? Thailand has this amazing tagline, like Orissa tourism has India's best kept secret. Thailand says it is the kitchen of the world. And Orissa, like, every panel discussion, every meetings you have, we, always start with the same things, climatic zones, this potential. And yes, we have the potential to become the kitchen of the world. Why can't we like Vietnam? The shrimp industry is a very important industry there. Gradually, with the efforts of my industry colleagues, the Orissa government and the central government, sir is there, they have, treating fisheries as a very important subject. Honorable Prime Minister created a separate ministry of fisheries. There was the whole Pradhan Mantri Matsya Sevi Yojana. So these are all right things. And finally, there's a country called Ecuador. I think most people wouldn't have even heard of it. One of my industry colleagues, he went there last year, and I was joking. I think I said, I think you are probably the first and only Odia who has gone to Ecuador. Because I have never heard of Ecuador. But it's a small country. I have map re dekha tanga coastline ta kona. Aw dekha amo Odisha ra coastline tike bora. They have managed to become the world's largest prawn producer, beating India, beating Thailand, beating Vietnam, beating Indonesia. So that is the potential we are sitting on, just Odisha itself. I'm not even talking about Odisha, Andhra and the entire India. I'm saying Odisha mein itna potential hai. So we can be the seafood capital of the world. This should be like a vision exercise. And since it's not just 2036, it's 2086, so we should be the seafood capital and the kitchen for the universe. Because I think by 2086, maybe
we will have colonies in Mars or Moon. Right. So that is what I envision the sector to be. How can we do it? For this, we need active participation both from the public sector and the private sector. And sir, with his previous stint at the solar energy department, he has really come up with innovative schemes and policies where the strength of the private sector were combined, with the strengths of the public sector. It was a very symbiotic thing. And we are looking forward to the implementations of some of the things that are in pipeline. So in this public-private partnership mode, a lot of things can be achieved. There's an entire fish processing industry that happens in China. Salmon, cod, pollock, all of this will be caught in America. Then they will be sent to China. Then the Chinese workers, they will make it into fillets and more value-added items, and again it will be exported back to US. Now with the whole reshoring and let us stop business with China, India has that opportunity. But a private company cannot take such a huge gamble because these things are not made overnight. And this is exactly where you require that skill, how to skill a fish, fillet a fish. Those 1 or 2, 3 years of learning, those yield losses will be extremely significant. So that is where the government funding is required. And that is exactly how China managed to do that. That is exactly how Poland managed to do that. And that is the opportunity that Orissa can seize. Infrastructure, the same sadak, bijli, pani, we still need that. It has improved, yes. In my last 15 years since I've been working in Orissa, it has improved, but we wanted to improve more. Again, if we want to become like Andhra Pradesh, I want the road connectivity like Andhra Pradesh. I want my containers to go from Paradip port or Dhamra port or Gopalpur port, not Vizag port. Because till now there is no reefer container facilities. Yes, most of us, we celebrate international flights, but what the industry needs, not just my industry, each and every industry, we need wholehearted support for container terminals to be set up in Orissa. And I know they are not viable, and that is where the state government should come in and start funding. You build it, then we will build the ecosystem around it. Electricity is there. Everyone keeps telling me, oh, you are so lucky, you're from Orissa, electricity tariff of only 1 rupee 50 paisa. But I said, yes, but half the time electricity is not there, so I use diesel. So, and when we are talking about sustainability, this is very important. Because our food production system, when we rely on diesel generators, India is losing on foreign exchange. We are polluting more. And we are raising the cost of our production and we can't compete in the world market. So electrification is definitely the need of the hour. Yes, it is happening. And I keep on repeating the same things, but this is how policy making works. You keep on repeating, and things, they gradually work. Another one is regulations. Sometimes we need regulations because not everyone will be acting in an ethical manner. People might be doing illegal farming, they might be polluting. And when that comes out into the press, the foreign consumer, it's not like, oh, that's not because it's not Suryodyog product, it's not Falcon product. They'll just say that this is from India and all products from India is bad. So there is only a limit to how much we can regulate ourselves. We need the government to regulate everyone so that India doesn't get a bad name. And finally, R&D. India is very forward-thinking that ways. One of the sponsors of this event is IRRI, and you have Central Institute of Freshwater Aquaculture, Central Institute of Brackish Water Aquaculture. So more investment in R&D so that we can completely harness
the potential of the blue economy, breeding programs like sir just mentioned. I think we need that for seafood and in other things. So I said, what is my vision? I said, how we can go about it. Now, why should we do it? Why bother with this? Because this will transform the agri sector. I have seen in my lifetime what has happened to the farmers who have switched over from paddy farming to prawn farming, despite their ups and downs, the wealth that they have gained. And if we further diversify species, we further make their life easier, it will be only better and better. I mean, you just have to look at the case study of Thailand, how the rural economy of Thailand just completely transformed, just thanks to aquaculture. That was one of the biggest vote base of Thaksin Shinawatra, the ex-Prime Minister of Thailand. All his voters supported him for that. Another reason why we should focus is, it is what we call a proverbial low-hanging fruit. I mean, it is there, we already have it. We have the land, we have the labor, we already have the expertise and market. Just some more meetings, just some more connections, collaboration, and commitment, and we can reach the goals that I've outlined. And finally, because it's labor intensive, we are all talking about ChatGPT replacing our jobs, AI, automation and all that, but trust me, they haven't built a robot yet who can fillet something as better. Some automation is happening, but for a pretty long time, this is going to be labor intensive. And my own experience is, this industry, this is like a poverty destroyer. I have seen women who have started their careers in our factories. They have grown up, now their children have grown up to be doctors and engineers and others. They have climbed out of poverty. So thank you for giving me this platform, and looking forward to a good question and answer session. Thank you. Wonderful. Thank you, Mr. Das. That was really, giving a lot of potential opportunities, and also many farmer entrepreneurs, budding entrepreneurs in Odisha can really draw clues from it, and there is a significant room, to put our Odisha in that map, in the global map in terms of our fisheries, aquaculture, and the business around those things. And while listening to you, I already started thinking about rice fish farming, different innovations, how do we integrate and all those things. So thank you very much. So we are running out of time, and we started very late really. So there are a lot of questions, but unfortunately probably we'll not be able to take up all those things. But before we go to our audience round, this one last question, I would like to just go through very fast across all the panelists, as it is a Vision Odisha conclave. So if I look at a more futuristic aspect, what is that one key area to focus for our sustainable food, nutrition and agriculture sector? And that could be one critical area of recommendation and suggestion, and it could be serving to policy level, it could be an actionable point, it could be a innovation in partnership, or even the research which we need to strengthen in for our Odisha. So this is just a quick round, and I would like to know one prominent recommendation to focus on for Odisha's growth. For me, especially, it is extremely difficult to set down a vision and policy, because you will all come back and see कि आपको रोक कौन रहा है, आपन को रखी जी. So responsibility comes directly on me. But yes, there are 2-3 things I want to tell. One is, if you are talking about nutrition, soil रे जैसे कि nutrition सब वही करी नई को पड़ेला. जो nutrient cycle टा थिला, either
जो क्रॉप रो जो ग्रेन्स आसुला चैप आसुला ताको चैप को गाई खाउतले ग्रेन्स को आमे खाउतलो एंड इट वाज गोइंग बैक टू द सेम सॉइल बिकॉज वी आर नॉट मूविंग आउट ऑफ द विलेज दैट न्यूट्रिएंट साइकिल इज ब्रोकन सो द चैप प्रोबेबली गाई खाउतले प्रोबेबली द manure is coming back to the soil but chemical fertilizers it becomes much easier and as far as grains are concerned grains are all going into Mahanadi maybe in Odisha eti Jamuna re jauchi how do we recover that so that is why we give a lot of emphasis on aquaculture because all goes to the water either the river water or sea water so captured by the aquaculture systems so that is something we can think of. Another major thing in nutrition is not the food alone, it is basically diarrhea. This is something we always ignore. Diarrhea is probably the single most cause for malnutrition in this country. So improving water quality, and there have been a lot of evidence-based findings. So this is something we have to focus. This is not part of this group, but I think this is something that has to be at the forefront of our discussions because nutrition is looked after by one ministry and health, the diarrhea and diseases are looked after by another ministry, so there is a disconnect. This is something that has to be done. As far as aquatic productions or systems are concerned, I think so Das has already given a lot of insights into it. I would just try to add on to that. One is the new areas, I have already told, that wherever we are diversification, instead of trying to build it through the public systems, we will do a PPP supported by the public systems or giving a guaranteed kind of a thing through the private, developed by private, one. Two, for the marine fishermen, because marine catch is limited. If you are looking at the livelihood of the marine fishermen, maybe we have to go through a lot of artificial reefs and recreating some of the coastal fisheries, which we have denuded over the year. This will be a sustainable coastal fishery. This has been very successfully done by Japan and this is something worth emulating as far as we are concerned. And just coming to agriculture, I always venture because not my subject, somebody else has to repeat that. Possibly, there are two options we can do. One, we have to go whole hog for the micro irrigation. There is no other, there is no escape from that. Better use of water, better productivity, and more importantly, once you get into micro irrigation, the farmer has the control over his production systems and he doesn't have to depend on the rain. Currently, once the rain comes, the farmer just has about 5 to 6 days to decide what crops he is going to do. And whatever he produces, there will be a glut in the market, he loses. So micro irrigation is something we must do. And it must be done through the cooperatives, cooperativization, collectivization. What Israel has done, this is something that has to be done. Looks difficult, has to be done. That is one. And the second is improving how do we give more income to the rural people because people will depend upon farming for some more time. So we have to increase the penetration of power. Initially, agriculture was done simply by human power. Then the bullock animal power had come. Now, what kind of power we are trying to bring in? Tractors have come, but most of our agriculture implements are suited for the large farms. Can you do it for the small farms? All our agricultural policy books write that our fields are fragmented, that's why our productivity is small. I just want to ask one question. Japan and China, when I was a student, there were only 20 decimals. Decimals mean 0.2 of a 0.2, 20% of an acre. The average land size in Japan and China, and they were 3 times our productivity. Why? Because they have developed small machines suited to their landscape, and this is something we have to do whole hog. Increase the usage of power so that the individual farmer becomes productive and his income level increases, and that will lead to a sustainable agriculture. Thank you. Thank you so much, sir. There is a range of, potential areas to focus on which sir emphasized, and I really thank, and this shows what caliber of policymaker he is, and these are the areas where the practitioners have to work, the researchers have to work, and certainly it's giving us a lot of vision for future. Thank you so much, sir, for your critical inputs.
Now I just would like to request Dr. Agarwal to also give his inputs moving forward. Thank you very much for this. Let me talk few points in sequence. First point, in agriculture today in India, you have to go for integrated farming system. That means you have to see all the commodity together so that your production, productivity, sustainability, environment is sustainable. And when you go for integrated farming system, individual commodity per farmer will be less. So community involvement, inclusive, and market inclusive, that has to be there first. Second point will be how to reduce the cost of production, whether it is a crop or animal science or fishery science or anything. And for example, in animal fisheries, maybe 70% is feed cost. In crops, fertilizer, land preparations, mechanizations, all have a lot of cost. Fertilizer, let me give you an example. Government gives more than 2 lakh crore rupees of subsidy. It is a big issue. And everybody talks that we have organic form of compost, organic, vermicompost, whatever. How to bring those things in subsidy system or government policy system? Lot of debates are there, but we still have to find a way. Third thing, whatever you produce nutritionally rich and acceptable quality. Quality never means only nutrition. It can be keeping quality, it can be transportation quality, it can be like quality that you like it. An American consumer, a Japanese consumer, an Indian consumer may like differently. A North Indian consumer and Odisha consumer may like differently. So you have to understand for whom you are producing. Whether you are producing for the people of Odisha, or you are planning to export to outside Odisha, or you are sending to other state. Third thing, your product from farm to market. There are a lot of steps and lot of technological intervention chahiye, policy intervention chahiye. I'm giving you an example. You can use a sensor to know whether my apple is correct or not correct when I'm harvesting, right stage of harvesting. When I'm transporting, whether my apple is correct or not correct, you can monitor. In the supermarket, you can keep a sensor to know whether your apple is correct or not correct to be consumed. That is true for water irrigation. A sensor in IoT base can tell you that my water is enough for a field or not. From mobile you can control, and those are available today. I am not talking hypothetical things. These are available. Then, of course, market and other things are there, and everywhere whatever I talk, few points, that it goes for up to table, and everywhere, all aspect, including technology, science, policy, logistics, everything should be taken care. So a lot of players are there, and everywhere, like industry, there is a viewpoint. So everybody has a role to play. So nobody should say, I am the only man, I will make it successful. Everybody should work together. That is the only last message. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Dr. Kar, kindly please. Thank you. 2036 सुधा मोर स्वप्न हम गोटे नॉरिस्ट बा मिशन माल न्यूट्रिशन फ्री ओडिशा ता माने एबे जो 65% आपण एनीमिया देखिले बा आदिवासी क्षेत्र में 70% देखिले सेटा गोटे सिंगल डिजिट रे हो किबा 31% स्टंटिंग देखिले सो एवरी माल न्यूट्रिशन इंडिकेटर शुड बी एट सिंगल डिजिट नंबर 1 एवं 2036 सुधा अति कम 50% बायो फर्टिफाइड मिलेट प्रोडक्शन हो एवं ओडिशार समस्त लोक तांको खाद्यर 1/3 सीरियल मिलेट हो बायो फर्टिफाइड एवं प्रत्येक जिला 6टा फूड ग्रुप रे सेल्फ सफिशिएंट हो एवं न्यूट्रिशन सेंसिटिव फूड सिस्टम ओडिशा देखू 2036 सुधा जो थे न्यूट्रिशन सेंसिटिव फूड सिस्टम कहले से हेल्थ एस्पेक्ट को विचार को नियाजाऊ वाटर सैनिटेशन हाइजीन आचर को विचार नियाजाऊ एवं गोटे न्यूट्रिशन रिवोल्यूशन आम आणु विथ वोमेन लीडिंग एट द फ्रंट थैंक यू सो मच Thank you so much for your vision 2036, sir. And the last bit, sir, Mr. Das. Okay, I'll keep mine extremely short. So, more Odia bhai bhani mane apana jo ethi achanti. So, let us try once a week at least. Ame kenti support kariya. Once a week
गोटे सी फूड आइटम खाइबा जोटा ओडिसा रे आस्थिबा माछ की एटा हाँ जदि ओडिसा रो भी जदि हेबनी आपण आंध्रा रो भी आनले ठीक अछि सेटा इधर सेटा करंतु कि नले गोटे ओडिया डिश करके सोशल मीडिया रे प्लीज आपण प्रमोट करंतु मे बी द हैशटैग कैन बी हैशटैग मो चिंगुडी एवरी संडे great. Nice idea. and frozen preferred not more than kind of fresh रे आजकल formaldehyde सब होची thank you Thank you, Mr. Das. I'm sure, like, you know, many of would have, will go and support this cause. And now, quick questions. 2 questions we can take up. Anyone from audience would like to? Yes, I saw the hand in the end first. Yeah. Can someone hand over the mic, please? Volunteers, please help. Volunteers. Only 2 questions, please. Hello. Good afternoon, everyone. Good afternoon, the panel. My question is to Mr. Jatinder, sir. Like we have discussed, the incorrect practices have been included in this shrimp manufacturing or farming, like extreme extraction of groundwater and that remaining toxic water that has been going to the river and destroying the like river water thing. How can we just like keep it very clean and like how should we stop this incorrect practices from this? Now you are saying toxic. How toxic is it? So, as I know that like the no, it is all reports. My point is, what do they use in shrimp? It is feed. Okay. Feed रे कौन था? Fish meal था, soya meal था. They are all eatable items. Maybe the concentration is little high. Even the breed we are using, that venom breeds are there. Yeah. And apart from No. These are all don't go by the newspaper reports. These are like Times Now sensational reports. So my point is, there is established this thing wherever this shrimp farm diffluent discharge is helping the mangroves to grow much faster. Okay. Please don't get into that. That is all organic things. Yes, the concentration high. It is just like sewage flowing into the from our toilets into the river. That can be treated, but there are no chemicals, no zinc, no boron, nothing of those, and no arsenic. Please understand this. These are all newspaper reports. Many articles are written. Just a minute, let me complete. Many articles are written so that they are paid based on the number of lines that appears. Okay. I can explain it to you offline Sure. also. Thank you. Thank you. As a time constraint, please. Yeah, Dr. Kaur, till recently, Kalahandi was known for malnutrition, and now it has improved a lot. So, how this government has improved? Can you share? And malnutrition was a big issue for infant children and other things. How they have improved? Hello. I think there is an improvement, but it has to be more, what I wanted to say. Even in the state of Odisha, stunting has been reduced in 5 years' time. Wasting also has been reduced. But there is an increase in anemia and obesity, that is sad, but there is an improvement overall on malnutrition status. Not only improvement, there is also a strong political and policy will now. There is a Poshana Abhijan shaped by the determination of Honorable Prime Minister. There are also many structures and institutions including a nutrition budget in Odisha. So I see a lot of optimism in addressing malnutrition. Thank you. Thank you so much. This is the time I request Dr. Swati Naik, please felicitate our guests, our speakers. First, Dr. Pavan Agrawal, sir.
Sri Jatindranath Swai sir. Dr. Basant Kumar Kar sir. Sri Aditya Das sir. एते भल सेशन हैला परे भी मते लगिलानी भोक लगिलानी बोधे समस्त को ताली बिल्कुल भी बाजुनी लंच टाइम आसीगलानी ओनली 15 मिनट्स दियंतु आमको and now I just want to give this opportunity to felicitate our moderator Dr. Swati Naik. Volunteers, please help. Volunteers, please help. Stay here with me. Please help our speakers with their folders and trophies, mementos. Now we are coming for technical lectures. Maybe samaste sunithibe TED speakers, TEDx. So it's our pleasure, it's our honor. Ki sir, Sri Charudat Panigrahi sir is with you today, is with us today. So give a big round of applause for Charudat Panigrahi sir. And I request him, please come to the dais and say a few words with us and share few suggestions and advice with us. Thank you. Thank you. Over to you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. Samastanku namaskar. In this session, I'm going to talk to you about climate change and what we should do in climate change. What are those few policy suggestions and what we should do in 100 years and in 150 years. So 2036 will take 13 more years. And 2086 we will take 63 years. Now if we don't think about climate change, nothing will happen. So it is human health and it is environmental health. These are the two things we have to be very, very careful, and particularly for Odisha. So I will not talk more about data, statistics or jargons. I will talk about what is practical, what can be done for Odisha, what is our responsibility now that we have come here for this vision exercise by Pravasi Odia Vikas Samiti. So Pravasi Odia Vikas Samiti has two angles, Prabasinkara Vikas and Odisara Vikas. So it means you have to connect both. Pravasi Odiyankara daitwa kon Odisha pai. The pratham responsibility of all of us, including all the youngsters who are here today, I am very happy to see the youngsters here. Prathame Odisha situation ta ko janantu. Prathame janantu Odisha re keteta jilla achi, keteta gaon achi, keteta panchayat achi. Ei jilla gaon panchayat re केते लोक चाष करुचंती, केते लोक चाष करू नाहंती, केते लोक चाष करिया पई इच्छुक नुहंती, केते लोक छाड़ी की पळेलेनी. जदि आपण रियलिटी रे कथा हेबे ताहाले विजन एक्सरसाइज विल बी फ्रूटफुल. दैट इज फर्स्ट. मु आपण मान को एम्बारेस करिया पई चाहूनी
मत लगुनि आपण मान भितर बहुत जन थे जो मैंने कि एक्जाक्टली जानी आम केतटा पंचायत अच्छी विच इज ओके बट जिते आम विजन एक्सरसाइज करूचे से आमको टिके जानवा को पड़ो जे आम क्लाइमेट चेंज कथा होचे वन अपन टिके सेपटे पछपटे टिके पार्टीटा बंद कले टिके मीनिंगफुल हम कथाटा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर तारो यथार्थता एवं तारो प्रैक्टिकलिटी फॉर ओडिशा इज प्रोबेबली द हाईएस्ट आपन एटा सुनिथिबे दिस इज द टैगलाइन ऑफ G20 ता भितरे द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग टू ऑल ऑफ अस अबाउट लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट व्हाट इज दिस लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट दिस इज आवर कल्चर climate change is or has to be connected to our culture consumerism little greed more need or little need more greed we have to understand if we do this amaro jete jubak achanti jete jubati achanti jete more than about half of Odisha's population today is below 35 तांको पाई क्लाइमेट चेंज शुड नॉट रिमेन ए जार्गन समस्ते क्लाइमेट चेंज कथा होचंदे आमे भी क्लाइमेट चेंज कथा हवा जेतबेले छातटा उड़ी जीवो तार दिन सकाळू 21 दिन नथिबो लाइट सेतबेले जानुचंती क्लाइमेट चेंज कोन हैला जेतबेले ऑलिव रिडली आज आसिलेनी लक्ष्य आसिकी नेस्टिंग कले देवी मुहाण रे अस्त्रंग रे वी आर वेरी हैप्पी ऑलिव रिडी जदि न आसीबे हमर कोन हबो वी शुड अंडरस्टैंड मैनग्रोव हमर मैनग्रोव रेस्टोरेशन निहाती दरकार बर्तमान मैनग्रोव रेस्टोरेशन जदि हम आम जो कहूचे लॉन्ग कोस्ट लाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन इफ द कोस्ट लाइन डजंट एग्जिस्ट टुमारो सो मु गोटे मोर मौलिक प्रश्न आपण माने केते जण ओडिशा जीवा पई चाहूचंती चाहूनांती प्रथमे आमे कहलु जे ओडिशा रे किछि नाहांती पिला मानको पाठ पढ़ा नाही चाकरी नाही बाहर को पळेइले बुझियला एबे आपण टिके पिला मानकु पचारंतु एते गरम रे आउ जिबे कि ओडिशा एते बात्या रे जिबे कि साइक्लोन हेले जिबे कि ओडिशा आमे कोन करूचु जदि क्लाइमेट चेंज को एतिकी सिंप्लीफाई निज लाइफ रे जदि न बुझी पारिबु क्लाइमेट चेंज कहबाटा गोटे इट विल बी ओनली ए जार्गन आमरो किछि अभाव नै आमरो ओडिशा हैज बीन द फर्स्ट स्टेट टू हैव ए क्लाइमेट बजेट आमे सेत में एडवोकेसी करूतलु and climate budget रे वर्ष को about 24,000 crores allocated अच्छी for the next 10 years till 2030 तेणु विजन जदि 2036 कथा होचे एई क्लाइमेट बजेट केमिति इम्प्लीमेंट हबो वी शुड बी मोर इन्वॉल्व ऑल ऑफ अस शुड बी इन्वॉल्व POVS एंड जते भी हमर अनुष्ठान अच्छी एसोसिएशन अच्छी हमर समस्त एठी वेरी एक्टिव पीपल आर हियर स्टूडेंट्स आर हियर दे शुड बी इन्वॉल्व पंचायत रे क्लाइमेट चेंज प्लान गोटे हवा दरकार पंचायत क्लाइमेट प्लान एटा किछि नुआ कथा नुए एटा लेखारे अछि एक्टिवेट करबा दायित्व कहार दायित्व आमर स्टेट कहार स्टेट आमर जागा कहार गाँ कहार आमर तेणु केते दिन आउ कहबा से कलेनी ये कलेनी सो वी हैव टू गेट इन्वॉल्व दैट इज द फर्स्ट हाइपोथेसिस ऑफ दिस विजन एक्सरसाइज सेकंड जिनस हला आमे वर्तमान आपण माने केते दूर एटा जानी थिबे अबाउट 17% अर्बन माइग्रेशन होची छोट छोट जगारू अर्बनाइजेशन द्वारा अर्बनाइजेशन पाई छोट छोट जगारू अर्बनाइजेशन होची लोक माने माइग्रेट करचंती सिटी को आगुरु बाहर को जाउतले एबे 80% इन द नेक्स्ट 20 टिल 2025 80% of Odisha will be migration 17% or 80% will be in Odisha in Bhubaneswar आपण जानिचंती भुवनेश्वर रे गला 3 वर्ष रे 7800 टा गछ कटा हलानी डू वी नो अबाउट दैट आर वी टॉकिंग अबाउट दैट फॉरेस्टेशन रो गोटे कंपेंसेटरी फॉरेस्टेशन थाए जदि 7800 गछ कटा हेची ताले 78000 गछ लागिबा दरकार दायित्व कहार बुझिबो किए सो विजन 2036 क्लाइमेट चेंज रे माय फर्स्ट सजेशन इज ऑल ऑफ अस आर रेस्पॉन्सिबल So we have to be climate warriors, climate advocates, all of us.
आमर जी जहाँ जी कर से वी हैव टू बी क्लाइमेट वॉरियर्स नंबर 1 तापर कौन हम जदि आम क्लाइमेट वॉरियर्स हेले आज प्लीज मार्क माय वर्ड्स आज 2036 भितर 3टी इलेक्शन हो पारे 2086 भितर आउ 5टी इलेक्शन हो पारे सो यही जो 5टा रू 8टा इलेक्शन अच्छी आगु को से क्लाइमेट हैज टू बी ए मेजर मैनिफेस्टो आइटम एंड ऑल ऑफ अस हैव टू बी क्लाइमेट वोटर्स दैट इज माय सजेशन फॉर विजन 2036 एंड 2086 कैन वी बी क्लाइमेट वोटर्स आपण पंचायत रे प्रश्न पचारि पारिबे कि क्लाइमेट चेंज पाए आम गाँव एतिकी जमी सॉइल डिग्रेडेशन होईची तार कौन करा जिवो तुमर मैनिफेस्टो रे कौन अच्छी बजेट रे केते पैसा अच्छी करिवो किए दिस इज द प्लानिंग वी शुड रिक्वायर फॉर विजन 2036 मैक्रो लेवल आम सब जानू मैक्रो लेवल क्लाइमेट COP27 COP15 वी नो अबाउट ऑल दैट the basics is how do we implement this at the last mile. So these are the two things, two suggestions I have. I know she is already standing behind me. There are two suggestions we have for, so एक हला climate voter, दुई हला climate proactive generation, pro planet generation. आपण माने जेते जण youngsters including all of us, we have to be pro planet. आपण एटी visitor नुहंती ए गाँ आपणकर आपण कौन बुली आछन कि एठी को सो दायित्व भी आपणकर सो यू हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी जदि यह हो पारे ताहले विजन 2036 एंड 2086 विल बी सक्सेसफुल एज फार एज क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न सो क्लाइमेट चेंज पाई वी नीड मोर टाइम राइट सो थैंक यू सो मच बट एक्टिवेट होगा पड़ो थैंक यू Satya bhai, please come to the stage, please, to felicitate our sir. Sri Charudatta Panigrai, sir. I will say the link of this Sankar jo initiative अच्छी I will say the link in the group in Pravasi Odia Vikas Samiti group. आपण माने आगु को एटा promote कर परिबे आपण गले. Thank you. This is the lunch time. It's only for 30 minutes. Only for 30 minutes. So please, our speakers भी अच्छी, our delegates भी अच्छी. Before that, I want to announce our समस्तंक सांगरे महंत राजू दास सर अयोध्या आसी हनुमान गढ़ी तो प्लीज तांको टिके सम्मान दबा आमे गोटे ताड़ीकर करवा प्लीज सर कम टू द स्टेज विल फेलिसिटेट यू एज वेल. It's a proud moment for Pravasi Odia Vikas Samiti. Someone is Maharaj ji, Mahanta ji coming from Ayodhya to Delhi for this event. So it's our great moment. So give a big round of applause for him. Request Priyadasi bhai, Prakash bhai, please come to the stage. Mole bhai, Prakash bhai, please come to the stage. Prakash. टिके ताली करो सह आमे तांको स्वागत करिवा. गच्छ 2 मिनट मु तांको देबी सी आम पई किछि कहबे. महंत सर आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं. महंत जी को हम रिक्वेस्ट कर ले ओनली 2 लाइन हमें बता देंगे क्योंकि हमारी ऑलरेडी टाइम इज़ वेरी प्रीशियस फॉर अस. हाँ तो फिर हम लंच में जा सकते. सर को 2 मिनट देते हैं सर को बोलने के लिए. सर प्लीज.
सभी को जय सिया राम, मंगल कामना, ढेर सारा आशीर्वाद। मैं धर्मनगरी अयोध्या से महंत राजूदास, इस ऑडिटोरियम में जितने भी महान भाव हैं उन सभी लोगों के लिए मंगल कामना करते हैं, ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं कि जिस उद्देश्य के लेकर आप लोगों ने आज का यह सफल आयोजन, इस कार्यक्रम का आपने आयोजन किया है, हनुमान जी महाराज की कृपा दृष्टि बनी रहे, जगन्नाथ भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे कि यह जो भाव आपका है, जो विजन है, जिस रीजन को लेकर, जिस भाव को लेकर, किस प्रकार से देश बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, किस प्रकार से लोगों को शिक्षा, संस्कार, रोजगार, इसके साथ साथ देश को कैसे डेवलप किया जाए, उस डेवलप में उड़ीसा का क्या महत्वपूर्ण योगदान, और उड़ीसा किस प्रकार से, जिस प्रकार से वहाँ सारे संपदा उड़ीसा में है, लेकिन जिस प्रकार से डेवलप और देश और दुनिया के सामने में उड़ीसा निखर के आना चाहिए, इस उद्देश्य के नाते आप लोग सभी लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद, मंगल कामना। और आपने जो सम्मान दिया, हम निवेदन करेंगे आप लोग धर्मनगरी अयोध्या आइए और हनुमान जी महाराज का दर्शन करिए। और अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, आप दर्शन करिए, मंगल कामना, ढेर सारा आशीर्वाद। Thank you everyone. Please, lunch time is only for 30 minutes. We'll start after 30 minutes immediately. Please, आउ आमर ग्रहण रे बहुत स्पीकर आने डेलीगेट्स अच्छे, आम टिके प्रायोरिटी दबा लंच एरिया रे, लंच हॉल रे. So please, thank you. बाबा खा लो एनु मत आनी दे दो मत भोक गलानी ए संतोष भाई खराब कर सब नंबर सब स्पीकर खराब कथा कहला नंबर दियो हेलो
चल छाड़ दे। हेलो, तू तेरे पास मिल गया? कुछ नहीं, नहीं नहीं, तू ललित से कर, वो मना कर, ध्रुव से पूछ पहले क्या है। सब में दे दिया एलसी देख के, और ध्रुव से बात कर। अरे तुम दोनों भी खा लो। कहाँ रुकी की पूछ रहा हूँ? कहाँ? ए, नहीं, इसे मौसा एक बस। मौसा माउसी का? हाँ, तो ए प्रकाश भाई, अभी के तमे करो ना, मु जिब्बी सब आइए तम जदि काम 5टा बेले जे एठी आई बाहर एठी आई तो ना देखियो हजार लोकंकर हजार आज आसी शुण शुण अबिका कहनी आला 3 मास पर आज आसिक भाषण दवा बहुत केते खाली कहीदेले कौन हम सामना कसले तो कामटा हम ना पक्ष रही कौन मॉडरेट करता हूँ तो पूरा टाइम टू टाइम काली पुणे काम अच्छे ना प्रोग्राम निकाल के भेज
ना ना मो कहवा कथा यार गोटे रिव्यू ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିଏ କେତେ history will remember us. History will remember us. History will remember us. ତମେ କରିବ क्वेश्चन पचारिबो आंसर देबो दैट इज द फॉर्मेट नहीं खाइबे कोन से जागा नहीं बा सेठी बसिबे सेठी आमे एमिति करिया सुन हां दिस इज द पैनल दिस इज द पैनल लॉजिक ये पे फ्री के लिए लॉजिक थोड़ा अलाउंस करिए हां ये गाड़ी नंबर है हां इसको अलाउंस कर दीजिए जिनका गाड़ी है क्या हुआ अच्छा अच्छा ये गाड़ी कुछ रखा क्या हुआ वो मीडिया का गाड़ी है और रास्ता पर लगा हुआ है बोल दीजिए Attention everyone, DL4CAH 9013 Honda car, grey color Honda car is parked wrongly. So please help guards to move from there. Please move this car from there. 9013 Honda car, grey color. Huh?
सत्य भाई सत्य भाई आपनकर अछंती ना नहीं स्पीकर समस्या एट अछन गुड आफ्टरनून एवरीवन जो मैंने बाहर अछंती टिके भितरु पळासी में नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करिवा जदि समस्त लंच सरी गलानी ताले हॉल को आसी गले हमें नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करिवा प्रियदर्शी भाई प्लीज गाइड ऑल आवर डेलीगेट्स प्रियदर्शी भाई प्लीज should I start this is the time for our third session education what education means in our life and what education important role in our life that everybody knows. So for that I want to invite Professor Damodar Acharya, former chairman AICTE, former director IIT KGP, session chairs. Professor Amarendra Behra, professor and joint director CIET NCERT. Professor Balram Pani, Dean of Colleges, Delhi University. Professor Pranati Panda, Professor and Head Department of School and Non-Formal Education, NIEPA. Professor Nirad Kumar Das, Professor and former Director, School of Education, IGNOU. Our moderator, our member also, our Vice President and moderator of this session, Professor Satyabhushan Das, Professor Marketing, BPCL Chair Professor, Chair CMEE IIM Lucknow, Noida branch. Thank you. Professor Satyabhushan Das is the Professor Marketing at IIM Lucknow at IIML. He has been leading in numerous key roles such as Dr. Ishwar Dayal, Chair Professor for Futuristic Issues in the Behavioral Science and Founder Chairman, Center for Marketing Emerging Economics. He was awarded with the prestigious Sastry Indo-Canadian Doctoral Research Fellowship for pursuing doctoral research in management at University of Manitoba, Canada. Professor Das has published in several leading and reputed international journals of marketing. He is co-authored research studies, have won various best paper award at 2014 to 2022 annual Conference of Emerging Marketing Conference Board, 2013 Marketing Research Society of India Annual Conference and 5th International Conference on E-Governance at Hyderabad. He is recipient of Best Researcher Paper Award from Emerald Publication for the year of 2012. He recently studied on consumer behavior on COVID-19 lockdown as he received lots of coverage from national and international media. This is all about our Vice President, Professor Satyabhushan Das, and moderator of this session. I request him to start the session. Thank you. Over to Satyas Bhai. Thank you, Vijay. So this is the session after the launch. I know that after some time all of the delegates will join. So good afternoon to all of you and welcome to this session, education, of our Vision Odisha 2036-86 program. First I would like to introduce today's esteemed speakers. Each of them do not need much introduction because they have already made their identity in their own domain. To my left,
Professor Amarendra Behera, who is now Joint Director, NCERT, and Joint Director, Central Institute of Educational Technology, a constituent of NCERT. Professor Behera has vast experience in NCERT, and he was head of the department ICTs and training of CIET NCERT between 2012 to 17. Diversified his involvement into educational technology, media, particularly radio, television, interactive contents, multimedia, new media, and he is also associated providing academic support for development of national focus groups, position papers, and also associated in dissemination of the vision of NEP 2020. He is also involved in several technological initiative policy decision making. Then next, Professor Acharya. Professor Acharya himself is an institution. He is an institution. Professor Acharya is the former director of IIT Kharagpur and former chairman of All India Council of Technical Education, New Delhi. And Professor Acharya held several important positions at IIT Kharagpur, such as Head of Industrial Engineering Management, Dean of Vinodata School of Management. He was Deputy Vice Chancellor, and also almost all important portfolio. And most important, the Chief Minister of Odisha conferred him with the Think Odisha Leadership Award in 2010, jointly with the former Vice Chancellor of Odisha University of Agriculture and Technology, Baidyanath Mishra, for his contribution in the field of education. Next, Professor N.K. Das. Professor N.K. Das is now working as a professor of education in the School of Education, IGNOU. He joined IGNOU in 1988, and vast experience, has published more than 50 papers. He has edited books, self-learning material, proceedings of conference, performed as chairman, a member, coordinator, and member of NAC visiting teams for assessing several BED colleges, and performed as a member of DEC, UGC, AICT teams. He is a member of Faculty Board of Central Institute of Education, University of Delhi, Board of Studies, etc. And next to him, Professor Pranati Panda, who is sitting. She is a professor and head of the Department of School and Non-Formal Education, also heading a dedicated unit of school standards and evaluation of National Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi. She has more than 30 years of teaching experience, teaching and research experience. She is currently leading a national program on school standards and evaluation, a major initiative of Government of India for institution of school performance evaluation in 1.53 million schools of India. She is among the editorial member of several international and national journals. And all of, if I will keep on reading, it will be so many pages, and we are already delayed. So let me go straight to the topic, education. As all of us know that education globally plays an important role in the overall development of an individual as well as society. The previous speakers have told that education already very important aspect, because education opens up world of possibilities for individuals by empowering them with knowledge and prepares for life. And how will face life, how will change critical solutions, education empower us. Today, India is one of the top global destinations for its excellence and high standards of education. Initially, classrooms were restricted to schools, teacher and school. Now it is, after increasingly technology has added innovative digital teaching solutions in these sessions and making it more practical, applicable and relatable to our life and surrounding in an interesting manner. India, being a traditional country, was not ready to initially adopt educational technology, but now it is very interesting to note that the educational sector is using technology such as cloud,
virtual data centers and virtualization as an enabler so far. This vision of 2036 is for the short-term development and expansion of the graph of Odisha. The vision of 2086 is for the long-term development and ensure that Odisha becomes the happiest state in India and leaves a world footprint better than developed nations like Denmark, Finland, etc. We can have a long-term vision of bringing forward a fusion of Gurukul system, values, along with technology-based education, modern in outlook and traditional in heart system to ensure that modern benefits are attained along with keeping intact the cultural values of historical Odisha. Before opening the session, I will make a small overview of important news clippings indicating status of education in Odisha. This Times of India 2022 news. Before that, I can tell this 2021 census has not come, but as for 2011 census, the population of Odisha was 41.97 million, of which the literacy rate of Odisha was 72.87%, of which the male literacy is 81.559%, female is 62.46%. There is a gender diversity in terms of literacy. And Times of India November 2022 news that tells Odisha has been placed among the top 10 states in performance grading index. The Department of School Education and Literacy of the Ministry of Education released the PGI of states and union territories for the year 2020-21 recently. So PGI is a unique index for evidence-based comprehensive analysis of school education system in all states and union territories. Odisha has secured 10th rank in PGI for the year of 2021. It had been placed 14th rank in 2019-20. So Odisha has made significant improvement as per this November 22 report of Times of India, and it is ranked among top 10 states by securing 877 points out of 1,000. If you look at another report that in Times of India September 2021 that tells Bhubaneswar ranks last in quality education in SDG Urban Index. This is November 2021. So what is telling, essentially, the city has been ranked bottom in quality education in the Sustainable Development Goals Urban Index 2021, recently released by the Niti Aayog, contrary to its increasing popularity as an education hub. This is a matter of concern. Odisha capital has scored 50 out of 100 in quality education, while Thiruvananthapuram tops the list with 96 points. The survey was conducted for percentage of school internet schools with computer available, schools with functional electricity and drinking water, people-teacher ratio and percentage of trained teachers at secondary levels in schools in 56 cities. The survey revealed only 25.1% schools, 10% schools in the state capital have internet facilities, where 57% have computers. So this tells about how the digitalization, although is adopted, but the infrastructure issues are so important concern, the real digitalization is not taken place. Next, another news is a very important news. September 11, 2021, again Times of India, Utkal University is in a spot of other since the NRF ranking was released and CAG report was tabled. Odisha's premier university got only 13.78 marks out of 100 in research and professional practice. The reason the university has been ranked 87th overall, only Utkal University has managed to get 96th ranks. Other Sambalpur and other universities are not also figuring in 200. This is a matter of concern. At the same time,
There are 4 other institutes, including 2 private universities, where one university, Professor Acharya is chairman of the advisory board, SWA University, and yeah. So I just, I'll shut down. I'll shut down. Is doing good in research. So these are some background I'm just giving. So for discussion, and at the end of the day, once our speakers will speak, I will discuss more about a multi-purpose, multidisciplinary research university. We are from the PO base. Actually, this was initiated by Professor Chitta Boral, Arizona State University. That should be a multidisciplinary research university like BHU in Puri. There is a lot of logical background. If time is available, I will speak why that should be a multidisciplinary research university. Because in India, there are 4 ancient centers, these pithas, like Puri is one of the important identified place where our knowledge center was there. There is a case to revive now. So we'll be discussing that thing. But because time is short, I now want to request all our speakers to speak on important areas where they have vast experience. I am now asking each speakers to speak on important topic where they have vast experience, like Professor Damodara Acharya, technical education, Professor Pranati Panda on teacher education, and Professor Amarendra Behera, use and integration of ICTs in education, and Professor N.K. Das, school education. So each speaker requested to speak within 10 minutes. After that, there should be some question and answer. Thank you. So now over to Professor Damodara Acharya. So to start. Hello, am I audible? Okay, thank you. So, my co-panelist here, distinguished audience, there are academicians, there are industry people, policymakers in this Vision Odisha 2036-2086. I must first thank Satya. I am saying Satya because he has been a student of our department. And our Surya Babu for actually inviting me to be here. I do not know what is the role that I will have. I am not a existing person. I am a past person. 10 years back actually I have retired. Anyway, it doesn't matter. That is a different story. But here, I believe the focus was actually, so far as education is concerned, what is actually the education vision for 2036 and beyond 86. And I have been asked actually to say something about technical education. Now, to put actually the context in right place, I would like to first say that education is only the driver of development. And unless actually we are educated, we cannot develop. This is first thing we must do it. And that too, technical education really drives the development and the growth and the so-called employability and many other things. Many times, I don't demean by that thing the role of liberal education, arts, etc., but they don't really give that type of dividend. Now, to understand this, particularly when we are talking of futuristic thing, please actually take this thing into consideration that by 2036, only the other day we know our population has surpassed China. And by
2036, China will have an economy of $55 trillion. USA will be 44, and we are only talking of 5 today. By 2025, hopefully will be something like 11 trillion by 2036. And of course, one more thing what will happen is that our population will keep on rising and China's population will keep on decreasing. By the end of the century, our population will be at least, it will be more than, say, what I should say, 200 crore, but China population will come down to maybe below 150 crore, which means their actually capability to work will reduce. The age is also not in their favor. And whatever the dividend actually, that demographic dividend that we are talking of, young population and all these things, this will not really help us much unless we really revamp our total education and particularly technical education side. What actually, one more thing which is very relevant for Odisha is, of this total population, nearly 50% actually are ladies, and they belong to, many of them belong to SC and ST. They are not really contributing much to the product, to our output. Of course, through self-help group, etc., is a very good thing. Some 70 lakhs people are doing that, but their output also has to be increased. Their productivity has to increase. If their productivity has to be increased, I am not talking of any formal degree or anything, but as a part of technological education, their capabilities and knowledge and skill has to improve. Even if they are making simple things like body and papad, how to get more out of it, how to increase this actually productivity, that technology actually has to pass on. Lot of things have to be done at that level. Second thing, actually, I will straight come to the other important issues. We are saying that actually we have got lot of resources and everything that we have, but do you know that our rivers in Odisha, they are the most polluted? Do you know actually we are generating power, we are contributing so much to the, say, carbon load, and ultimately our land is getting degraded. One more thing, we are saying a lot of steel plants are coming, very, very happy about it, but we are getting actually ore through slurry pipeline, where we are converting the fresh water to polluted water, dumping the fresh water. Okay, I'll stop here. No, nothing big. I have respect for time, maybe if you do not, if I do not, no, please, I will come to the question side. There is enough time. But you have said the time. Anyway, friends, actually I will be cutting short. What actually I would like to say, the technology which we are using in exploiting our ores, etc., our resources, natural resources, and these resources actually will not vanish, will vanish, but will be left over with a state which is very, very poor in every other respect. Let us not forget what has happened to a small island called Nairu, for which actually Paradeep Phosphate, as you know, it was actually their partner. They had ore, but everything is consumed. That is one of the poorest state.
And in this situation, what is important from the technical education point of view, that we have to have the education which can really ensure, at least provide the knowledge of how future things will come up. So for example, we ought to have the carbon neutrality by 2070. That is our commitment. Now, to have this carbon neutrality, can you really afford to use the existing technology? No. So we have to really revamp or to think about it, how to develop new technology. Our education focus actually will be towards that, and also that it will prepare our students who can really be prepared for this type of thing. Many new industries are coming, but we are not capable of. We are producing, everybody will say that our Odisha is becoming an education hub, or Bhubaneswar is becoming an education hub. Large number of graduates we are producing, engineers we are producing, so many graduates we are producing, but what is their capability? They are not getting job. And industry actually do not want to take them. But for instance, there is so much of demand for good technical manpower, they are not available. To give you actually one example, very recently, Nippon Steel actually they are going to have a 30 million ton steel plant in Paradeep. They were looking for 200 to 300 engineers who have got knowledge on specific areas, skill in that area, and they found we do not have anybody. We are talking of actually pharmaceutical industries to come up. We do not have actually competent people who are suited for pharmaceutical industry. Whatever emphasis that actually they are doing, all traditional, but to modern technologies, we are not there. Now, can we really think, another thing actually which you have to think of is the sustainability part and carbon neutrality part. For this type of thing, new technologies have to be really developed. For example, can we really go for green hydrogen technology? Can we really utilize hydrogen to reduce our iron ore from that thing to produce iron and steel? So therefore this type of thing, if we are talking of, if we want to make our Odisha progressive and we can really do better, then our total education focus, particularly in the technical education focus, has to change. Our ITI level education, that is totally outdated. With that type of skill, they will not get job anywhere. So similar is the things with the diploma. Engineering, less we say it is better. So we are not really changing that. It is very, very essential that we must change our focus on education. Content must change, and the special skill and competencies actually has to be developed, and those skill and competencies must actually match with what the industry needs. And that will come only at a different level, and what is most important is the so-called degree level education is totally irrelevant today. To make them productive and do this type of thing, you do require people with much higher skill, much knowledge. Maybe, as you know, in developed countries, let us say in USA if you take, the demand for actually graduates are not much. They don't go very high. But whereas the demand for postgraduates and PhD is very high. So we must go for that type of thing if at all actually we would do well. But that is actually one thing which I would like to say. Similarly, on
people all say that, okay, AI, IoT, blockchain, this type of thing actually you can use and will go up. See, these are the tools. They do not actually give you the technology, or they don't give you the skill and competence of doing the things. So this actually will not happen. But what is important is how do I use these technologies in the actual industrial situation, actual scenario. That requires a different level of knowledge and different level of skill. You must have the foundation very strong in the basic, and after that actually on these things you can do it. Don't think that actually somebody just knows actually some deep learning tool or other type of data science tools, etc. With these tools, nothing you can do. You can actually move with the key and look for the lock, but that is not the solution. You should have key fitting to the lock. So that should become the mantra of actually our education things. Otherwise, we will have no future at all. In 36, you will find the very things that we are focusing is that build the infrastructure, spend a lot of money, and have actually nice building, this, that, etc. But ultimately, what do you produce out of it? Nothing. So what is required is that you should have that vision, and also it is necessary that we should have the teacher. But that is one thing which is given the last priority in our thinking. Many things do we say, but the person actually who will make man, he is absent, and his quality is the worst. If I think actually some of these steps actually if we can take, given all these resources, we should be really on the top. There is no reason that why you should not be on the top. And we have to think afresh, think of some new areas where actually will develop. So, and think of focusing more and more on higher education and the specific knowledge building in the key areas, and that too only at the master's and PhD level, not at the another level. Thank you very much. Thank you, sir. Always all the advice, we are recording this thing most interestingly, and we'll put this in the proceedings also. So most important input what Professor Acharya has given, the demand supply gap. So what is the contemporary and relevant requirement in the industry, and what is available in the, so many colleges are there, most of the technical colleges, but competency they are not building. Also contemporary issues on sustainability, and also those who are backward in the society, how they can use technological knowledge. So these are very important and valid points when we are making the vision for the, we are thinking about the future vision. Thank you, sir. Now I am requesting Professor Amarendra Behera. So use of ICT in education, how that can be harnessed. Yeah. Namaskar. Very good afternoon to all of you. Thank you, Professor Das, esteemed Professor Acharya, former Director IIT Kharagpur and Chairperson AICT, esteemed Professor Pranati Pandaji from NIPA, and also respected Professor N.K. Das from IGNO, distinguished gathering, academia, and this ठीक है।
थैंक यू नहीं ठीक है माय पॉइंट ऑफ व्यू कि प्लीज डोंट माइंड आम ये समस्ते ओडिया जेहेतु आसीचे आम गोटे विजन रखीचे 2036 तो आम यदि ओडिया रे डिस्कस करवा हमको इमोशनली अटैचमेंट सहित हमको प्रश्न सो व्हाटएवर यू आर टेलिंग अपन जहाँ कहउछन ठीक कथा बर्तमान लेट स्पीकर स्पीक्स व्हाटएवर द लैंग्वेज व्हेन आम जो डिस्कशन करवा वी कैन डिस्कस इन ओडिया व्हाट इज द प्रॉब्लम ओके सो दैट इंडिपेंडेंस वी शुड गिव द स्पीकर व्हाटएवर द लैंग्वेज दे कैन टेल चेष्टा करूँ आम मैंने ओडिया रे कहया बहुत बहुत धन्यवाद एक्चुअली मते जो विषय उपरे कहवा कह जाइए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी द्वारा विद्यालय शिक्षा हो कि हायर एजुकेशन हो तार क्वालिटी केमती अणा जाई पारिबो ता विषय रे कहवा पाई आम समस्ते अंततः जानीचे जे इंडिया विविधतार देश एते डाइवर्स जे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो कल्चरल डाइवर्सिटी हो कि डाइवर्सिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो बेसिक एमिनिटीज हो बहुत कम भी अच्छी आउ केतरा जगह रे ठीक ठाक भी अच्छी आउ जदि मु शिक्षा व्यवस्था उपरे आरंभ करे डाटा विषय रे लगभग 15 लाख स्कूल पूरा देश रे ओडिशा रे 62,000 रु अधिका स्कूल आउ जदि स्कूल आउ टीचर रेशियो भी देखा जाए जदि गोटे स्कूल ले आज एन एवरेज 4 जन टीचर अच्छा 2,40,000 कि 2.5 लाख टीचर भी ओडिशा रे अच्छा आउ शिक्षा व्यवस्थार फलाफल कौन डॉक्टर दास सर्वे अचीवमेंट सर्वे डाटा भी कहते आउ ओडिशार रैंक जो पीजीआई रैंकिंग रे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग रैंकिंग रे देश रे से विषय भी कहते आउ जदि 2036 2086 कथा आमे ओडिशा विषय रे पर्टिकुलरली कहवाई चाहिए जे ओडिशा कोठी पहुँचबो कोठी पहुँचबा दरकार आउ सूचना संचार प्रौद्योगिकी को केमिति व्यवहार करा जिबा दरकार मु निश्चय यह कहवाई चाहिए जे आजिका डेट रे जदि आम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जातीय शिक्षा नीति 2020 कथा कहती ताहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति रा जो मेन उद्देश्य होची जे इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन आउ लाइफ लॉन्ग लर्निंग पाई आउ सेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रा भी उद्देश्य तेणु से उद्देश्य पूर्ति पाई आमे मल्टीप्रोंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करिवार अच्छी जदि ओडिशा केस रे आमे एग्जांपल लिए इवन टोटल भारतवर्ष को देखा जाए से 1700 रु अधिक भाषाभाषी लोक इंडिया रे अछंती आ ओडिशा रे भी 2 डजन रु अधिका भाषा लोक अछंती आ स्कूल रे भी केते भाषा रे पहुँची पारिनी एपर्यंत इवन गत काली एनसीईआरटी गोटे कमिटी बनैछि जे कुई आ देशिया भाषा उपरे केमती से पिला मानकु शिक्षा दिया जेबा दरकार प्रोफेसर बीके पंडा जे एजुकेशनिस्ट जड़े तेणु तांको अध्यक्षतार बना जाइए तेणु सेमती जब टेक्नोलोजी नहीं आम कथा कहवा ताहले एजुकेशनल कंटेंट भी बनवा दरकार जोटा कि क्वालिटी आउ ओडिशार भाषाभाषी लोक पिला माने जो स्कूल रे भाषा रे पढ़िबा दरकार से भाषा रे भी हवा दरकार आ गुणवत्तापूर्ण हवा दरकार माने क्वालिटी कंटेंट हवा दरकार आ खाली क्वालिटी कंटेंट हेले भी हबनी आमको एआई मशीन लर्निंग रिलेटेड प्लेटफॉर्म भी दरकार आमको पोर्टल भी दरकार ऐप भी दरकार आ जोटी कि आमे प्रति पिलाकर परफॉर्मेंस ट्रैक करि परिबा 2036 सहित सुधा ये हवा अनिवार्य आ गोटे 2 वर्ष भितर भी ये हो जाई पारे आ ओडिशा रे आ गोटे कथा मु कहबा पई चाहूची जे आम देश रे पर्टिकुलरली नंबर माइंड बॉगलिंग इवन प्रोफेसर दास आ प्रोफेसर आचार्य भी कहते चाइना सहित कंपेयर करते आउ नेक्स्ट 15 20 30 50 इयर्स रे इंडियन यूथ ही पूरा वर्ल्ड को रूल करेंगे तेणु तांको स्किल ट्रेनिंग भी दरकार तेणु इवन डिजिटल इंडिया कैंपेन रो मिशन को जदि आमे देखिबा बेसिक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से चाहे स्कूल रे हो पोस्ट ऑफिस रे हो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर गाँव रे हो
हवा बेसिक एम्यूनिटी हवा बहुत दरकार आउ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी दरकार जहाँफल कि डिजिटल कंटेंट जहाँ भी बना जाऊँगी ता पिला मानक पर्यंत पहुँचवा भी दरकार आउ से क्वालिटी कंटेंट से माने देखी भी पारंती आउ ताकू देखी परीक्षा रे भल रिजल्ट भी करि पारंती आउ जदि आमे कोचिंग इंडस्ट्री कथा कहवा चाहे से दिन मजुरिया हो कि माने हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हो जे कि लाक्स रे तांकर रोजगार हो समस्ते चाहिए जे निज पिला भल करू एग्जामिनेशन रे भल रिजल्ट कलु भल कैरियर बाछु आउ भल स्किल एरिया रे जाऊ तेणु तापाई स्कूल छाड़िकी भी पेरेंट्स कोचिंग रे पठाउछंती कोटा भी पठाउछंती ओडिसा रु भी पेरेंट्स पठाउछंती बाकी पूरा देश रु भी पठाउछंती तेणु सेथिपाई जदि ऑनलाइन कोचिंग जोटा कि टेलीविजन रेडियो मोबाइल ऐप आ पोर्टल आ द्वारा 2036 सहित सुधा आमे इनेबल करि परिबा ताहले ओडिसा पिला माने पूरा विश्व रे राजनीति करिवे ये नुह कि केवल ओडिसा रे कि ओडिसा बाहर ही से माने काम करि परिबे तेणु सेटा गोटे जोटा दरकार पूरा देश रे कि हवा दरकार आ गोटे कथा मु कहबा पई चाहूची जे आजिका डेट रे चैट जीपीटी भी आपन को मोबाइल रे भी आपन देखुथिबे कि आरंभ करथिबे एआई सपोर्टेड सॉफ्टवेयर सेटा ताकू ध्यान रे रखी इवन गत 2 दिन धरी नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेशन होची आउ जो पूरा देश रे विद्या समीक्षा केंद्र कंट्रोल कमांड सेंटर बनिबा पाई जे प्रचेष्टा चली विद्या समीक्षा केंद्र बनिबार माने जो भूमि का या जे विद्या समीक्षा केंद्र बनिबा द्वारा कलाहांडी रे जदि गोटे पिला गोटे स्कूल रे भवानीपाटना रे पढ़ुची आउ से प्रथम क्लास रे पढ़ुची आ प्रथम रे क्लास रे जो लर्निंग आउटकम डिफाइन होती चाहे 80टा लर्निंग आउटकम गोटे पिला गोटे वर्ष भितर अचीव करिवो से लर्निंग आउटकम को ये विद्या समीक्षा केंद्र द्वारा ट्रैक करा जाई परिवो आ सेटा से जिला कलेक्टर ट्रैक करि परिवे जिला एजुकेशन जो अधिकारी डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सी ट्रैक करि परिवे आ नेशनल लेवल पर्यंत भी ट्रैकिंग हेई परिवो किंतु एई ट्रैकिंग जो करा जीवो से ट्रैकिंग एथि पई जे एथिकल ट्रैकिंग हबो आ क्वालिटी मेंटेन करिया पई हबो आ एनसीईआरटी लेवल रे जे भवानीपाटना रे से पिला ना कोन से पिलांकर पेरेंट्स का ना कोन आ से पिला केते शिखिला एनसीईआरटी रो हुए तो बहुत इंटरेस्ट से विषय रे रहिबनी किंतु भवानीपाटना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रहिबा दरकार आ ओडिशा सरकार को रहिबा दरकार किंतु देश स्तर रे से विद्या समीक्षा केंद्र कंट्रोल कमांड सेंटर द्वारा जे पूरा देशर सिचुएशन कौन आउ केमिति पढ़ा जिबा दरकार केमिति शिक्षक प्रशिक्षण करा जिबा दरकार शिक्षण प्रशिक्षण करा जिबा दरकार जा फल रे कि टीचर को ट्रेनिंग भी कंटिन्यूअसली हो आउ जातीय शिक्षा नीति 2020 रे आउ गोटे संतुष्टि करा जाइछि जा द्वारा कि प्रति वर्ष 50 घंटार मैंडेटरी ट्रेनिंग सबू टीचर को करवा दरकार आउ डिजिटल लिटरेसी गोटे बेसिक लिटरेसी जो सबू टीचर जानिबा दरकार आउ डिजिटल इंडिया कैंपेन रो भी मेन गोल होची जे इवन एवरी चाइल्ड शुड बी डिजिटली लिटरेट तेणु जाफल कि से माने गोटे विषय वस्तु जानिबा शिखिबा आउ बेसी भल भाव में करें लास्ट पॉइंट मुझे जोटा कहवाई चाहूँगी जे आजिका डेट रे पेरेंट्स भी पिला माने भी शिक्षक भी समस्ते टेक्नोलोजी यूज करछंती किंतु आमे केते सेफ टेक्नोलोजी के सुरक्षा हम पाखे केते आउ कौन कौन टूल्स अच्छी जे आमर सुरक्षा मेंटेन हवा दरकार सेटा अच्छी ना नाही आउ जदि अच्छी पर्याप्त मात्रा रे अच्छी ना नाही तेणु आमको चिंतन मंथन करवा दरकार जाफल कि चाहे से पिला स्कूल रे ऑनलाइन ऑन एयर एजुकेशन नौ कि स्कूल बाहर घरे नौ कि पेरेंट्स को मोबाइल हैंडसेट रे नौ जे पिला एटलिस्ट सेफ रहू माने सेफ्टी जो मैंडेटरी सेटा हवा दरकार आउ लास्ट पॉइंट जो मु कहिकरी समाप्त करी जे बेले बेले इवन सदा बेले पूरा सिस्टम रो या चिंताधारा जे सरकार ही सबु किछि करिवो आ सरकार सबु किछि करवा संभव भी नुह 15 लाख स्कूल कथा जदि आमे कहबे जे बेसिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मात्र लक्ष्य स्कूल रे अछि
तेणु 15 लाख स्कूल रे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग 62,000 स्कूल जो ओडिशा रे अच्छी ताधरे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आमको जदि आनिबा दरकार आमको कॉर्पोरेट सीएसआर एनजीओ सिविल सोसाइटी स्टार्टअप्स even parents, even other sectors, general public, they have to support, then only it is possible. Even national policy 2020 रो भी या गोल जे समस्ते मिलीमिशी कले ए काम सुविधारे हो पारिबो आ सबु कामर विजिबिलिटी हबो आ मते एई फोरम रे कहबा पई आ पर्टिकुलरली ओडिया रे कहबा पई जो कहले मु चेष्टा कली जे मु जाननी जे केते दूर सक्सेस की फेल्योर तेणु धन्यवाद बहुत बहुत कि यही मंच रे कहवाई मौका देवाई थैंक यू बहुत भल कहले ओडिया रे कहले बहुत भल कहले भाई आमर भल सजेशन देले आओ जो आईसीटी डिजिटल टेक्नोलॉजी यूजेस तार अमन बाबू जो कहते बर्तमान एक्सपीरियंस मोटे स्टडी करी से जिते प्राइवेट ऑनलाइन आप अच्छी ओनली 60 to 70% लोक खुशी अच्छा 40% लोक से जो ऑनलाइन आप रे जो एजुकेशन दिया होती खुशी नहांती एवं पाठशाला गोटे गवर्नमेंट आप ओनली 55% लोग खुशी अच्छा से आप यूज करके एंड मैक्सिमम लोग डिसैटिस्फाइड कारण डाउनलोड कर पार माने टेक्नोलॉजी सार भी जो कथा कहते प्रोफेसर आचार्य टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट रिगर एंड रिलेवेंस हाउ मच दैट इज रिलेवेंट सेटा हूँ बहुत इंपोर्टेंट जिनस एंड अनदर इंपोर्टेंट पॉइंट अमरेंद्र बाबू कहले डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी इज ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट थिंग व्वेन आम जो vulnerable आमर चिल्ड्रेन एजुकेशन एवं अडल्ट एजुकेशन डिजिटल करुचे सेटा को आम लक्ष्य रखा कथा बर्तमान प्रणति मैडम को रिक्वेस्ट करी टीचर एजुकेशन उपरे कहबे इट इज वेरी इंपोर्टेंट एस्पेक्ट नमस्कार समस्त को मुझे भाई को धन्यवाद देवी जे से ओडिया रे कहवा को आमको आम समस्त को इंस्पायर कले प्रोफेसर आचार्य सत्य अमरेंद्र and Dr. Das, all are my juniors, so I can take their name. We all have teachers in our life, yes or no? Yes. Vividly आमे आमर शिक्षकों को भी मन रखीचु स्कूल बेलर हायर एजुकेशन ये प्रथम क्वेश्चन हैला ये शिक्षक मान को ये टीचर्स माने केमती प्रिपेयर होचंती ताऊपरे बहुत डिबेट डिस्कोर्सेस फॉर लास्ट 75 इयर्स चलचे एंड इंडिया रो गोटे जो लॉन्ग हिस्टोरिसिटी अच्छी जोटा सत्य मेंशन करथुले एंशिएंट इंडियन एजुकेशन आमर गोटे टीचर्स को गोटे गुरु हिसाब रे देखिया को फ्रॉम गुरु टू द एम्प्लॉय ऑफ एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ता भितरे टीचर्स रा आइडेंटिटी हैज बीन चेंज्ड. When I am talking about the teacher identity, what kind of trust we have on the teaching community who are teaching across all the levels. Possibly this changing identity of teachers raising significant question to us. टीचर्स भल नुहंती भल अच्छंती टीचर्स मानक पाई कोचिंग सेंटर खोलुची पिला मानकर लर्निंग क्राइसिस चलची चिल्ड्रेन आर ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम स्कूल जेते सब लिस्ट आउट आमे करिबा चैलेंजेस पॉसिबली वी ब्लेम द एजेंसी दैट इज द टीचर्स yes or no to certain extent we accept that teachers play the very central role in the education sector. They can shape the future, and if you look at our some of the document, policy document, they say that destiny of India is being shaped in the classroom. A classroom भितरे किए autonomy सहित किए करचे teachers. So friends,
let us reflect on these Indian teachers and how we have defined the identity of the Indian teacher so as to meet the future need what Professor Acharya was mentioning. आमे ये टीचर्स को केमती तैयारी करुचु जो ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी अच्छी से माने कैपेबल अच्छंती ये सब करिया को एंड पर्टिकुलरली ओडिशा कॉन्टेक्स्ट रे फ्रेंड्स मु जॉइंट रिव्यू मिशन ऑन टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ रु लीड करथिली तापरे बहुत रिफॉर्म हेला ओडिशा स्टेट रे इन द टीचर एजुकेशन सेक्टर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स comparatively ebe odisha re mostly 80% of the teachers are regular teacher teaching across all levels primary elementary secondary but still we have contractual teacher guest teacher and all of you need to understand friends teacher kara salary hella 90% of the budget. If school education is sector is spending 90%, आउ सब quality intervention दबा को possibly state पाखरे बहुत fund रखेबा. So friends, the way we discuss about the national narratives of identity and professionalism of Indian teachers and search for quality teacher education, it is changing with the political will, globalization, marketization, social and labor market demand friends. And possibly this sector is considered as the cheapest in the investment and also using teacher as the cheapest labor force in the education sector. After 75 years of India's independence, we are exactly where are we now? And how did we reach here? Because last 75 narratives, including Odisha, आमे समस्ते चाहूँ क्वालिटी टीचर्स किंतु क्वालिटी टीचर्स जो इंस्टीट्यूशन जो कॉन्टेक्स्ट रे तैयारी होचंती लोकंकर तापरे विश्वास नहीं काहे कि particularly teacher education sector रे 90% of the teacher education institution are in the hand of private sector. If there are 19,000 teacher education institutions, 10% teacher education institutions को खाली government manage करची. So being a welfare state and taking the responsibility to prepare good quality teacher, the state agency need to invest on that. That is my argument. And particularly Odisha re 88, 89 रे जेतबले प्राइवेटाइजेशन पूरा स्प्रेड होथुला सारिठी बसचंती इंजीनियरिंग कॉलेज मशरूमिंग होथुला सेतबेले टीचर एजुकेशन रे जो लीडर थिले से माने गोटे लेजिस्लेशन आनी की टीचर एजुकेशन को प्राइवेटाइज करिया को देले नाही. So one hand government took the responsibility to ensure the quality of teacher education. Other hand, the state legislation did not permit any private agency to operate and offer teacher education. ये गोटे ओडिशा रा unique context as compared to all other state and UTs of the India. जदि प्राइवेट बंद हैला कौन स्टेट एजेंसी इफेक्टिवली काम कले टू क्रिएट एक्सेस टीचर एजुकेशन रा एक्सेस क्रिएट करिया को गवर्नमेंट कौन काम कले. Because our state is very diversified friends. There are many tribal districts, many aspirational districts जोठी teacher deficit is directly impacting the quality of school education. बहुत स्कूल अच्छी जो थे टीचर डेफिसिट एबे भी अच्छी किंतु there are many district जो डिस्ट्रिक्ट रे टीचर एजुकेशन नहीं. तो गवर्नमेंट बहुत टाइम आपको एक्सपांशन और एक्सेस करिया को कले नहीं. इन स्पाइट ऑफ आवर रिकमेंडेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया semane teacher education particularly for tribal they opened in one district but it could not spread in other district as well.
So if you look at, there are nearly 11-12 universities in Odisha, joti teacher education department achi. Odisha ebe another model it has evolved to provide self-financing teacher education. Paisa kiye daba? Household expenditure, right? तेणु गोटे टीचर बनवा को हेले एबे ओडिशार पिला माने तांका निजर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को इन्वेस्ट करचंती. सो we are possibly we are killing the aspiration of thousand individuals to become teachers from remote tribal areas, friend. This point we need to ensure and acknowledge significantly. How do we encourage the students from very remote areas to take up the teaching profession, to build the future, what Professor Acharya was mentioning, to develop the right kind of skill set to meet the future demand. There are certain transformative agenda proposed under NEP 2020. एथरे से टीचर एजुकेशन ऑलरेडी ओडिशा रे गोटे डेफिसिट स्ट्रक्चर रे चलीची सेथिरे दीटा पॉइंट एम्फसाइज होइची. गोटे हला टीचर एजुकेशन हैज टू एम्पावर इटसेल्फ टू प्रिपेयर गुड क्वालिटी टीचर्स. एबे टीचर एजुकेशन को कहा जाउची जे हायर एजुकेशन टीचर को भी professional development kariba. So the dual responsibility requires huge empowerment of the teacher education institution operating within the university or outside university. I'll just take few minutes. I have been working on a model which I have been pushing at the national level, that is life cycle approach to teaching profession. ये जो life cycle approach अच्छी, जो entry point to exit point, teacher nurturance is very significant, and they need to enter with a good content knowledge. तापर initial teacher education एबे जो promote होची जे longer duration हबा, multidisciplinary institute रे हबा, multidisciplinary university context रे हबा. तापरे to invest continuously in a spiraling way on teacher professional development. टीचर गोटे लाइफ लॉन्ग लर्नर बनवा को हेले ताको कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करिया को पड़िबा until they retire from the teaching profession. So this life cycle approach we are institutionalizing at the national level, so with a defined professional standard, say professional standard को meet करिया को पड़िबा. Thank you everybody, and very succinctly I shared my ideas. Thank you so much. Sorry for the session interruption. आज आम समस्त सांगे श्री श्री स्वामी नीलाचलानंद सरस्वती शंकराचार्य महाराज जी के कुछ शिष्य यहाँ पे बैठे हैं. एंड हमारा गुरु शंकराचार्य जी के एक महोत्सव हो रहा है 25 अप्रैल 5 बजे तालकोटरा स्टेडियम में. तो सबको उनके तरफ से निमंत्रण है. हम सब एज ए उड़िया वी आर प्राउड सो फॉर शंकराचार्य. तो हम सब उनके वहाँ पे जाके तालकोटरा स्टेडियम में कुछ सुनने को तो मिलेगा शंकराचार्य जी से. तो मुझे लगता है कि वी आर वेरी प्राउड यू ऑल हियर टुडे विथ अस. एंड सो दिस इज द अनाउंसमेंट. 25 तारीख 5टा बेले तालकोटरा स्टेडियम. समस्त को रिक्वेस्ट हो सब ओडिया भाई भौणी मैंने निज गर्वटा को सेठी हमें फील करवा. तो आम समस्त सेठी जीवा किसी समय एटलिस्ट. थैंक यू. ओवर टू द सेशन. थैंक यू विजय एंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. धन्यवाद धन्यवाद. सो कमिंग बैक प्रणति मैडम बहुत इम्पोर्टेंट रिलेवेंट टॉपिक ऊपर डिस्कशन कले जो कि सबुठ बड़ जिनस हूँ 90% टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स डोमिनेटेड बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, ओनली 10% गवर्नमेंट. एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी
teacher education, we cannot ensure that strictness or quality unless until there is fully governed by government institutes. And life cycle approach of teachers, that how multidisciplinary knowledge, that content, all these things. Quality teacher is a very important thing. Unless until there is a quality teacher, the teaching cannot be really delivered the intended way. Now I am with this. Now I am requesting Professor N.K. Das to discuss about school education, reform on school education. Professor Das. धन्यवाद Professor Das. I am really grateful to the organizer, Surya Narayan Mishra, and this organization which has done a very commendable job. मते स्कूल एजुकेशन उपर कहवा को दिया जाइए जेहेतु एठी कहगला जे ओडिया रे कथार्ता करने मु प्रचेष्टा करी ओडिया रे कथार्ता करने को किंतु जते कहवा समय केतक टेक्निकल वर्ड आसो तार प्रथा बोध हुए तार ओडिया एक्जाक्टली ओडिया मु कहि परिबिनी एनी हाउ देखंतु जते आम एक विजन विषय चिंता करुचे हाँ 2036 2086 तो बहुत बियॉन्ड 50 साल पर किंतु इमिडिएट 2036 जदि आम चिंता करवा एंड पर्टिकुलरली विद्यालय शिक्षा जोटा बहुत इंपोर्टेंट जिनस मो मतरे जो समस्त शिक्षा व्यवस्था विद्यालय शिक्षाटा ही इंपोर्टेंट ये विद्यालय शिक्षा रू आगे आम बढ़ुचे उच्च शिक्षा तकनीक शिक्षा कृषि शिक्षा सब बहुत चर्चा हो गलानी किंतु विद्यालय शिक्षा बहुत इंपोर्टेंट आजिर दिन कि आजिर वर्षटा बहुत महत्वपूर्ण आपण माने जदि खबर कागज पढ़ुवे प्रतिदिन शिक्षा नीति उपर चर्चा चली राष्ट्रीय शिक्षा नीति अमरेंद्र बाबू आउ प्रोफेसर आचार्य सार प्रणति मैडम ऑलरेडी उल्लेख करचंती आपण मान जानचंती एबे विगत कुछ सप्ताह तले केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति आधार 2020 शिक्षा नीति आधार रे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम दैट फ्रेमवर्क नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन विद्यालय शिक्षा ऊपर एनसीईआरटी जो कि महत्वपूर्ण संस्था है केंद्र सरकार वर्तमान सेटा सबू भारतीयों पाखरे पहुँचाई मतामत जानापी मोर आज यही सभागार रे निवेदन जदि आपण माने निश्चित ओडिशा प्रदेश पर किसी करने को चाहूँगी निजर नेट खोलंतु एनसीईआरटी किंबा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइट रे ए विस्तार डॉक्यूमेंट अवेलेबल अच्छी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम विद्यालय शिक्षा संबंध रे आउ कंप्लीटली सेटा पढ़ंतु से कौन लिखा जाइछि आ किपरि से 2036 रे आपण जो चिंता करचंती समग्र ओडिशा प्रदेश पई विकास पई आनिबो से जो सेतर जतेक जिनस लिखा है से केपरि आपन को सहयोग करियो कि आम मान को सहयोग करियो जाके आमे प्रदेश सरकार को कहि परिबा यही सब जिनस करा जा जमती कहा जाए जे लुहाटा कमार शाला रे जते ताती थाए से समय कमार ताकू स्ट्राइक करे टू गिव ए सेफ नाउ the national curriculum framework is out and this is the hot time that we have to shape our education system whether it is in the state or in that national level
जब जेतले आमे कहबा विद्यालय शिक्षार एक नया रूप देबा से तीनटा जिनस को मु प्राधान्य दिए। प्रथम जिनसटा हला करिकुलम एंड पेडागोजी। करिकुलम जो कि पाठ्यक्रम हम कहूचे हमर एठी कहउचंती पाठचर्या। पाठचर्या और करिकुलम ताहार जो संस्कार आनिबा सेटा होची मुख्य बिंदु। तापर पेडागोजी एक करिकुलर रिफॉर्म, सेकंड इज पेडागोजिक रिफॉर्म। आमे चिंता करिबा आज जो प्रणति मैडम कहले कि सार कहले आज जो विद्यालय रे जो प्रकार रे पठन और शिक्षण विधि प्रचलन अच्छी कौन से पर्याप्त जो कि 2036 रे जो प्रकार शिक्षण व्यवस्था उभर की आसीबो सेति लगी ये पर्याप्त जदि पर्याप्त नहीं आमे आज चिंता करिबा जो प्रकार की प्रकार संस्कार आसीबो पेडागोजी रे जा फल रे कि आमे 2036 रे ताको सम्मुखीन हो पारिबा। जैसे प्रोफेसर अमरेंद्र टेक्नोलॉजी प्रोफेसर अच्छी आप देखो जे टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस एजुकेशन शिक्षा रे एते व्यापक रूप से आसूची 2036 समय एंटायर एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग टू चेंज। दिस क्लासरूम पेडागोजी जो क्लास रे आज टीचर जाऊँच पढ़ाऊँच व्याख्यान विधि की लेक्चर मेथड रे पढ़ाऊँ प्राय ये खूब शीघ्र डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड मेथड जोटा कि क्लासरूम रे आसीबो। तेणु सेकेंड चीज जोटा पेडागोजिक रिफॉर्म हमको इमिडिएटली आनिया पड़िबो। आ तृतीय रिफॉर्म है असेसमेंट रिफॉर्म, मूल्यांकन और आकलन संस्कार। आज जो कहले सार इंजीनियरिंग पढ़ुचंती एते इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छी, टेक्निकल कॉलेज अच्छी, ग्रेजुएशन कॉलेज अच्छी, बहुत पिला माने पाठ पढ़ुचंती किंतु यार अनएम्प्लॉयड काहे के होची केबे हम चिंता करछो काहे के ओटा इंजीनियरिंग मु एमएचआरडी रो मिशन कहूଥିଲି सार को जते उत्तर प्रदेश गली बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट डीआईटी रे गली देखला को डिप्लोमा इन एजुकेशन करवा लगी बीटेक स्टूडेंट रे सब एडमिशन लेछंती। प्राइमरी टीचर हबा पई इंजीनियरिंग स्टूडेंट बीटेक स्टूडेंट एडमिशन लेछंती हमर जो सिटी करवा लगी जोटा हम ओडिसा रे सिटी उत्तर प्रदेश रे ताकू कहंती डीएड और डीएड कहंती। हेडू पचारली कौन बीटेक कला परे आपण प्राइमरी शिक्षक हवा पई आछंती। दिस इज द सिनारियो, दिस इज द रियलिटी। Perhaps not only UP, in almost all parts of country, including our state perhaps, we have to think of the reform at every phase, right from curriculum to pedagogy to assessment. Now, this curriculum, if this NEP, if you see the NEP vision, perhaps we have to think in terms of that. NEP says an education system rooted in Indian ethos that contributes directly to transforming India, that is Bharat, sustainably to an equitable and vibrant knowledge society. The future will be knowledge society. Who is knowledgeable, he will govern the society. If you are not knowledgeable, you are just lagging behind. आप पीछे पछे पड़ी जिवे। तेणु ये सब इम्पोर्टेंट प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल देयर बाय मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। ये होची हमर राष्ट्रीय नीतिर विजन। ये गोटे पैराग्राफ राष्ट्रीय नीतिर विजन दिया जाउची। यही परिप्रेक्षी क्या कौन आम कर 2036 सुधा ओडिशार कौन विजन हम एजुकेशन में, एजुकेशन शिक्षा क्षेत्र में ओडिशार विजन कौन सेटा प्राय आम चिंता करी ओडिशार प्रदेश सरकार को कहले से प्रताप 2036 कि 2050 कि 2086 पर्यंत कौन विजन हम कौन आम दूरदृष्टि रहा आम चिंता कर। देखु नुआ शिक्षा नीति रे रूटेड इन इंडियननेस, रूटेड इन इंडियन कल्चर की कथा करा जाउची कि से विषय उल्लेख करा जाउची। तार अर्थ कौन आमर उपनिषद रे जितने जिनस अच्छी
ये पॉलिसी मु काली परदिन देखला बेले सर्ट प्रमाण कथबार्ता भी करा जाइछि उल्लेख करा जाइछि जे विद्यालय शिक्षा रे सर्ट प्रमाण द्वारा किपरि ज्ञान आहरण करा जाए ताहा पढ़ा जिवो उपनिषद रे अछि सर्ट प्रमाण कर कथा वर्तमान हूँ चैलेंज कौन हो सर्ट प्रमाण को विद्यालय शिक्षा रे किमिति आपण पढ़ेबे किमिति एक विद्यालय शिक्षा सर्ट प्रमाण डिफरेंट प्रमाण को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे उपयोग करिवो ये सब चैलेंज जो कि वर्तमान आसीबो जोटा कि हमर करिकुलम रिफॉर्म और पाठ्यक्रम संस्कार पठन विधि पठन शिक्षण विधि से संस्कार और आकलन मूल्यांकन संस्कार ये सबुथे ये सब गुड़ा आस फिर सेकेंड चीज हूँ यही पॉलिसी कहूँ जे वी हैव टू बी फ्यूचर रेडी फॉर ए न्यू ग्लोबल सोसाइटी नॉलेज सुपर पावर इंडिया को सुपर पावर बनना है कि इंडिया को सुपर बनिया को हम से ओडिशार रोल कौन ओडिशा केमिति से योगदान करिवो कि प्रकार शिक्षा प्रणाली हम केमिति विद्यालय शिक्षार आमूलचूल परिवर्तन हम ये सब गुड़ा जिनस चिंता करवा बहुत जरूरी से मैंने चारिटा ये पॉलिसी से मैंने कहते चारि प्रकार एक नॉलेज कैपेसिटी वैल्यूज डिस्पोजिशन नॉलेज कहते नोइंग दैट जो नॉलेज डेस्क्रिप्टिव नॉलेज ताकू दिया जीवो जोड़ा आमर बहिरे आमे पढ़ुचे स्कूल रे कि कॉलेज रे आउटा होचे कि प्रोसीड्यूरल नॉलेज किमिति गोटा धर आमे पढ़ौचे न्यूटन्स थ्योरी पढ़ौचे गोटे साइंस टीचर फिजिक्स टीचर केबे न्यूटन्स थ्योरी किमि काहे कि न्यूटन्स थ्योरी कौन किमिति होचे सेटा पढ़ा जाउची कि पॉलिसी कहूची पिला को सिखाओ अगर एप्पल पढ़ुची पिला से ग्रेविटेशनल एस्पेक्ट डोंट टीच ग्रेविटेशनल एस्पेक्ट पिला खुद निजे चिंता करो काहे कि एप्पल पढ़ुची वर्तमान एंटायर टीचिंग मेथोडोलॉजी हैज टू बी डिफरेंट तो मोर जो सबमिशन अच्छी why a thing happens why a particular content is there एक कंटेंट काहे कि स्कूल रे अच्छी सेटा बहुत इंपोर्टेंट जिनस काहे कि धर आमर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम रे आमे एक अच्छी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी संरचना सिद्धांत मु एक गोटे इंटरव्यू रे गोटे कैंडिडेट को पचारली संरचना सिद्धांत आमर जो गाँ गली रे गोड़गला साइकिल शिखती से क्षेत्र में संरचना कंस्ट्रक्टिव थ्योरी किपरि काम करे एक सिलेक्शन कमिटी में पचारे ए गाँ गहली आपन जो आमर साइकेल गोड़गला शिखाती से कंस्ट्रक्टिव थ्योरी किमिति काम करे कंस्ट्रक्टिव थ्योरी पढ़ा जाउची बीएड क्लास रे ग्रेजुएशन में पढ़ा जाउची एमएड में पढ़ा जाउची समस्त पढ़ुचंती अगर माने तांको जदि पचरा जीव कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऊपर से भाषण दे माने समस्त कहि दउचंती ए तार एट्रिब्यूट्स ये थ्योरिटिशियन ये किंतु एक एग्जांपल गाँ गरे जो साइकिल शिखुची पिलाटी सेठी एटा किमिति अप्लाई होची नाउ द क्वेश्चन इज इन दिस पॉलिसी और व्हेन वी आर visioning for 2036 perhaps we have to go into the deep both in terms of curriculum both in terms of discourse in classroom and assessment आकलन एबे से कहते आउटकम बेस्ड असेसमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इग्नू को देले जे एंटायर नुआ शिक्षा नीति ऊपर जो 2020 शिक्षा नीति ऊपर हायर एजुकेशन का टोटल नॉलेज इग्नू 15 लाख हायर एजुकेशन टीचर्स को पढ़ाइब से रेस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इग्नू दे इग्नू बढ़िया मटेरियल बन जोटा कि ऑनलाइन बहुत जल्दी इट विल बी ओपन फॉर पब्लिक कैन रीड एंड एडमिट तेणु बर्तमान से कथा होची जे आमर जो विद्यालय शिक्षा रे किपर भाव में एक पिला विल बी एन इंडिपेंडेंट लर्नर दैट इज देयर इज ए पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम डिपेंडेंसी टू इंडिपेंडेंस
आमर जो विद्यालय शिक्षा गोटे डिपेंडेंसी मॉडल चलती वी हैव टू मेक इट इंडिपेंडेंट व्हाट इज दिस इंडिपेंडेंस मॉडल खुद स्कूल समय रू विद्या गोटे छात्र सी निजे शिखा चाहिए से टीचर कि मास्टर कौन कह से इम्पोर्टाट नुहे से खुद चल शिख खुद पढ़ खुद इंटरनेट देख इंटरनेट रू प्रोजेक्ट बनब सबू से खुद बिकॉज द फ्यूचर इज गोइंग टू बी हाइब्रिड मॉडल ये सब जोड़ा कि चिंता करुँची से क्षेत्र में 2036 रे आमर जो ओडिशा रे जो पाठ्यक्रम सुधार आसीबो कि पठन विधि रे सुधार आसीबो कि आकलन विधि रे सुधार आसीबो सेति लागि पर्याप्त प्रयास करिया पड़िबो जहाँ फल कि आमर जो शिक्षा व्यवस्था समस्त देश रे एक उच्च शिक्षा व्यवस्था एक अग्रिम शिक्षा व्यवस्था हिसाब रे परिगणित हो with this I end my brief presentation and my perception of what could be the this vision of education for the state of Odisha. With this, namaskar. धन्यवाद प्रोफेसर दास वर्तमान आम क्वेश्चन गोटे जोड़े नहीं पारे टू क्वेश्चंस करिकुलम पेडालॉजी उपरे बहुत डिस्कशन कले प्रोफेसर दास इंडियन कल्चर हाउ दैट कैन बी इंटीग्रेटेड इन करिकुलम प्रोसीड्यूरल नॉलेज and teaching methodology is very important, more depth in understanding why certain things happens. So वर्तमान आमे गोटे जोड़े क्वेश्चन नहीं परिवार संभव होगा. Okay. So I was just listening to the extreme panel. गोटे कथा मो मन रे आछि जेतले आमे छोटो पिला हितलु 40 वर्ष पूर्वरु स्कूल जाउथलु सेतले टीचर हमको पचारथला व्हाट इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ आपनक मनुष्यर मौलिक आवश्यकता कोन टीचर टॉट अस रुटी कपड़ा मकान माने खाद्य वस्त्र आ बासगृह यहाँ आमको पढ़ा जाइथिला किंतु आज 40 वर्ष पर जदि आमको सेम क्वेश्चन रो आंसरटा जोटा आमे शिखितलु दिया जाए ताले दैट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग. वर्तमान मौलिक आवश्यकता मनुष्यर कौन हेल्थ आउ एजुकेशन शिक्षा आउ स्वास्थ्य यहाँ है बेसिक नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग तापाई as a part of government we have found that it is the most critical and difficult challenge to provide health and education to the people rather than providing roti kapda and makan. Government is providing to house through Pradhan Mantri Awas Yojana to all. Government is providing to arna rice roti through Garib Kalyan Yojana to all, but it is very difficult to provide the health and the education. Aau gote cheez mu kahiya pai chahuchi in our ancient education, if you have to go back, then we had a university like Nalanda, Taxila, Bikramshila, where most of the scholars from the world, they used to come to India. भारत को पाठ पढ़िया पाई सेतबळे विश्वर समस्ते आसुतले एंड वी हैड ए यूनिवर्सिटी लाइक नालंदा एंड तक्षशिला व्हिच वाज द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड. टुडे वी हैव मोर देन 1000 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, वी हैव मोर देन 45,000 कॉलेजेस, वी हैव मोर देन 16 lakh schools and we have more than 99 lakhs teachers and we have 25 crores of students every day going to the schools, but none of our universities occupying in the top 100 of the world. Why? This is my question to the panel. Why we are not occupying among the top 100 universities in the world? Please. I would like to answer this question in my own ways. We are really talking of top 100. Top 100 based on actually certain metric. And those metrics actually which we are using, they are not exactly applicable to us. For example, one of the metric which is being used is how many foreign faculty that you have. Whereas in our system, we do not allow actually foreign faculty to be employed here. What is your R&D experience? What is the outcome? How many patents actually you have done? In some of the ranking system, it says that how many Nobel laureates you have produced. We do not have any of these things. Neither actually we are doing it
or investing that much of things and helping the system to come up. Instead, in spite of all these limitations, some of the best graduates actually in the world we are producing. They may be doing much better outside, and some of them are doing also extremely well within the country. But this way, this question has got absolutely not much of value in our context. Now, also if you think of this way, how much actually investment actually we have done in the education. In first 5-year plan, 7% of our education budget was actually in education. And during using that one, in those days actually we have produced some of the very good institutions in the country today. Whether you are saying is IIT, IIM, IIMs and things of those type. But today, our total education budget is less than 3%. And that too, every year we get the things by December that your budget is actually cut by 10 or 15%. Actually, they are the first victim. Second thing, what we say, we don't require teacher. What you require is actually only building. Teacher, only part-time teacher can do. And we also go into this aspect, saying that only online learning actually will help you. In Odia, amar gote katha achi Bhagavatarku je guru nakhati uddhava kahu paibu sadabhava. किए ताकू माने ये करिवो आमे जदि भावुछु सब खाली फिल्म देखि कि सिखि जिवु से संभव नुहे एंड मोर सो इन एनी प्रोफेशनल एजुकेशन खाली बही जदि कि पढ़ले सुन ही थांता आमे आगुटे कथा गाँ रे सब सुनिचु मो घरे एते बही अछि मु कोन मूर्ख एटा केबे नुहे knowledge बहुत available किंतु today how to learn that itself is a big thing खाली पढ़िले हेबनी ता काम रे करी के देखाय पड़िबो सो ए रे आमे जब जे भाबुथौ जे रैंकिंग कोन हे गला सेटा कोन ला दिस इज व्हाट इज दिस रैंकिंग it is actually created by some of the private agencies and those private agencies they have created to make money and we are really dancing on it. बहुत institute भी असंती they are very well known institute but they don't participate in this तेणु सेटा बड़ कथा नुहे बट जेटा कथा होची सत आमर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज प्रिटी पुअर we are not able to deliver and we are not able to produce actually graduates in that many numbers who are really qualities and who can serve our country. This is definitely a big issue at every level, whether it is school or college, ITI, diploma, engineering college, medical college. Can you believe today that earlier only a doctor, a MBBS or sometime actually he used to be the ultimate thing. He knew everything. Today, MBBS has no value unless there is actually MS and PhD, sorry, MD. So, definitely एगुड़ा हमको सु चिंता करिया पड़िबो. We have to first invest a lot of money. Even a very poorer country compared to us, they are actually investing something like 10 to 12% of their, GDP on the education, and we are nowhere. And one more thing, we have left the entire education system in the hands of the vultures. They are all private players. School education totally has gone to the private hand.
and technical education, medical education, they have all gone to the private hand. And what actually government is taking up? It is only liberal arts education, and in so many colleges with the very purpose of not actually producing at quality graduates or who can really do anything. They are mass producing the so-called political leaders, the so-called thousands or millions of actually the people that you find who come to actually attend the, the so-called rallies. They are indirectly being supported by the government through these colleges. And every leader, what the name, he will open first a college. So this is general education, and technical education, medical education is still worse. So in this context, I don't think actually few graduates may come up. They may really do well, both within our country, also outside, but not necessarily that their type of education, quality educational institution can produce, or we can come to that level. This is actually the reality, and we have to do it, and there is no escape from it. And all we are saying that technology will bring it outside and will produce here using actually the screwdriver things. The actual IP will be with them, and we will be doing actually the coolie job, as we are doing, let us say, the IT coolie job. Please don't think that actually we are doing any great thing so far as the information technology and computer is concerned. No, nothing actually is there. And we are actually dancing to this thing. Apple will be manufacturing their iPhones here, and then actually we'll do it. At what cost actually that? What is our value addition? Nothing. Please think in that line. I think we have to do it, and we will be forced to do it. Otherwise, actually, nothing will come, because unless we do it, we will be nowhere. Thank you. We can take last question. Thank you. Yeah. Thank you for the opportunity to ask a question. My question is to all the intellectuals, those who are present on the dais and off the dais. This is Vision Odisha 236 and 2086. Education sector रे आमर रोल कौन रहिबा दरकार बा एजुकेशन सेक्टर क्वालिटी एजुकेशन केमती हबो इधर रोल ऑफ सिविल सोसाइटी और सिटीजन फोरम इन दिस केस आमर सिटीजन फोरम बा सिविल सोसाइटी कर किछि रोल अछि कि एई विजन ओडिशा 2036 to 2286 आमे रखुचे मु एथि पई कहूची गोटे छोट केस स्टडी 2 मिनिट रे कहबी आमर मार्च 2020 रे लॉकडाउन डिक्लेयर हैला तापर समस्ते हेल्थ ऊपर बिजी रही गले किंतु एजुकेशन टाकू संपूर्ण भूली गले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा आई थिंक मे मंथ ऑफ मे रे मो होम डिस्ट्रिक्ट जगतसिंहपुर रु किछि पिलांकर मु कॉल पाइल सर आमे पाठ पढिबु केमती ए वर्ष 12th एग्जाम दबु केमती से समय रे जगतसिंहपुर रे 36 कॉलेजेस से कॉलेज रो जतक टिके एडवांस लेक्चरर थिले सेमान सहित मु कंसल्ट कली फोन रे सेमान कहले आमे जाननु केमती कोन ए विषय रे केमती पिला कोन पढाबो कॉलेज तो बंद अछि आई हैव अप्रोच देम रिक्वेस्टेड देम कि आमे गोटे ऑनलाइन मीटिंग रखिबा सेमाने कहले केमती हबो मु गूगल मीट रे तांको प्रोसेस प्रोसीजर 1-to-1 इंटरेक्शन परे सेमानक सहित कथावार्ता कली एवं तीनटा मीटिंग पर समस्त सहित दे आर एग्री टू स्टार्ट ए ऑनलाइन कोर्स एंड अगस्ट रे आमे सेटा फॉर फर्स्ट टाइम इन ओडिशा मु दिल्ली रही मॉनिटरिंग कली कैन यू प्लीज आपनकर स्पेसिफिक क्वेश्चन मु करची दैट्स व्हाई कि जदी आमे टू कोविड समय रे एंटायर गोटे जिला को आमे एजुकेशन प्रोवाइड करि पारिलु विदाउट सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट तापर गवर्नमेंट ताको नवेम्बर ना डिसेंबर रे आरंभ करि पारला ताहले सिविल आमे जदी चाहूचे 2036 रे कि गोटे समृद्ध ओडिशा करिबा सेतरे
सिटीजन कर कौन रोल रहिबा दरकार सिटीजन फोरम रे कौन रोल रहिबा दरकार एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट करदेले हबनी किंबा टीचर को ट्रेनिंग दे पठेदेले हबनी सिटीजन माने केते आयर अछंती सिटीजन फोरम केते अछंती आ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा वर्तमान भारतर गोटे मात्र गवर्नमेंट जे कि सिटीजन मान को इन्वॉल्व करिया पई मो स्कूल मो कॉलेज अभियान आरंभ करिछि एंड आमे जदि कंट्रीब्यूट करि परिबा एक सुंदर एजुकेशन सिस्टम को आम स्कूल रे मो निजे जो स्कूल रे पाठ पढ़ी इंट्रोड्यूस करि परिबा केवल आमे जदि खाली भाबिबा कि आम कतिके आसिले आमे कोन करिबा बा जस्ट सेमिनार माध्यम रे सब किछ करि परिबा नै आमे एठी जेते अच्छे समस्ते टिके टिके जदि प्रयास करिबा 36 रे ओडिसा निश्चिंत भलो हिजो धन्यवाद थैंक यू सर थैंक यू सो मच आमे ग्रहण करछु निश्चित भाव में सिटीजन इन्वॉल्वमेंट बहुत या myself Dr. Sushant Kumar Bagh. I am from University of Delhi, Department of History. I did my MA, MPhil and PhD from JNU, and right now I am teaching in Aurobindo College. But I feel very pain inside when I see the higher education system in Odisha, because many of my friends are teaching in either in Ravenshaw University or Gorakhpur University or in Utkal University. But when I feel sometimes, we will not have any professors. Our universities are not going to any professors. We are not going to, our university is in deep crisis, particularly with regard to collegiate education as well as university education. So what are the focus that should be given, and what is the solution NEP is going to provide? I want any one of you, any one of the panelists. Please answer. Yeah. Higher education. Higher education. That is what I am. Collegiate as well as higher. Thank you. Please. Still, college higher education. Ma'am. Last question. His question is very, very significant and important, and I am linking to sir's question as well. The universities, how are our university changing? And with the deficit of the human resource, particularly higher education teachers. NEP 2020 talks about motivated and energized teachers. Helana, Kintu, first thing is that we need to fill up the vacant position. And also, ये जो गोटे ट्रैप रे अच्छंती ना contractualism in higher education, that is also affecting. So the very concept of university need to be debated, deliberated in the current context in higher education. Odisha is really suffering from teacher deficit. Almost all departments lying vacant with the position of professors. And I'm just linking how do you build the identity of university? He is very proud to say, even I'm proud to say, I'm the product of Delhi University. How many of us are really proud to say, I'm product of Utkal University? We are. We have come from there. But जो गोटे यूनिवर्सिटी रो आइडेंटिटी को देखिया को गले ता भितर केते रिसर्च होची केते पब्लिकेशन होची एंड राइट काइंड ऑफ वर्क होची से रिफ्लेक्शन टा धीरे धीरे जेमती उत्कल यूनिवर्सिटी गोटे इमेज थिला पॉसिबली इट इज मूविंग टुवर्ड्स ए वेरी डेटोरिएशन लाइन ऑफ डेटोरिएशन. हाउ डू वी सेव आवर यूनिवर्सिटी? थैंक यू. Thanks, panel speakers. It's the time for felicitation. I request Professor Satyabhushan Das to felicitate our speaker, prime speaker, Professor Damodar Acharya. You can take offline. No, what is the question? Thank you very much. We are winding the session. Wind up and 2036 रे शिक्षार भविष्य तो उज्जवल कामना करी हमें वर्तमान सेशन को वाइंड अप करछु एवं सब स्पीकर मान को धन्यवाद जनाऊछु बहुमूल्य मतामत देथिबारु. प्रोफेसर दामोदर आचार्य को आम सत्य भाई
फेलिसिटेशन करेंगे गोटे छोट आमर मोमेंटो दौरान तो प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्रोफेसर निरोध कुमार दास प्रोफेसर प्रगति आनंद अभी के तो जस्ट लॉन्च पर सेशन बेसी एनर्जी हवा दरकार बेसी ताली हवा दरकार बेसी एनकरेजमेंट हवा दरकार सो प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर ऑल स्पीकर ऑफ दिस सेशन थैंक यू प्रोफेसर बलराम प्रोफेसर अमरिंद्र बेहरा मु रिक्वेस्ट करी शाश्वत भाई आउ संतोष भाई को स्टेज उपरे आसीबे आमर मॉडरेटर आमर प्रिय प्रोफेसर सत्यभूषण दास भाई को गोटे छोट फलक आउ गोटे थैंक यू नोट दवा गली जीव सत्य भाई तमे जेमति होउछो गली जीव शाश्वत भाई एंड संतोष भाई Fourth session, challenges in health, hygiene and sanitation. It's a great pleasure to invite our speakers to the dais. Dr. Pavan Gupta, Director of Surgical Oncology, Max Institute of Cancer Care. Dr. Ashok Chaudhary, Additional Professor, Institute of Liver and Biliary Science, Delhi. Dr. Vishnu Panigrai, Group Director, Fortis Hospital. Dr. Achisman Mahapatra, Executive Director, GREET Council, our moderator. All the best, sir. Thank you. Over to our moderator, Dr. Achishman Mahapatra. Thank you. Please request each and every member, delegates and guests, please settle down yourself. It's a humble request to all our delegates, please settle down yourself. Shall we get started? My request is to get seated. Please take the tea, but get seated. Be seated here. आपण बसी पड़ंतु कारण जो गेस्ट अच्छे जे आम शुणा से प्रति असम्मान हो जब न बसवा ये है तेणु आप समस्ते बसी पड़ू कृपया कर समस्ते बसी पड़ू कि बाहर को जातुनि आई रिक्वेस्ट नाउ अर्चेसमैन स्टार्ट. So good evening everyone. Namaskar. My name is Archesman Mahapatra, Executive Director, GREET Council. By education I am a medical doctor. आ पाखा 15 वर्ष है फुल टाइम पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजी रिसर्च करुँच मु नोएडा रुए शुणाऊनी आ पाकू माइक नहीं कौची शुणाऊनी
Am I audible? सुना हो जी? Perfect, ठीक है। तो मोर इंट्रोडक्शन तो दे सारी ऑलरेडी, बट मो पाखरे जो मैंने बसचंदी दे आर वेरी एस्टीम्ड, वेरी एक्लेम्ड. Let me reintroduce them. To my left is Dr. Vishnu Prasad Panigrahi. Sir is the Group Director of Fortis Hospitals. To my right, I have Dr. Pavan Gupta. He is the Director Surgical Oncology, Max Institute of Cancer Care and founder ICAN Care. So cancer patients who sir operate karanti, our ICAN Care is very famous in terms of cancer related mobilization, education and tobacco quitting and all. I have Dr. Ashok Chaudhary. He is the additional professor. He is an additional professor at Institute of Liver and Biliary Sciences, New Delhi. Sir, transplant hepatology re काफी famous. Plus निजर organization through रे भी ILPF through रे बहुत अधिका social mobilization करती liver education, liver health related, right? So what we will do is we'll try to keep it non-formal, sir, and engaging. But before we get started here, let me ask you a couple of questions. Like you just need to raise your hand, okay? आपण मान भीतर केत जण भाबंती जे ओडिसा रे health बहुत rapidly improve करूची. Population health, yes. Only two people? 3, 4, 5? Okay. You also feel so? Yes, madam. Yes, acknowledged. केत जण भाबुचंती जे ओडिसा रो लोक माने बेसी अल्कोहल पियंती कि बेसी टोबैको नियंती एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया? मेजॉरिटी. इंटरेस्टिंगली आमर आज जो प्रोग्राम अच्छे विजन 2036 2086 विजन मीन्स विजन इज रिलेटेड टू लीडरशिप, राइट? So we need to evolve as leaders and somewhere we need to develop vision. And our population is about 4.3 crores. India ra पाखापाखि 3%. India ra 140 कोटी संग कंपेयर करले 3%. We are just 3% of the population, but we are making fantastic name, right? आज जो 20-25 वर्ष तले जेतले मु मेडिसिन रे पस्थिली ओडिसा रे टोटल 3टा मेडिकल कॉलेज थिला. आज रो डेट रे 15टा मेडिकल कॉलेज अछि, right? So we have improved, fantastic. Congratulations to ourselves. Right? Yes. How's the Josh? But hi. Okay. Right. So with this context, we also need to know that hypertension बढ़ुची, diabetes बढ़ुची, under 5 mortality हमरो कमी ची किंतु neonatal mortality, maternal mortality high अच्छी. So complex challenges. 15 वर्ष रे बहुत rapidly हमें grow करिचे, improve करिचे, but very complex challenges. With this background, let me get to my first panelist. Sir, Odisha is at crossroads. We know we are improving, but we are at crossroads. And over the past 10 to 15 years, the state has like evolved leaps and bounds, both public health sector रे, private health sector रे भी. बहुत private medical colleges, private corporate hospitals भी आसी जाइए. माने आपण सर गोटे corporate hospital रो director, chain of hospitals. Now suppose ओडिशा तार हेल्थ केयर डिलीवरी बढ़ावा चाहूँगी कि चाहूँगी सबू लोक हेल्थ केयर को एक्सेस करि पारंतु. एथिरे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दी जन को रोल अच्छी. बट आपण केमिति भाबुचंती माने हाउ टू सिनर्जाइज दिस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड आल्सो इंप्रूव एक्सेस? व्हाट चैलेंजेस एंड व्हाट विजन वुड यू हैव? फर्स्ट ऑफ ऑल सूर्य को धन्यवाद करी कि मते मंच निमंत्रण करचंती. एंड टू डू जस्टिस टू प्रवासी ओडिया एंड द विजन, आई वुड लाइक टू से समथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ प्राउड ओडिया. इफ आई एम सक्सेसफुल ओडिशा माटी रो उठी एससीबी रो आसिली, दिल्ली पीजी कली, चित्रा रे ट्रेनिंग नेली, न्यूजीलैंड ट्रेनिंग ले. 10 वर्ष मु लेक्चरर थी एससीबी मेडिकल कॉलेज रे. नॉट दैट आई एम अ कंप्लीट कॉर्पोरेटाइज्ड डॉक्टर हियर. 10 वर्ष लेक्चरर थी. तापर last 30 years I have been working in Apollo, Fortis, Max सब जगह आरंभ करके I am now heading the medical operations for the ऐसे. अच्छा, मोर कहवा उद्देश्य है कि that आम आग सेशन रे it is a very interesting session. Health and education मो मतरे it is the society रो सबुतर important pillar. But एबे कौन है कि समस्त आम वॉक द टॉक करूनु, खाली टॉक द टॉक करूचु, भाषण चलचे खाली. आई एम बीइंग ऑनेस्ट हियर. वी आर
not even 4% is in education, not even 4% in health. Across the country, dekhibe. Kintu, and the other thing, pardon my words, because it is not a political, it doesn't have political relevance, so the powers to be are not focusing on this. So the accountability is also at the background. If you have to do justice to this thing of Vision 2036, our 13 years rahila, jebe Odisha 100 years haba. So what are the things to do? So my first pitch is that if you look at going in 10 years after Odisha got its identity, 1946 re good ICS officer thile tanko na hala Mr. Vibhore committee report 1946, 1 year before independence present hala. That is a very good template which the Indian healthcare setup took up. Tara basic foundation thila primary healthcare, which will cater to about 40,000 population. Dita doctor rahibe, nurse rahibe, public health by focus thila, sanitary inspector rahibe, chatta midwife rahibe, dita dai rahibe, ta pura rahila secondary health. So these are the two basic things. Not that बहुत कम हो Indian healthcare sector. This means that our mortality, your longevity has increased from the below 50s to nearly coming up to 67 to 70 in some places. So a lot of good work has happened. But if you have to do justice to the Vision 2036, my first pitch is that the Board committee is a very good document. We should not trash. Machine कौन होगा कि हमें नया document उड़ा असला में थोड़ा फोड़ दो dustbin रे and we look at that. So the Board committee report is a very good template. So if the basic healthcare जो हम करीबा at the primary health center, secondary health center, that will help us because the previous session रे होतला we have now become the largest country in the world. We keep talking about demographic dividend. But what does the demographic dividend require? They require education, they require how do we keep them healthy. So the workforce will be from the age group of say mid-20s to the 50s, for example. That is the core age group. How do we give them the proper education? So the skilling has to be just giving them a degree is not enough, which came up that how do we make them skilled so that they'll be the proper workforce. How do we make them, keep them healthy? So this is where our healthcare system comes in. So the primary and secondary is something very important that has to be focused on. That is another thing. Rightly said, आमे पास कला लोग 3टा मेडिकल कॉलेज थिला मात्र एबे सरकार भी बहुत मेडिकल कॉलेज कलानी प्राइवेट भी हलानी मोर कहबा उद्देश्य हला एबे आपण जे ओडिसा मैप रे देखिबे एबे मेडिकल कॉलेज गुडा को अन्य विभिन्न ज्योग्राफी रे अछि एबे if the hub and spoke model can be done where the medical college is the main hub and attached the surrounding area let the administrators and in the senior IS officers who are taking care of that, the healthcare administrators there, map out that and let the respective medical colleges, state government medical colleges become the hub where there will be a seamless transfer of knowledge, patients, training. If that interface can happen, that's a very good way to start it. I would have public health public health is now being pushed at the background. Delhi ro achanti apon Lutwins Delhi dekhantu because that same time re planning heitala etiki borsa hale etiki rain water storm water drainage haba katha setik palebo. But if you look at all the new areas as India is becoming more and urbanized, amara jitla ame good sanction koruchu, public health planners have to be also involved. These public health planners involved habe, we will give a good support to the society there who will one of the reasons of every alternate years, every third year, huge dengue outbreaks. And one of the reasons is this, improper planning, and this is not confined to Delhi, it's both state halani. So more कहबा कि Odisha भी it's still a rural economy, but आस्ते आस्ते urbanize होची. So as urbanization increases, because it is a time now, जो दिल्ली है गलाने में कुछ change कर पाएगा नहीं. Odisha रे जेमिति urbanization बढ़िबो. So my humble request is that before that we must see that the urban planners and the town planners, they go hand in gloves. They plan it out before they give approvals. So this is there. I would just call about
diabetes and hypertension. This is a major issue that's coming up. So again, to keep people healthy, most of the important causes of kidney failure jo hochi, dita karan, diabetes and hypertension. These can be controlled. But at the, so if our health care, primary health care, secondary health care center and now that is where technology comes in. Technology is an enabler. Now with this data being captured, you can map out each and every patient coming in, blood sugar trends kono achi, because samastanga prakar glucometer hochi, diabetes hele. So glucometer Bluetooth ire apna mane that connectivity re se je apna doctor thibo se jani paribo kete sugar achi kete. So they controlled a well controlled diabetes will help you prevent you having kidney issues, lung issues, eye issues, brain issues. I would tell same thing with blood pressure. A well controlled blood hypertensive behaves like a normotensive. So I think so this is something that we have to do. And another thing which came up is that we must work in unison. And Sarkar samasto job dei paribani. Jodi kahiba that, then we are fooling ourselves. So Sarkar has to be the enabler. They have to see that we people are taken care of, good governance. Healthcare is a very good employment generator. One is to keep people healthy. The second is to be employment generator. Any hospital dekhibe, more than 60% of the workforce are ladies. More than 60% of the workforce are ladies. A lady taking home money spends it properly. We men don't spend it properly. हम लोग थोड़ा फुजूल का खर्चा करते हैं. मानिए, दिल पे हाथ रख के बोलिए. So what I'm saying is that female employment, we talk about female employment, female empowerment. Healthcare is another modality to work on it. Inside the healthcare setup is one part. Outside the healthcare ecosystem, there's another chain who benefit, right from the auto drivers to taxi drivers to the small people who provide meals to the people who supply equipment to the hospitals. So there's a huge ecosystem outside. So my request is that health and education, let us urge the government to keep a thing up by 2026 to increase our budgetary allocations from 4 to 8% in health and education respectively, and work backwards. What are the things to do? So this is my submission. Thank you. I just missed out on something. I'm sorry. Public-private partnership. 2 years I was fortunate to, I had gone to Bhubaneswar as the CEO for KIMS. And that time, COVID broke. And it was a wonderful initiative of the government to get the private players to come in. So it was a public-private partnership. We started with KIMS. I was the CEO of KIMS that time, of setting up 500 beds in Bhubaneswar, 200 in Baripada, 200 in Balangir, and 150 in Pulwani, with wards and ICUs. So and this was replicated with others, with Ashwini and others across the state. So unlike Delhi, Delhi ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ 2020-2021 ରେ ଲୋକ ଦୌଡୁଥିଲେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ ବେଡ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା ବେଡ୍ dedicated COVID beds thila. So public private partnership has a role. Please, so let us work together. We should not be that private is just taking the big bucks and going away. No, private is also part of society. Thank you, sir. Broadly, you touched upon so many issues, but I'll flag a couple of them. One is innovation, as he said, like we need to innovate PPP models and other frugal resource mobilization, whatever you say, efficient models. And at the same time, a strategy lagayବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ କାରଣ ଆମର ବହୁତ rapid progress ବି କରିବାର ଅଛି plus synergy ବି ଆଣିବାର ଅଛି ସବୁ ବିଷୟରେ. So unison, we must work in unison. Public health and then public health capacity engagement, board committee, at least meeting those standards and going beyond IPHS standards. So fantastic points, sir. Well taken. Audience को मैं request करी भी जे आपने टिके attention दियो तो हमें भी चाहूँ जो time टा को catch up करिया पाएं because we are running late ना session तो हमें catch up करिया पे चेष्टा करूँ. My next question to you, sir. आपने इतने social entrepreneurship रे involved अछंती and एक रकम बहुत active अछंती as a प्रवासी ओडिया. आपने कौन लाऊँ कौन करेगा था हमको मैंने हम state पाएं और बाहर रही कि भी हमें कौन कर पाएं. Thank you. मु प्रथम रू कहबी POVS सूर्य भाई
सूर्य भाई टिके बसवा को पड़ो आपन को एंड ऑल जर्नलिस्ट फ्रेंड्स मु समझ रिक्वेस्ट करी किसी पॉइंट्स अच्छी मुझे 16 पॉइंट्स आपन देवी सेटा टिके फोकस करंतु आज आम डिस्कशन शुड गो एज ए फ्रेमवर्क फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एज ए विजन मुझे दुटा पार्ट कर गोटे लगे टारगेट 2036 बिकज 86 हम जानने पहुंचे दैट मे बी द विजन बट टारगेट भी 2036 प्रथम है कि रूरल हेल्थ सबुठ फास्ट जिन दरकार इंडिया लिव्स इन कंट्रीज 70% लोक रुहती गाँव में किंतु 70% ट्रीटमेंट इज सेंटर टू द अर्बन सेटा को जीवार अच्छी सो फास्ट इज रूरल हेल्थ स्ट्रेंथेनिंग द रिवर्स ट्रेंड आमे भाविबा कि लोक गाँव में रही गाँव में ट्रीटमेंट हूँ कहीं गाँव में गोटे लोक ट्रीटमेंट है से जो रहा फार्मासीस्ट भुवनेश्वर टाउन आस धक्का खाऊँ 5,000 टका दरम पाँच रोचे रास्तार खाई पाऊनी से 5,000 टका से गाँव में दरम पाइब लोक सर्विस देके राजा भाया चली पार निज घर रही तो रूरल हेल्थ स्ट्रेंथेनिंग शुड बी द पॉइंट 1 देन मुझे कहे इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन सबुठ आमर हो कि सेक्टर इनवॉल्वमेंट हेल्थ रास्ता जाऊँगी एजुकेशन रास्ता जाऊँगी रोड से जाऊँगी आपड़ जानते रोड एक्सीडेंट इज द मोस्ट कॉमन कज ऑफ ब्रेन डेथ जोठी आम ऑर्गन डोनेशन करिपरिबा किंतु ना कोऑर्डिनेशन हो पारुछि होउछि आउ गोटे जिनस चीनी पुलिस चाइना पुलिस घरे छोट छुआ को शिखेले कि बापा तो घर बाहर जब हेलमेट पिंधिबेनि घर जावाई तो मना करूँ आम यटा को एजुकेशन रे करि पारि थांते हेल्थ एजुकेशन स्कूल एजुकेशन करिकुलम इनवॉल्व करि पारि थांते बाय इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन हुए तो आम गुड़िए पब्लिक हेल्थ को एड्रेस कर जो आम डिस्कसन करुचे आम जाचे पेट बढ़ले बड़ा हम छुआ सब बापार पेट पर कूदी मार कहे बापा पेट बढ़ुची एटा कम कर तो बापा सब भावे हाँ गला बेलू मुझे कौन करुच्ची बोलिकी सो लॉट ऑफ थिंग्स आम घर स्टार्ट कर जोटा कि आम कहूचे इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन हेल्थ एजुकेशन हेल्थ अदर डिपार्टमेंट सबको इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन तापी दरकार थर्ड रे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आम समस्ते कहीदे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी बट रेस्पन्स आम कौटी नौचे आप मन थी वर्ल्ड हेल्थ देला 1,000 कोटी टंका ओडिशा रे सबू हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स दिजापी मुझे थी कोरापुट रे वर्षे पे मो हॉस्पिटल रे एवरीथिंग लेटेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स थुआई बट सब ताला पाँच जम पड़ी कहीं से किए यूज कर जानी क्या यूज कर जना नहीं यूज करा फैसिलिटी बिल्डिंग रे इंस्ट्रूमेंट आसिकला लाइन दिन को 18 घंटा कटुची कौटी करेंगे 3टी स्टाफ अच्छी से कम करूना कहीं ट्रांसफर होती रिलीवर कहीं ना ओडिशा कटक कोरापुट कटक आसी पारना लैक ऑफ इंटरेस्ट तो आपको एड्रेस करने को अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पाई ऑल थ्रो देन फोर्थ इज कैपेसिटी बिल्डिंग आम कैपेसिटी इज नॉट द बिल्डिंग मुझे कहि अच्छा एस्टिम्ड पीपुल्स कि आम एम्स प्लस करुचे भुवनेश्वर में सॉरी एससीबी को करुचे कि इट विल बी 3,000 बेड मोर फैसिलिटी देन एम्स अरे भाई आम समस्ते बुझे बिल्डिंगटा कले हॉस्पिटल हुए आम समस्त को लगे कि बड़ बिल्डिंग मैंने भीतर सब भल थी इट इज नेभर वी नीड ए गुड टीचर गुड स्किल गुड आदि से आज दिन में डॉक्टर आप देखूँ मुझे हेल्थ सेक्टर में बेस्ट डॉक्टर्स आप 40 ना शुणुवे सारिज ग्रुप डायरेक्टर आउ आम ओडिशा भी 40 चाहिए सर केवे भी जापरेंगे तो आमर आक्रस देखो जो प्रति सब्जेक्ट बेस्ट डॉक्टर्स नॉट इन इंडिया आम गोटे ओडिया डॉक्टर्स ग्रुप भी करूँ आक्रस दि ग्लोब अच्छा नो माया जो आम कहूँ वर्ल्ड सब बेस्ट ता भीतर आम 4टा ओडिया डॉक्टर अच्छा कहीं ना आम से नहीं पार सेटा को आम करें तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रथम है कि आमर जो आजिकल दुनिया रे आशा सिस्टर अच्छा जदि आशा सिस्टर जब जान लगे गोटे ग्लुकोमीटर नहीं गाँ गाँ बोलिक सुगर टेस्ट कर तो डायबिटीज आम से प्रिवालेंस स्टडी कर कम्युनिटी स्टडी हो पार जो आप दमन मूवी देखिले मलेरिया है कहीं इट इज सिंपली कैपेसिटी बिल्डिंग गाँ लोग घंटा देकी बसले भी मशारी नहीं जाओ शुओ बर्तमान प्रथम मशारी लोग तो मशारी टाणी न जोड़की से कौन खेले टेनिस खेले कौन जो भी खेल होता तो दिस इज ग्राजुअली वी इनवॉल्व सो दिस इज द कैपेसिटी बिल्डिंग वी नीड सेकेंड जोटा सारे कहते लाइवलीहुड आम हेल्थ को आज पर्यटन भाविना गोटे सोर्स ऑफ इनकम लाइवलीहुड बोलिक कहीं आप भावतु आज दिन में इंडिया रे जो ग्रोथ होची अर्बन पर नेक्स्ट विल बी फ्रॉम द रूरल आ रूरल 70% विल बिकम अर्बन तो केते ट्रांजिशन हम 140 crores अच्छी जदि हम भावुचे 36 बेलू मे बी 170 crores द पॉपुलेशन इक्वाली मोर आउ से आमको दरकार लाइवलीहुड केमी हो पार आप सिंपली भावतु गोटे गाँव में आजिकल मुझे मो गाँव में कहूँ से गाँव में गोटे डॉक्टर पाखे से पिलाटी जाइए 10वीं पास कर 4 वर्ष रहा क्लिनिक रे कंपाउंड किसी ना बट से गाँव में सी सब बड़ डाक्तर ट्रीटमेंट 24 आवर अवेलेबल अच्छी सो दिस इज हाउ कैपेसिटी बिल्डिंग आम जब करें डॉक्टर करने फैसिलिटी लेट जो गाँव में फार्मासीस्ट गो गाँव में जो नर्स जी हॉस्पिटल अटेंड अच्छी आज ट्रेन करा आप जानते मुझे कोरापुट से फार्मासी से करे खून सफा
खून सफा माने गोटे इंजेक्शन से दिज्व मल्टीविटामिन इंजेक्शन दब हलदिया सालाइन दिगला परिसर सब विटामिन हलदिया बाहरी गले कहले तो खून सफा हो गला रोग ठीक हो न हो किंतु मेंटल बूस्ट तार अधा रोग से गुड़े पड़े जाऊँ दिस इज हाउ वी कैन मेक ए रूरल कैपेसिटी बिल्डिंग केमिति करि परिबा लाइवलीहुड देखरी तापर एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम लोकल टू भोकल आपण भावतु जो आम एंटरप्रेन्योरशिप करुचे मैन पावर दरकार हो फास्ट आठू सस्ता कोटी गाँव में मिलबनी आपण आज भावतु आजिकल गरम दिन कटन ड्रेस दरकार हो मेडिकल भी कहूँ कटन ड्रेस सब ग्लोव्स तैयारी होची आमर आम ये भुवनेश्वर करा कौन दरकार आप जातु आम गाँव में करूँ कोरापुट कलाहांडी बसतु आप करेंगे से कम लोक आवेलेबल आपको आराम से मिले 200 टकर लोक मिलଯିवे आम करें बर्तन गाँव सब खाऊे फ्री में मिलूँ बसी पड़े बर्तन गाँव लोक मिलूना किसी कराई व्हाई वी नॉट इनवॉल्व देम फॉर दिस कि आमर गाँव रु केमिति आम करें रूरल एंटरप्रेन्योरशिप देन सेकेंड इज अफोर्डेबल एंड अवेलेबल हेल्थ ताको अफोर्डेबल करने एवं देखो जनौषधि आसला गोटे जिन आसला आ थ्रोरे आम केमिति अवेलेबल आउर अधिका करें दैट इज अफोर्डेबल हेल्थ आउ अवेलेबल भी हबार अच्छे सस्ता कले सुविधा सब लोग दिल्ली आसपर नहीं आम कहीं आसवा चाहिए कि ओडिशा रु दिल्ली कहीं आसवा कहीं हैदराबाद जावा आप भावतु ओडिशार 50% पेसेंट भाईजाग रे इवन भाईजाग सब हॉस्पिटल ओडिया ना लिखा पुरी जमी लिखाई होटेल बंगाली सेमती हॉस्पिटल लिखाई ओडिया ना लिखा भाईजाग रे बिकज मेडिकल टूरिज्म से जाऊँ आम निजर करूने आम करें आम पाखे डॉक्टर्स अच्छे आम फैसिलिटी अच्छी आम से फोकस करने चाहूने तो दैट इज व्हाट वी नीड अफोर्डेबल हेल्थ ताकू केमिति करबा सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है सोशल सिक्यूरीटी जोटा है बट एबी जो ओडिशा आमर 2-3 पब्लिक हेल्थ स्कीम आसलानी द्वारा हो पार्टी मेक इट मोर रोबस्ट आउ आपन थोड़े कहवाक चाहिए कि वी कैन मेक मेडिकल इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस लोक पहुँचापी बहुत जल्दी जो आप टंकाटे 2 टंका जो 12 टंका देकर 5 लाख लेट सेटा भी होने पर्यटन लेट कवर देम कि मेडिकल इमरजेंसी गोटे एक्सीडेंट हेल्ले खर्च 10,000 हेनी बट से करूँ आप जानते इंडिया खर्च होची आम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर हेल्थ इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड आज दुनिया में गोटे लोक हॉस्पिटल गले ट्रीटमेंट निज पैसा दे कर 60% फेर फॉरेन कंट्रीज लेस देन 2% क्या से इंश्योरेंस आप ट्रीटमेंट करेंगे आपको 5 टंका पड़ो जो निजे कैश देवे 25 टंका 5 गुणा पैसा पड़ो बिकज दे वांट टू प्रमोट कि इट इज ए सेफ सिक्योर फ्यूचर एक्सपेंसेस तो वी नीड आउट ऑफ पॉकेट मिनिमम तो आज डेट रे नेशनल इंडिया आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस 54% आ ओडिशा होचे 66% ओडिशा ताठू अधिक खर्च करुच्ची माने आमे समस्त करुचे निजे मेडिकल गले निजे दउचे बट व्हाई आमे ताऊ काहे कि इंश्योरेंस कर पाने तो अवेलेबल हेल्थ करा पे गेले क्वालिटी हेल्थ 40 से आसिया पे गेले आमे एम्स पे धक्का खाइबा अपेक्षा वी कैन गेट इजिली ट्रीटमेंट वी कैन गो फॉर इंश्योरेंस तो सेटा को आमे केमिति करि परिबा बहुत कम्युनिटी इंश्योरेंस अछि जेमि देवी सेठी करथिले तांकर बेंगलोर रे कि सही हॉस्पिटल सराउंडिंग के समस्त दिन को टंकाटे लाखे देबे दिन को टंकाटे लाखे देई कि लेट इंश्योर योर हेल्थ फॉर द लाइफ आपन जोड़ा पर टंकाटे आपन देले भाई खराब लागो केबे लागिबो नै वर्ष को 365 टका देले आपन हेल्थ हैला तो मु सेटा को चाहूची कि आमे सेटा केमिति करि परिबा देन नेक्स्ट इंपोर्टेंट रहउची सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आपन एते समस्त गोटे एनजीओ अछि एनजीओ मैंने बहुत किसी काम कर आउरी टिके फोकस करूँ हेल्थ बेस्ड नीड बेस्ड आम से केमिति करबा एंड शुड बी रूरल फोकस्ड कि सही लोकंर प्रॉब्लम से सॉल्यूशन थ्रो दी करें आप गोटे सिंपल जिन कहबी रक्तबिंदु केमिति आसले जानती सबुठ इंडिया सबू यंग झील मानकर हिमोग्लोबिन कम हुए तापर कारण क्रम है एक्सेस ब्लीडिंग आ गोटे आयरन डेफिशिएंसी कुर्मी जो आयरन केमिति दिज्व लोक आयरन टैबलेट दिहला से नहीं चाल पोदेकी पलैले डाक्तर सरकार देले मागणार खाइबा तो सेठी केमिति गोटे एनजीओ आसला नीड बेस्ड सी कौन कला रक्तबिंदु माने आमर जो टिकिली पिंधुचे टिकिली भितर रहा आयरन इंजेक्शन से लगे से आयरन बॉडी भितर को जीव दे गॉट हिमोग्लोबिन इंप्रूव है सो दिस इज वेयर द इनोवेशंस नीड बेस्ड सोशल सेक्टर रे आमे करी हेल्थ चेंजेस आनी पारिबा देन सेकेंड हेल्थ टूरिज्म ऑलरेडी वी हैव कवर्ड एडवांस हेल्थ इंस्टीट्यूट इन स्पोक एंड हब मॉडल आपण भावतु जमीती मुझे कहली कि आईएलबीएस को ओडिशा डेली आसुंदी ट्रांसप्लांट पे एम्स आसुंदी 40 जाउछंदी आमे व्हाई नॉट डू ए सिंगल ओनली इन ओडिशा आमे जदि 800 कोटी टंका गोटे करि पारिले बहुत बड़ हॉकी प्रोग्राम फॉर 1 ईयर आमे 800 टंका 800 कोटी रे बहुत बड़ गोटे बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट करि परिबा जो मु कहूची मो दिल्ली गवर्नमेंट आईएलबीएस जो हेची वन ऑफ द बेस्ट इन गवर्नमेंट सेक्टर टू हैव अ इंस्टीट्यूट लाइक दिस सेटा भी सिंपली स्ट्रांग पॉलिटिकल विल पावर जो हैला एंड इज कवरिंग आम से भाई गोटे ओडिशा रे कले लेट 30 डिस्ट्रिक्ट आम 30टा हब मॉडल हो बिकॉज नाउ टेलीमेडिसिन इज अवेलेबल एवरीवेयर लेट द डॉक्टर वन गो देयर और नो देन टेलीमेडिसिन कैन कनेक्ट वेयर वी कैन गिव क्वालिटी अफोर्डेबल अवेलेबल हेल्थ इन आवर होम स्टे टू एवरीवन
That is what I can say. And for this, we need extensive digital health and telemedicine help. I think things has picked up during COVID. आम एटा को आगू आगू बढ़ेबा डिजिटल मेडिसिन टेली हेल्थ केमिति हेई परिबो आउ मोस्ट इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इज अवेयरनेस एप्रिसिएशन एंड कंस्ट्रक्टिव मीडिया मु आज पर्यंत कहबी डाक्तर मान जति काम करती आई नो मु डॉक्टर बोली कहू चाहू नहीं बट भावतु आपण को जगह जीवे गोटे प्रोजेक्ट बनइबो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनइबो काम आरंभ हो बट गोटे कॉम्प्लिकेशन आपण नहीं आसबे से डॉक्टर पाखरे आपण बसबे ही हैज टू गिव डिसीजंस विदिन 15 मिनिट्स सम हिस्ट्री सम एग्जामिनेशन सम ट्रीटमेंट दो पई स्टिल वी आर नॉट एबल टू एप्रिशिएट देम समस्ते खराब न थांदी देयर इज ब्लैक शिप्स इन एवरी प्रोफेशंस इन एवरी वर्क बट आमे माने डॉक्टर खराब को कहले गूगल रिव्यू डॉक्टर खराब देले किंतु भलर केबे दौने मु सेति में रिक्वेस्ट करे समस्ते लेट एप्रिशिएट बोथ द थिंग्स डू एप्रिशिएट द बैड आल्सो आल्सो एप्रिशिएट द गुड आल्सो सेटा को बैलेंस करले गोटे डॉक्टर भाई काम कराबे काहे आज डेट रे मो जते पेरेंट्स बसछन केही चाहता छो डॉक्टर पढ़ाया पे इवन फैक्टली जो मो पो पढ़लानी मो पो आम दिजन डॉक्टर हला से मना गला बाबा मो डॉक्टर हेबी नहीं बिकॉज दे सी व्हाट द सफरिंग्स वी गो फॉर आ जो पेरेंट्स माने डॉक्टर अच्छे से जानते छुआंकर कौन हालत तो ये दिन को दिन कौन हो मेडिकल ट्रीटमेंट रे क्वालिटी स्टूडेंट नंबर एवं कमुची आज मत भी डर लगुच मु रोग हेबी से मत जे ट्रीट को तार कैपेबिलिटी कौन थी आज जो सिस्टम एवं बुमेरांग होती मु ग्यारंटी दूसरी 2070 बेलू आम जो बुढ़ा हाँ से बेलू मेडिकल हेल्थ विल बी ओनली कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड नो इमोशन नो टैलेंट बेस्ड जोटा एबे अमेरिका फेस करुच्ची अमेरिका रे गले डाक्तर कहीं देखु ना से डाक्तर देखते कौन 50टा टेस्ट करते गोटे रिपोर्ट देखते हो जाए आसूँ कहीं कहीं ऑपरेशन कले कहीं जावाक चाहिए बट नाउ द बेस्ट ब्रेन्स आर मुविंग कहीं सेठी गले सेकेंड है कथा गोटे डाक्तर है बेलू सी जीव गाँव को आ सी मागणार पैसा मागणार जो ट्रीटमेंट कला ऑपरेशन मीडिया बाहर कि गोटे इंजीनियर गोटे कोटी पाइला गूगल जॉइन कला से आसो मीडिया तो दिजन सांग जो पढ़ले द ऑपरेशन वाज डिफरेंट कि तू डाक्तर जीवन जाक फ्री सर्विस दब डाक्तर छुआ अच्छी डाक्तर फैमिली अच्छी तो सी गाँव को जावाक पड़ो मागणार करा पड़ो कि सांगे बाहर कर मुझे मीडिया मानू कहि प्लीज ट्राए कि सबू डॉक्टर मान सबू स्टोरी बिहाइंड आ गोटे स्टोरी थाए आटा को आप्रिशिएट करूँ देखिए डॉक्टर मान सोसाइटी में चेंज आसो आ बहुत जिन हो लास्ट वेलनेस जोटा को आम प्रति गाँव में पहुँचार अच्छे जोटा भी सार कहते प्रिवेंटिव हेल्थ आमको दरकार आम सुगर है ब्लड प्रेसर हार्ट अटैक है ट्रीटमेंट कले लाइफ अधा चीज पड़ेगा आइदर पेन रे पड़ेगा या पैसा पड़ेगा लेट प्रिवेंशन टू स्टार्ट योगा डाएट न्यूट्रिशन हेल्थ यहाँ को आम आग को नहीं पार तो ये मोर 15 पॉइंट्स थिला मु होपफुली करी पॉइंट्स के नोट कर ये कैन आई सर्कुलेट यही बेस रे किसी से सॉल्यूशन सजेशंस फ्रॉम पीओबीएस शुड गो टू द पॉलिसी मेकर्स Thank you, Ashok sir. Very comprehensive points. 15 points. 15-point agenda. We can enrich further. We have some more points. We'll add to it. Some reality check. India रे पाखापाखी 30% जदि urban 70% rural ताले ओडिशा रे 83% rural. गोटे डेलीवरी पाई जदि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंडिया 3000 टका लागुची एवरेज ओडिशा रे 5000 टका लागुची. So definitely there are miles to cover. Points well taken, sir. Pawan sir, I have some questions for you. You engage with a wide, like so many stakeholder constituencies, and you also know कि आमर रथ बहुत जोर रे बढ़ी चलची गडुची राइट बट आमर रथ एक्चुअली गुंडीचा मंदिर आड़ को जाऊँगी कि हाउ कड़े जाऊँगी राइट एंड जदि आमको गुंडीचा मंदिर आड़े नबार अच्छी by 2036 with a vision for 86 as well, what are the capacities that we need at different levels and what technology we need to adapt? Thank you, Arisman, and we have Dr. Vishnu, Dr. Ashok giving such comprehensive thoughts that what is the requirement. My question to everyone here, I'll just debate it 1 minute. How many of us sitting here are health conscious? No, I'm asking how many are health conscious in the sense everyone wants good health. समस्ते चाहते मोर हेल्थ भल रो बट हाउ मेनी आर हेल्थ कॉन्शियस दैट एवरी वन ऑफ यू हैव डन एटलीस्ट वंस ए ब्लड शुगर एक मिनट सुन लो हैं हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन ब्लड शुगर इन योर लाइफ टाइम जस्ट लुक एट द नंबर्स मैडम जी आप जो बोल रही थे आप देखो खुद उठ करके कितने लोग हैं हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन योर ब्लड प्रेशर इन योर लाइफ टाइम इन लाइफ टाइम आई एम टॉकिंग बट वी हैव टू डू एटलीस्ट वंस ए ईयर ठीक है Can you see, Madam ji, what is the situation? So, what is important is we can be idealistic.
वी कैन बी आइडियलिस्टिक, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, वो जी ऐसा करेंगे, हम उनको एडवाइस दे देंगे, बट वी हैव टू टेक आवर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी. Excuse me, can thoda sa voice, can we, yeah, can we maintain a little discipline? Okay, thank you. So what is important, okay, so what is important is taking responsibility, not giving responsibility. Let us all, जितने भी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, all those who are sitting here, let us take some responsibility that we will first take care of our own health. And own health, as wellness, Ashok said, holistic health is one of the most important. You don't have to go to the allopathic doctor, you don't have to go to Fortis, you don't have to go to Max, or you don't have to go to ILBS. But doing a simple things for yourself. See, Odisha is going to increase. Odisha lifestyle is going to change. We are going to develop. No one can stop us from development. We will have the best of the trains, we'll have the best of the cars, we'll have the best of the, every house will have a fridge, every house will have a TV, every house will have everything available. Every person will have 2 mobiles, right? But are we health conscious? We have to take responsibility. That is what is important. If we are looking at 2036 and then we are looking at 2086, lot of changes are going to take place. We are now at 5G. Maybe at that time we may be having 10G. We will be the fastest people in the world. India is going to grow. India is not going to be stopped by US or anyone. And Odisha is going to grow. Definitely Odisha is going to grow. But with all sitting here, until we take the responsibility, I am not saying each one of you have to take the responsibility. Yes, I am going to do something for the health, and of course the education is another part, but everyone has to take the responsibility. Just let me put it one simple thing. 10 years back, when the study was that the tobacco consumption was only 37% population. Right now, it is 51.5% population are taking tobacco in India, in Odisha. It is much higher than the Indian level. And we know one single thing, tobacco is going to be the biggest hazard. It is causing health problem, it is causing financial problem, it is causing environmental problem, it is causing family problem, it is causing professional problem. It is the biggest problem in the world. And it is percolated down in every corner of India, of Odisha. Person doesn't have food to eat, but he will definitely take tobacco. Right? Hypertension, diabetes is another area which is increasing. It is increasing. So if we are looking at 2036, first and foremost is we have to take responsibility कि हम अपने आसपास सभी को educate करेंगे. See, literacy and education is two different things. We may be literate, but we are still uneducated. We may be having MBBS degree, we may be having MS degree, we may be having MCH degree. We may be literate. We have got lot of degrees. So many degrees are available. You can pay something and get a degree, right? But education is very important. Educating everyone is very important. So when he says percolating down, the education has to start from the school, not from the hospital. Education has to start from the, he's saying how to develop, how to make a health. So like moral stories that we used to hear during our childhood, moral stories in the school, similarly health should be a part of the curriculum in the school for the teachers, that they should be able to teach to the children how to manage a good health, a good lifestyle in the future. Obesity is increasing in Odisha. It was never there. Obesity was not there. We were always thin and having well-built people, but obesity is increasing. Obesity is going to cause. So lifestyle diseases, I'm going to stop now, I know. So lifestyle diseases is very important. My one very important request to everyone sitting here, are we ready to take responsibility? Yes. How many? How many? I still think that young children are not ready to take responsibility, right? Every one of us have to take responsibility. Then only we can change from 2036 to 2086, when we will have, what I foresee is that we can have a virtual hospital. Virtual hospital, as he was saying, digitalization, I visualize a virtual hospital where, like Paytm, I see on my mobile, I want to contact any person. I want to book a bus in somewhere in Tamil Nadu, I can book a bus on Paytm, right? Similarly, if we have some mobile application which is a virtual hospital, I want to reach out Dr. Ashok at Delhi from sitting in say Dhenkanal district, somewhere in Dhenkanal,
I should be able to do it. Right? That type of visualization we should look at 2086. We don't have to go to Fortis Hospital. We don't have to go to any physical hospital. We can reach out. We can do everything. We can get ourselves treated at the most, because the most important part of expenses, health expenses, is travel and food rather than just the management. So I stop here. Thank you so much. And I look forward. Every one of us have to take responsibility and not just give responsibility. Thank you, Pawan sir. That's a very good pitch to all of us. See, in health economics, what we do is we convert everything to dallies and callies. So when the population falls sick, we lose a lot of economic over there, right? We have this responsibility of not falling sick. We as Odias, if we take care of our health, our state will prosper, will grow rapidly. So we take charge of that, sir. Thank you for this point. With your permission, what I'll do is, I have more questions for you, but I'll cut it short now. Let's engage with the audience if they have any questions. So, jodi apan kichi, sir, time hochi ta pakhare gote question. Two questions. So, before I hand over to audience, I have a quick question. So, generally mo Barampur ase. So, suppose more immediate family member ko kichi hola, mo more state government ro medical ko pura bharosa na kari mo immediate Vizag chale जाए अबा नले हैदराबाद जाए सो सेटा कहीं हुए माने आम मान भितर यही भावनाटा कहीं आसनी कि आम डॉक्टर्स आम मेडिकल फैसिलिटी एत भल था कि पारुनी सो ये क्वेश्चन मुझे जानवा चाहूँगी सो कैन आई आंसर मो ना गोवर्धन धल नहीं नहीं मुझे आंसर करोडिशा जो कहते ओडिशा लॉट स्कीम्स हैव बीन रोल्ड आउट ये जो विजु स्वास्थ्य कल्याण जो रोल होती आप ये करेंगे यू कैन गेट सर्विसेज ओडिशा मिल जो सर्विसेज नथ बाहर भी बाहर स्टेट रे भी से किसी हॉस्पिटल को एम्प्लॉय कर तो देयर लॉट ऑफ नॉलेज डेफिसिट मुझे कहना चाहूँगी पब्लिक कि दैट मैंने आम समस्त ओडिया डोंट माइंड माय वर्ड्स किंतु आम ओडिया मैंने बहुत निजक निंदा करूँ दैट आमर किसी चलनी बहुत किसी कम होती विजु स्वास्थ्य कल्याण मत कहूँ परा से यू कैन डू हार्ट सर्जरी नी सर्जरी एब्डोमिनल सर्जरी सिस्टेक्टोमी सब जिन हम से किंतु लोक से नॉलेज नहीं इस्तेमाल करना मु गोवर्धन धल कहूँ मु अशोक चौधरी सर को धन्यवाद अच्छा जस्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू लुक एट दिस इज we ourselves are the important people who can portray who is a good doctor or not a good doctor, right? Probably Odisha doctors जैसे बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, right? They are not able to portray themselves that they are the as good doctor as anyone sitting in Delhi or Bombay or Hyderabad or any place. So that is one very important, that they are not able to portray themselves. Today itself I had a patient who is from Odisha. She has an endometrial carcinoma. They asked me should I come over to Delhi for treatment. I very clearly said we have got good doctors in Bhubaneswar itself, in Cuttack itself. You can get treated there itself. You don't have to spend all the money to come to Delhi, right? Yes, I am sitting in a corporate hospital. I need more patients to come into, as sir will say. But there are good doctors available in Odisha, in Bhubaneswar. We, our own fraternity, like all of us, have to promote them. That is very important. And I gave name of 2 doctors, and now they are getting treated. Of course, the facilities may be different, and we have got good facilities in Bhubaneswar. We don't have to travel all the way from Bhubaneswar to take treatment. गोटे नहीं आपन दुईटा जिन अच्छी गोटे कहले डॉक्टर प्रॉस्पेरिटी आउट पीपल डॉक्टर प्रॉस्पेरिटी देखो मैक्सिमम डॉक्टर दिल्ली एम्स चंडी सब जो पढ़ुन से ओडिशा जाऊँगी नाउ मैक्सिमम डॉक्टर सेट रहे आप बिलीव करें सिस्टम उपर वन दुई जिन लगे आम ओडिया मान थट है अलग मुझे कहे मुझे मो डेली फोन आसो आगे हिंदी में कथा हे सर डॉक्टर अश्वती मुझे जानी लोकटा ओडिशा कौन तार नाम महाराणा कि से मोसे कहते आगे हिंदी में कथा हे सर डॉक्टर अश्वती बात कर सकता हूँ आम मानकर यहाँ ही सब दुटा प्रोब्लेम तो है तेणु यही दिन देखा आम मैंने सब भाविले बाहर लोक भल कर आम कहे बाहर लोग भल कर आम लोग बहुत भल करते आउ दिल्ली में जिते कहि मुझे गैस्ट्रो लिवर जो बेस्ट इंडिया डॉक्टर कहे हेतु 10टा लोग इंडिया नॉट ओडिशा को दे आर ओडिया से भाईजाग अच्छा हैदराबाद अच्छा दिल्ली में अच्छा चेन्नई अच्छा अच्छा भाई आपणर गोटे क्वेश्चन अच्छी प्लस सार गोटे क्वेश्चन नवा आम
only sorry, time is very precious, only 2 questions. आपन क्वेश्चन आ सार को क्वेश्चन नहीं जा बाकी समस्त टी ब्रेक की कोनोस टाइम रे आपन कथा ही जबे हां मो अशोक बाबू को धन्यवाद दउची कोविड समय रे समस्त जिते दिल्ली रे प्रवासी ओडिया अछंती से को अशोक बाबू फोन कले से समय रे ट्रीटमेंट दउथिले जे ट्रीटमेंट मध्य बहुत लोक भल होइचंती से धन्यवाद दउची आ मोर गोटे क्वेश्चन आपण मैंने आप फोर्टिस हॉस्पिटल अच्छा आपण मैक्स अच्छा एटी अच्छा आप किम्स ILBS फोर्टिस मोर प्रश्न हो जो लोक मैंने रहिले हायर लेवल रे से माने इंश्योरेंस सेक्टर रे आमे जे जीवा से मानकर इंश्योरेंस प्रॉब्लम नहीं से माने करि चलचंती जदि आमे ग्रास रूट लेवल जीवे आपण हमर बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे ओडिशा गवर्नमेंट करिछि से माने पाउछंती पॉलिटिकली आम सेंट्रल गवर्नमेंट करिछि जोठी सेंट्रल गवर्नमेंट रो जोठी अछि सेठी ऑलरेडी आयुष्मान भारत से माने को जगह चालुछि को जगह चालुनी बहुत जगह रे सेठी जो जगह चालुछि से माने साधारण गरीब लोक पाउछन जो माने राशन कार्ड पाउछन जो माने अपर मिडिल से माने भी कवर हो जाउछन जो माने लोअर मिडिल से मानकर आर्थिक अवस्था भलो नाही कि जो माने अपर मिडिल भी लोअर मिडिल हो गले सेमानक आर्थिक अवस्था भल ना सेमानक पई कौन करा जाई परिवो इंश्योरेंस सेक्टर रे कि हेल्थ सेक्टर रे कौन करा जाई परिवो बेटर हम सेटा दरकार सर शॉर्ट रखिए सेटा जोड़ा कहले सेटा ऑलरेडी हमें कहितिलु प्रथम जिंस दीटा जिंस तार अछि टू एस्पेक्ट देखले गोटे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रे शॉर्ट टर्म व्यवस्था रे हला प्रथम जोड़ा हमें कहतिले सोशल बेस्ड स्कीम्स एटा को सिस्टम रो फॉल्ट म आज डेट रे कहबी जो बीपीएल कार्ड बेनिफिशियरीज से 40% लोक बीपीएल कार्ड एलिजिबल नुहंती आउ जो 40% पाउछंती से माने एक्स्ट्रा बीपीएल कार्ड पाउछंती धरिक कहीं एबे हमर लाइफ स्ट्रगल हम गोटे बीपीएल कार्ड सब ट्रीटमेंट पाइबो तो सेटा को सिस्टम स्टेगलाइन करंतु फर्स्ट सेकंड ए जो ट्रीटमेंट आपन कोसिम कॉस्ट प्रॉब्लम एटा अमेरिका रे होनी काहे कि एटा लॉन्ग टर्म विजन सोशल सिक्योरिटी आमे जदि हॉस्पिटल ग्रेडिंग कले कि बेस्ट हॉस्पिटल 40 रिव्यू पॉइंट इज 5 सेकंड इज मैक्स इज 4 ILBS सरकारी 3 अछि तो लोक से चाहिए कि जो गले सब ट्रीटमेंट फ्री रे पाइबी बिकज आई हैव ए सिक्योरिटी नंबर आई हैव ए सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम तो से जो जीव हॉस्पिटल भल कहीकि से हॉस्पिटल इनकम बढ़ो से अधिक रिव्यू पाइब तो समस्त कंपिटिशन कले सर्विस देवे तेणु से समस्त एक्सेप्ट करेंगे तेणु आमको सर्ट टर्म विजन जोड़ा आप कहते दरकार कि लोक मैंने करूँ आउ जदि सिस्टम प्रोब्लेम से सिस्टम केमती बढ़ेकी देवे से आवेलेबल करातु ना मैंने आपण मैंने अच्छा सोशल सिविल ऑर्गेनाइज हेल्प करूँ आउ डॉक्टर मैंने भी चैरिटी कर भी हेल्प करेंगे तो समस्त मिसिकी सर्ट टर्म करवा बट लॉन्ग टर्म गोल शुड बी द सोशल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस केमी आम सिस्टम आनीपर ताले मैक्सिमम सिस्टम प्रोब्लेम हटाई से किए हॉस्पिटल को प्रचार करा दरकार पड़ोनी बिकज सेठी गले ट्रीटमेंट फ्री एठी गले ट्रीटमेंट फ्री एठी गले ट्रीटमेंट फ्री बट आपन जो आसे आपन भाबे कि मु सेठी गले भलो ट्रीटमेंट हला आ पांच लोक को सेठी की जाओ तो दीटा जिन सब अछि शॉर्ट टर्म विजन नेबे पे लॉन्ग टर्म विजन सेटा पे एटा मोर रिक्वेस्ट थैंक यू अशोक सर गोटे सेन मैडम सर लास्ट क्वेश्चन नवा से या पूर्व सेशन रे भी हाथ उठेते तांको माइक मिल नथला ओके डन कोई नहीं Dr. Pawan Gupta, the way you just shared your experience to take the responsibility by the people, why not to encourage people to go back our traditional system of medicine like Charak? That said that food is medicine and medicine is food. If we take our food as the way we have taken during Corona time, we survived because of that only. And the way you have got a excellent health, whenever a patient is visiting, you tell them, I do this, you do this. Need not to prescribe any medicine or test or all the thing, then there will be no problem for a visiting hospital. Agreed, and holistic health is the in thing. We have to work on the holistic health, and everyone, that is what I said, every one of us have to take the responsibility, our own health, that includes food, the way we look at ourselves, exercise, diet, yoga, everything that comes in, the way we look at our own health. So that is what I have said. Holistic health includes yoga, Ayurveda, food, whatever it is, lifestyle. So that is very important that we have to take care. One very important thing that before I just give over the mic is that every one of us have to take responsibility, because Odisha, the tobacco is increasing, and it is going to increasing from 37, it has become 51.5. In very short, it will become 70% if all of us don't take responsibility. So हम लोग जितने भी यहाँ पर सिविल सोसाइटी वाले बैठे हुए हैं, मेरा सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, please become tobacco marshals for your organization.
make sure that your organization, your public, wherever you're working, your region, your village is to become tobacco free. Are we ready to take that responsibility that every one of us will become tobacco marshals? Yes. Thank you. So thank you. That brings us to the end of this session. My esteemed panelists, thank you so much for sparing time. Thank you so sir. much. But Thank just you. a minute, sir. Thank Just you. a minute. Before thanking you, thanking our speakers, I need to introduce few special guests here today in this evening. Binay Patle, ex-RS Patrale, ex-RSS Whole Times National Resident of Bharat Bharati, stationed at Pune, Maharashtra. Thank you, sir. Second, Omkar Swer Pandey, founder, Commonwealth Thought Leaders Forum, CEO, Golden Signature Research and Consultant. Third, Sri Shrikant, filmmaker, son of former Vice President of India, Sri Krishna Kanji. Thank you. Now, the time I request our moderator, Dr. Achesman Mahapatra, to felicitate our thanks to our speakers, Dr. Pavan Kumar Gupta. Again, I request our moderator, Sir Achesman Mahapatra, to thanks to Dr. Vishnu Panigrai, sir. This is the time for our Ashok sir, Ashok Chaudhary, Additional Professor, Institute of Liver and Biliary Science of Delhi. Now I request Jagannath Bhai and Susant Bhai. Jagannath Bhai and Susant Bhai, please, thanks to our moderator today's, the session moderator, Dr. Acheshman Mahapatra.
And without energy and natural resources, it's unthinkable to see the whole development process. So we have, very eminent speakers in this. I think I'm hardly, nothing under them, and they are very highly experienced people in different sectors, from oil, natural gas, from industry. We have, we have speakers like Mr. Sri Subhamay Bhattacharya, and he is basically a consulting editor, Business Standard. But before, he was into this media, he was also in the government, he was in Indian Information Service, then he left the job, and most interestingly, he written many interesting books on coal and whole politics on the coal, basically Indian coal stories. So that's very interesting. Also, he has written that coal and sketches the option for India's future energy. I think he's the perfect person to speak on this energy. And most importantly, I think CT Odia bhi bujhanti. Tanu, it will be not so difficult. Mudedi Odia re bhi ame kichi koi pariba. Tanu, thank you. Welcome, sir. We have Mr. Ranjan Mahapatraji, and he is Director, Indian Oil Corporation Limited. I think he is a very experienced person in this field. He is basically an engineer from BITS Filani, then XAM, and he played a key role in supply chain management process and logistic in the Indian Oil, and he was part of the global, expansion of the Indian Oil. So I think he is more into this resource and basically natural resource, oil and petroleum. So he'll speak on more on that aspect. So welcome, sir. And we have Mr. Kitish Kumar Nayak, and he is a very, I can say that he is an acclaimed figure in this oil exploration, and he is part of the oil industry more than 30 years, and he worked with this Oil India, then shifted to Ken India, and he played a key role in Bhandut oil field, which was defunct for 27 years, and he actually rejuvenated it. I think it is a remarkable job he has done. And he's a great engineer, and he's now working in the CEO of Carry Group. So I think we have eminent speakers in this group. So before I move to this session, I think we have a very limited time. But I would like to say that, Odisha has now recognized by that CA, Central Electricity Authority, that Odisha re amara energy bahut achi, surplus. We have a surplus of around 148.7 million units surplus. Last year it was detected by CA. And apart from that, however, if you see that this, because we are shifting, we have a huge coal and we have a good natural resource as a water. And so hydro and thermal power are key factors for Odisha's energy sector. And as you will see that, Odisha was, samay thila kuha houtla je Shakti capital, like Talcher was known as the, energy capital of Odisha. But however, I would like to say that Odisha is far behind in the producing renewable energy, which is, I can say that it's not a good sign considering this climate change, zero, net zero. We are talking of SDG. So I think Mr. Bhattacharya will speak more on that because he has a better understanding that on this issue. Then we have another issues of natural resources. I think many of us know that Odisha is huge natural resources on bauxite. We have huge resources on iron, chromite. But the issue is that we need to see how we can use these natural resources. We should not go for like Banana Republic only depend on these natural resources. Our speakers today told more about the skilling of this labor. We need more skilled labor, service sector industries, apart from this, agriculture. So how we'll use this natural resources judiciously, that is also very critical. Though unfortunately we don't have oil so much, I think maybe there are some things are going on. Maybe Mr. Kekanak, maybe Mr. Mahapatra will give some more about this, what is happening in this oil sector in Odisha. So keeping in this mind, so I'll start with this discussion. We'll have a 3 minutes, so we'll have from 3 minutes every speaker. So I'll start with Mr. Bhattacharya, maybe Mr. Kekanak. So please speak on what you think that, we have a thermal energy, we have, limited, water resources for this
power plants, but we have also this oil, like iron, magnites, and also bauxites. So considering all these, issues of thermal as well as natural resources, how you see that? Because these are basically, limited resources. These are not renewable. These have a limited life. So considering these aspects, so how you see that, your vision for this, for coming to 20 years, 30 years, because the whole energy is synonymous with development. So how you see this, these aspects considering the sustainable development? Hello, thank you, Piyush Babu. Thanks for giving me an opportunity and inviting me to this session by this Pravasi Odia. So first coming to this energy mission, there are two things. One is 2036 vision and 2086 vision, especially relevant to Odisha. So we have some statistics which is defining 2030 and 2050, but I have done a lot of research and come back to here. There are many sources of energy. So now the primary sources of energy is coming from coal, then petroleum and other liquids, natural gas, renewables like hydrogen, wind, solar, etc., and nuclear energy. So in 2036, we intend to achieve reduction of the coal uses, and the total from the total energy mix, it will become expected to become 25% or lesser. And petroleum and other liquids, I'm also telling that what we are expecting coal, our Odisha can contribute much more because our people are very efficient. I will come to the Odia use later on. So 2086, we intend to bring down this 25% dependency on the coal to 10%. Then petroleum and other liquids, where my expertise is there. I am from ENP, Mahapatra Sahab are there. So from 30% usage in 2036, not now it is much more, to 30% to 15% in 2086. So oil and gas and coal is going to remain. It is not going to vanish because our energy needs are going to increase. It is going to manifold by 2086. Some natural gas, which is now lesser now, it is by 2036, it will occupy about 15% of the energy demands, and 2086 it is going to by 22.5%. Then renewable energy, wind, green hydrogen, wind, solar, etc. In 2036 it is going to be at 25%, and by 2086 we intend to become 50% of the energy consumption of India and also Odisha. And nuclear energy, it is now much lesser. So by 2036 we intend to go it by 5%, which by 2086 we intend to achieve by 2.5%. Then I am coming to various sources. Energy demand is increasing every day. So in Odisha we have lot of scope for the biogas, and because lot of companies recently in one of the startup conclave, I met two companies met me, and I am trying to groom them and handhold them. So they are doing biogas business in Odisha. One is Fulbani in other places. Maybe the other companies have come up in Odisha. So I will request Mahapatra Sahab and others to support them. We should handhold these people and come up because they are already established. So in the wind also, in the land and the offshore, there are a lot of opportunities in Odisha coast. So we can install the offshore wind platforms and generate the wind energy. Then regarding green hydrogen, just before the COVID, I had brought a company from Norway called Greenstat, and other companies. They had met the Honorable Chief Minister and the Principal Secretary to CM. But just after the 15 days, the COVID broke out. Now again, we have to revitalize that. So Honorable CM had instructed to open up the first green hydrogen setup in Puri in front of Jagannath Temple. So, and next to it, there is a LNG and CNG. So we have a LNG terminal near now the Dhamra. It is going to be optionalized. Government has intention to make this in the near future LNG and CNG highways. Also, IOCL is our leader. They are going to opening the stations which has diesel, petrol, CNG, then hydrogen, then electric. So he will elaborate more. And now, what shall I tell that the IOCL R&D center is the leader is now in the country
for this university. In fact, our Honorable Minister Nitin Gadkari Sahab is riding the hydrogen vehicle, which is refueling from the center in the Faridabad. So green hydrogen cost is getting closer to grey hydrogen. Electrolyzer manufacturing can take place in India. Our new startups, we should encourage the startups for the electrolyzer manufacturing. And most important is to education of renewable energy projects are the most important. And energy efficiency alone can reduce about 44% of CO2 emissions in the required level of by 2050. We need a determined leadership for the smoother energy transitions and maintain the sustainable development goals. Air travel is going to increase substantially by 2086 or 2036. So there will be increased demand of this fuel, but still with the renewable fuels are going to replace the aviation fuels by 2086 or 2036. Skill and determination of Odia technical persons are immensely high. I at my personal level have taken about 400 people in my drilling discipline ENP to abroad. They are all working well. Some people are getting salary from $6,000 to $18,000. And during COVID, some people had come back, but all of them had gone back. I am so proud of them. Wherever I have deployed my Odia people, they have made me proud. I am so proud of my Odia youth, and their grasping power is very high. So we should compare Odisha with Sweden, Switzerland, Norway in terms of renewable energy. Thank you. Thank you, Mr. Naik. So now I will request Mr. Bhattacharya to give. Okay, then yeah, fine. Yeah. Okay, Mr. Mahapatra will speak about his thought on the vision 2036 and 2080. So what he thinks, how Odisha will become a hub for energy sector. I will speak more about the renewable energy. Thank you, thank you. समस्तंको मोर नमस्कार. प्रथम कथा है जे मत भल लगुच ओडिशा रे हमर एनर्जी इंटेंसिटी जतिक अछि ताटू बेसी लोक भीतर बसचती वर्तमान कारण ओनली 35% सीट्स आर ऑक्युपाइड एटलीस्ट ओडिशा रो एनर्जी इंटेंसिटी ताटू टिके बेसी अछि. Thank you. Anyway, let me tell you about first of all प्रथम कथा होछि जे कोनोसी रिसोर्सेस नेचुरल रिसोर्सेस जोटा अछि आमे जेतिकी आमे प्रथम जो आम जानूले से इट वाज अबंडेंटली अवेलेबल राइट आम मैंने यूज कले यूज करी भल भाव यूज कले एंड एज वी प्रोग्रेस वी हैव यूज्ड इट मच मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड वी हैव नॉट गिवन ए टाइम फॉर इट टू रिप्लेनिश इटसेल्फ यही जिनसटा जो आज बोधे नेचुरल रिसोर्सेस क्षय हो क्षयटा एत जे आप जानते मुझे जाननी कि भल कहीपरि आप गोटे अर्थ शूट डे. Anybody who is youngster who knows about Earth Shoot Day? Anywhere? Kiss relation कहिबे. Anyway, not much youngsters. एटा होची जो आमे जतकी resources use करूछे 1 year रे replenish सेटा भी होची. Suppose we use the same thing, then in a year it will be balancing it out. But if you use it more, यदि आमे बेसी use कले ताले इट विल गेट ओवर दैट पोर्शन विल गेट ओवर ऑन 1 डे. जमी 2022 रे एटा ए पॉइंट मु दवा कहीं चाहूँ इट्स वेरी इंपोर्टेंट नॉट ओनली फॉर ओडिशा फॉर एवरीवेयर एल्स. 2022 रे 18 जुलाई रे हमर कोटा सरी गला वर्षकर कोटा सरी गला. दैट मीन्स आमे जेतिकी यूज करिवा कथा तारो 1.8 टाइम्स बेसी यूज करिछे सो दैट वी गॉट इट ओवर. इफ दिस कंटिन्यूज obviously we can't survive. And we just have one planet. That is where renewable energy is required or renewable sources of energy is required. Number one. Number two, कौन सी देश प्रधानमंत्री कहते आम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हवा. In fact, in another 10 years we should become 10 trillion economy. निश्चय आम दरकार कारण आमर इंडिया ओडिशा भी तादर इंक्लूडेड. We have to go a long way. आज आम पॉपुलस कंट्री हो जाइए तथापि आमर एनर्जी कंजम्पशन इज ओनली 1/3 ऑफ द वर्ल्ड एवरेज. जी एनर्जी कंज्यूम हम से जापर जे केते आमर जीडीपी हम एंड वी आर इट इज रिलेटेड टू दैट. तेणु आम जब बढ़ा को चाहिए आम जान डेफिनेटली आमर कंजम्पशन एनर्जी कंजम्पशन बढ़. बट देन वेयर शुड इट कम फ्रॉम. बढ़िया कथा कहले
Nayak Babu apro je energy requirement from fossil fuel will remain definitely. It has to remain, otherwise आम अवस्था भी यूरोपियन कंट्रीज भाया हम जोटा जिते यूक्रेन वार है, they realized that they had stopped all sorts of production ways and they are now into problems. So it has to be balanced out completely, but it has to be sensible. Dita jinsa hala je eta nishchay rahibo, there will be a requirement of energy, very much required, but how do we source that energy? Ajiro जो हमें पाई देखुचे एनर्जी पाई देखुचे से एनर्जी पाई रे almost 70 to 80% is from fossil fuels. So coal हो, oil हो, सबुतरु आसुची. That needs to be converted. More and more renewable energy has to come, and it has to come in a way that we meet the incremental requirement of energy. I would say sangere हमें progress भी करी परिवा और maintain करी परिवा the globe जो global climate change को reduce करी परिवा. We all have taken, I mean हमें भाव नहीं चे along with Prime Minister 2017 रे करीबा net zero हबा. In fact, some of the companies, I am very proud that way. Indian Oil has taken a challenge on itself कि हमें operationally net zero 2046 रहवा चाहूँ. Similarly, मतलब भल लगे लगे sentence जोड़ा पवन गुप्ता कहले, we have to take responsibility. We don't have to give responsibility. We have to take responsibility of maintaining this. How much of, how much of carbon footprints we are creating now? Can we reduce it? How do we reduce it? It has to start with me. If we all keep AC temperature at 27 degrees, it is reduced. And समझते हमारा अभ्यास है आजकल जो हमें समझते कहूँ जे बहुत गरम बाहर है it is because we have made ourselves like that. Otherwise say 35, 38, 40, 42 होउतला मैं देखुतली पूरा analysis रे is not much. 1 degree बढ़ी थी but we have made ourselves like that. इटा ला 3 number. 4 number है ला requirement जेती की अच्छी energy requirement, we have to all work together to make it available. I mean, coming back to Vision Odisha, it's a very nice topic. I must compliment Das Babu and entire team for really thinking about कि 2036 रे गोटे vision और 2086 रे गोटे vision. 2086 रे room रू बदे कहीं नथी बे. I don't know. 2036 रे vision at least हमें देखिबा बहुत जन देखि परिबा. What is that vision? Can we really, at the end of this conference, can we write down what is that vision? बढ़िया कहले चौधरी वो 15 point कहले, that's very accurate. Simply, can we have a vision for ourselves ki where we want to be? Just last point कही करी छाड़ुची परे पुटी. Lots of investment. I am proud, at least proud as an Odia, that my company Indian Oil is investing a lot. In fact, आप लोगों जानी थी बे just किसी दिन तले, in fact, my chairman visited Honorable CAM and we announced 61,000 crores investment in Orissa, in Paradip refinery, petrochemical career. Petrochemical is also another way of reducing carbon footprints in the way, because that's very much required. It's a other way around. We are not producing it for vehicles or for consumption in industries, but rather we are using for the petrochemical. So petrochemical intensity of Paradip will be increased. So I will come back again. Yadi permission debe pare. Thank you. Next cycle. Yeah, thank you, Mr. Mahapatra. So he gave a detailed outline, his vision, and how this basically oil sector is very important, crucial. Yeah, it's known. Even this Russian war was eye-opening and created a new thoughts basically on this oil and basically how it will save this, how it is very crucial for this energy security. We have Mr. Bhattacharya. I think he has gone into the depth of the economics of this whole coal, and he understands the politics better. But the issue is that, we have to go for the alternative. So I would like to hear from you that, what is this coal politics about and how it is impacting, Odisha, and do you think that it is the right time to push for the alternative and go beyond coal? Hello. Yeah. Vachu, thanks a lot.
Thanks to Mr. Das and everybody out here at Pravasi Odia organization. I have stayed in Orissa for quite some years. I used to be fairly good in speaking in Oriya, but after coming back to Delhi and several years, my ability to understand Oriya is very clear. I can't speak, and I'll make a fool of myself if I try to speak. So I'm so sorry, but I just wish, especially when I was hearing Mr. Mohapatra, I wish I could have also spoken as fluently, and I really can't, and my apologies. What I wanted to say, and since we're talking about energy, I think the most powerful source of energy in Orissa is the people's love for the state. This is the biggest source of energy I find in that state. I mean, when I was there, even otherwise, I found people being willing to say that, yes, I want to do something for the state. I like it. And as long as you do that, I think it's also what I would call a renewable energy. So it's renewable and it's energy, so together it makes for a wonderful combination. So you're on the right path. So there's no problem there. Beyond that, let me say, I wish the state of Orissa did not have the coal or other energy material under its soil. Frankly speaking, Oriya people are industrious people. They can work hard. They're meritorious, bright people. Across the world, the regions wherever there has been sources of minerals, fuel, coal, oil, gas, the lives of people above those fuel have been hard, have been bad. It is not something to feel good about that there is oil under my soil. This is something that sometimes I often feel is a curse that many of our eastern Indian states have. And frankly speaking, for a state like Orissa, it was probably something that we didn't need. Why I'll tell you this? Let me just give you one piece of data. You all know everything. There's enough amount of knowledge going around on internet. So there's no point telling you in data whatever you know. You're all extremely bright, and probably this room has more information to tell us than we can tell you. So let me just tell you my observation. My observation is the state domestic product of Orissa is about 8.64 trillion. The market capitalization of Indian Oil Corporation is 1.1 trillion. That means it is 1/8 the size of Orissa. If this company had been a private sector company, do you think the state and its bureaucracy, and there are very powerful officers who are here, and they would know, would it have been possible for them to negotiate from a position of strength with such a massive company? Mr. Nayak was recently with Vedanta. These are base oil fuel companies are huge companies. Believe
it is because of their
कहाँ केते खर्च करेंगे आपण इनकम अच्छी एतिक अमाउंट कहाँ केते खर्च करेंगे आपण कहे ना मुझे समस्त इक्वाल खर्च करदेवी ताहले एवरेज हो पार कि सेम क्वेश्चन मुझे रेज करी एबे भी से आंसर मु पाइनी आई ऑलवेज थिंक दैट कि बजेट रे जो आम 45% खाली रखुचु 45 नहीं मे बी वी शुड कीप 75% कारण आपण तांको एवरेज को प्रथम आणतु एंड इट इज हैपनिंग इन ओडिशा इन इनडायरेक्ट वे नॉट इन ए वेरी डायरेक्ट मैनर बट आई एम हैप्पी कारण मुझे देखी एबे भी आप देखिए 5 टू 5 लाख उपर पिला खाली रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ुंट ओडिशा रे ट्राइबल स्टूडेंट्स मो पाखक आसी सेक्रेटरी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी मेंबर्स कि आगे आमे पछर रहीजु आप खाली ट्राइबल पिला पढ़ाऊँ आमको दिंतु तो आम गोटे से रिजर्वेशन स्कूल 10% अलाउ कलु प्राक्टिकली आम जो एरिया बुलिलु आम देखिलु जे थिंग्स आर कैन गेट डिस्टॉर्टेड तेणु मिनिमम ये करा आउ नो शेड्यूल कास्ट भी यूनिफॉर्म नहीं शेड्यूल कास्ट भितर बहुत जन अच्छा बहुत भल पढ़ापढ़ी माने दे आर एडवांस दे माइट बी कैटेगोराइज हिस्टोरिकल फैक्टर्स आम जानू से ब्रिटिश टाइम रे जो मैंने ये थे से लिस्ट आसते कंटिन्यू होगा 50s रे सर्वे होता सो वी डोंट नो आ रेस्ट बहुत आमर एससीबीसी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी अच्छा तो तांकर खर्च करा बट नाउ कमिंग टू दैट इज अ विजन आई सेड कि एटा आपन करिया पड़िबो ताहले आपन ये कर परिबे फर्स्ट यू हैव टू हैव ए विजन ना 10 वर्ष एटलिस्ट आम पर कैपिटा रे इंडियन एवरेज पहुँचा कि कैन वी से पाई कि ये सब करिया पड़िबो माने मु एठी रिटोरिक रे कहिदेबी हेबनी आज आई गेव द एग्जांपल 3टा पिला आपनकर गोटे जण अपाइज अच्छी आउ जनकर टिके वीक ब्रेन अच्छी आउ जनकर पूरा अच्छी सब किसी ठीक अच्छी समस्त खर्च करेंगे क्या केते खर्च करेंगे भावतु सोसाइटी हैज टू स्पेंड लाइक दैट डिसेबल्ड समबडी इज देयर वी कीप देम रिजर्वेशन कीप देम ये जो पॉलिसी होची गवर्नमेंट कंपलसरी दिस हैज टू बी डन नाउ कमिंग टू एंटरप्रेन्योरशिप जोटा हूँ मु भावे जे एंटरप्रेन्योरशिप आम ह्यूमन बीइंग समस्त अच्छी आम छोट बड़ू जन्म हो पिलाटी देखो जो छिड़ा हो जो से गुरुंडीब यू सी लुक्स बैक देखे केते रिस्क अच्छी कौन अच्छी धीरे धीरे चढ़ो टी सपोर्ट पाइब मदर ब्रदर जार सो इट्स एक्चुअली नेचुरल इनग्रेन्ड आम तापर सोसाइटी आसू जो सोसाइटी बढ़ू से अनुसार हो से अनुसार हो मारवाड़ी गुजराती कहीं एंटरप्रेन्योर्स मैक्सिमम और सिंधीज वाई आपड़ सब पाइबे कौन पाई कहीं दे हैव डेवलप्ड ए नेटवर्क अमंग देमसेल्व्स इट्स लाइक ए सेल्फ हेल्प ग्रुप तांकर सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छी जो कहते कैपिटल रेज करने को ओडिशा रे मिलूनी कटक रे मु रही एंड आई हैव सीन दी मारवाड़ीज जो मैंने कि बिल्कुल किसी नथिला जे आसते आम घरे बड़ा रोते से माने वर्तमान कोटिपति सब माने 4टा 5टा फ्लैट ओनर आम घरे जे रोते आई एम टेलिंग यू एग्जांपल्स एंड तांकर पचारे कोटी पैसा आसूची ना वो वहाँ से आ रहा है क्या बताऊँ वहाँ से कलकत्ता फिर कलकत्ता से यहाँ आ रहा है तो से पूरा सहित सपोर्ट करते कि ये सामान बिक यही जिनसा बिक कटक रे जिनस माने बाल्टी सब थिला आमर जो देखिए आगु सब पितल और सॉरी से कंसा सब मिलूला से सब प्लास्टिक जिनस गुड़ा सब मारवाड़ी आनले ओडिशा भितर जाते आप देखिए माने 80s मिड 80s और 90s पाखपाखि से सब जिनस आसला ना ओडिशा रे आपन गोटे प्लास्टिक बाल्टी पाइबे पीपुल आर नॉट यूजिंग सो से आनिले से सब कलकाटा आनिले सेमती ड्रेस पत्र विभिन्न पत्र सब आसले सो आई हैव सीन दैट जर्नी मो समय अभाव जो मुझे कहीपरि कि मुझे कहूँ जे एंटरप्रेन्योरशिप नीड्स नेटवर्क्स जेपर्यंत नेटवर्क न रप एंटरप्रेन्योरशिप करें सो यू कैनॉट से कि ओडिशा रे एंटरप्रेन्योर हवा चाहूना मुझे गोटे फिल्म देखी छोट बड़े जहाँ आम देखिलु से अनुसार आम बनू मु फिल्म देखी से गोटे फिल्म कौन देखी प्रशांत जड़े फरेस्टर गोटे ग्रीन भल स्मार्ट ड्रेस पिंध अमिताभ बच्चन को देखिली से अंधा कानून से गोटे फरेस्ट रेंजर हो कहीं फरेस्ट रेंजर न भी भावी से गोटे पुलिस इंस्पेक्टर होती से क्या बाड़ौची जोटे इंडस्ट्रियलिस्ट जोटे होटेल ओनर को आम फिल्म आमको नहीं नसीब से देखुची अमिताभ बच्चन रोल करते भल लोकटा तेणु आगे क्यारेक्टर बिल्ड हो आम छोट बड़े देखु आमको आम गोटे स्कूल पढ़ुलू जो सब पिला निहाई जाए गोटे गांधी फिल्म देखुलू आ गोटे देखुलू नसीब सो आम टीचर कौन आसी कहले आसे आप नसीब जो मैंने देखी थे आप जानते से होटेलर होती भिलियन होटेल जो मैंने बनई दे आर डूइंग ऑल दी नास्टी थिंग्स तो हाउ डू यू थिंक दैट ए चाइल्ड हु हैज सीन दैट विल बिकम ए होटेलियर जो होटेलियर को देखे मुझे भावे से कर
चाइल्ड जमती आम बर्तमान बहुत समय आम कहूँ जो मद्रासा रिफॉर्म्स है आम डील करूँ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मोर मन अच्छी केमती सब ताकरी मेंबर्स मैंने कहते जे मद्रासा या कहूँ सो व्हाट डू एक्सपेक्ट मद्रासा जो से पिलाटी बड़ हो से कौन कह तुम एक्सपेक्ट कर कि सी कह कि हाँ नाई नाई ये आमर जो हिंदू है ख्रीस्टियान है बुद्ध है ये भी मोर भाई भौणी जब कहुई से तुम भाई भौणी नुह ठीक अच्छे ना दैट्स द पॉइंट मोर कह था जमी 6 वर्ष बेलू पिलार ब्रेन रेडी हो जाए सेमती गोटे 10-11 वर्ष 12 वर्ष बेलू पिलाटी जानी था कौन करी आगे गोटे जना हो जाए आम से देखुलु जो आप देखिए करप्शन इन सोसाइटी वाई नेक्स्ट जनरेशन बढ़ी जाए आम से फिल्म देखीचु आम दीवार थिला स्पेशल जे भाई भाई को भी मारदेला से डिस्कसन है जे भाई स्मगलर भी मारदे एवं उल्टा भाई को स्मगलर करने को चेष्टा कर कि भाई मु चाकरी आसीगली पुलिस तू धंदा कर एंड दैट इज द नॉर्म नाउ इन मेनी स्टेट्स मु कहूनी ओडिशा रे देयर आर प्लेसेस जोटा इंसिडेंट कहि परिबिनी बट देयर आर प्लेसेस वेयर आई हैव सीन दैट ऑफिसर्स हैव कम एंड दे हैव डेवलप्ड नेटवर्क विथ दोज पीपल प्रूव कर पाइबेनी कि दिन दिन धरा पड़ो एठी ना ईश्वर पाखे धरा पड़ो बट दैट इज नॉट एंटरप्रेन्योर से कहे हम लोग बहुत पैसा बना दिया है बट यस वन मस्ट यू सी आम पुराना आग काल कही जाइए रीड यू नो दिस थिंग जोटा मु बहुत समय मन रख पारे बट आई कैन रीड इट आउट यू कैन सी ऑल्सो इट्स देयर इन आवर स्क्रिप्चर्स वाणिज्य बसती लक्ष्मी आम से गोटे शुणुचु खाली गोटे लाइन समस्ते जाचु वाणिज्य बसती लक्ष्मी तापर आम जानू तापर हूँ तदार्ध कृषि कर्मणि तदार्ध राज्य सेवायन भिक्षायन नैव नैव चा तमाने हूँ फॉर्च्यून लक्ष्मी ड्वेल्स इन ट्रेड एंड कॉमर्स सी इज हाफ इन एग्रीकल्चर एंड हाफ इन सर्विंग फर्दर हाफ इन सर्विंग गवर्नमेंटल जॉब्स ये लिखा ना तदार्ध राज्य सेवा मैंने 1/4 सो 1 इफ यू 100 rupees is earned in business then 50 rupees will be earned in agriculture if you are doing agriculture then 25 rupees if you go to Raj Seva मतलब government service and if you do begging bhikshayana naiva naicha but you will not get anything so ये हूँ आमर पदर्श बीसी आ से समय पुराण विष्णु पुराण एंड ऑल से सब लिखिं लक्ष्मी पुराणे तामें से एग्रीकल्चर ही था एवं जमी एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेस सब अच्छी किंतु ट्रेड यू सी ट्रेड रे यू विल ऑलवेज प्रॉस्पर because trade रे you find the gaps, you find this, and trade means not just trade but the business. So entrepreneurship is always beneficial. এই through आपण draw कर परिबे. Now coming to the troubles that we have on जो सुनुथिली बहुत समय रे because I am the national recruitment agency हम गोटे नुआ संस्था होइछि हमर ए प्रेजेंट गवर्नमेंट रे is very visionary. एटार डिटेल कहि परिबिनी but I just give you some data points. Now number of graduates averaging in India is 70 lakh, 70 to 80 lakh per year. Okay, and if you go to the 12th pass, 1.25 crores, and 10th pass 1.6 crores per year. And if you go to postgraduate, 15 lakh is. This is assay report, assessment of higher education, status of higher education, Ministry of HRD, Ministry of Education now. तो ये पिला मुझे जो कथा आम जो चेयरमैन AICT मेम्बर अच्छे कहले कि संजीव इट इज 1 crore नाउ 1 crore ग्रेजुएट्स इट्स एवरेज दिस थिंग बट 1 crore सो 1 crore जो ग्रेजुएशन है पास कले दैट्स द टाइम दे आर लुकिंग फॉर जॉब कैन यू प्रोवाइड 1 crore जॉब इन ए ईयर सो दिस इज द चैलेंज बट करने को पड़ो जदि न करेंगे यू विल गो डाउन एंड यू विल से करने कौन हम यू नीड दिस एंटरप्रेन्योरशिप माने इंस्टेड ऑफ सीकिंग ए जॉब यू हैव टू क्रिएट ए जॉब तो मत बहुत आनंद लगला जो कहले से कहले मिस्टर रथ यू वाज सेइंग ना माय डॉटर इज गिविंग जॉब्स टू 10 मु कहली बहुत भला कथा हाँ सो दिस इज दी वी शुड कीप दैट विजन एंड वी शुड नॉट फॉरगेट द पास्ट कहना आमर पास्ट देखले आम जस्ट खाली कहूँ गोटे आप जानते निश्चित भाव में बट समटाइम्स आई फील लाइक सेइंग ओल्डेस्ट पुराण स्कंद पुराण रे आपण सब जिन अच्छे आमर जहाँ देखिए आपण से जो सती जो एपिसोड अच्छी तापर से समुद्र मंथन हो सबू हो दैट्स द ओल्डेस्ट पुराण से अच्छी उत्कल खंड रे ही
श्री जगन्नाथ महात्म्य अच्छी 4000 श्लोक उपर अच्छी द ओल्डेस्ट पुराण रे आमर उत्कल प्रदेश ना लिखाई आ उत्कल कहीं उत्कृष्ट कलार देश सबकि माने व्यासदेव टाइप रे से लिखी जाइछन जो माने व्यास उपाधि थे से माने लिखी थे सो तेणु वी शुड रिमेन ऑलवेज प्राउड दैट वी बिलोंग टू द लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ एंड इंसिडेंटली जो जान ना से जानवे जे हिंदू धर्म रे शेष दर्शन होची सेठी आ जो पुरी जाइछन मेनी ऑफ यू जानते से जे जाई परिबनी अन्य कोठी से गोटे चारि आमर जो अच्छी चारटा आमर द्वारका ये से अच्छी चारि स्थल पर गोटे अच्छी से जो कानपटा हनुमान का साइड रे देखिए जब आप जापारना से दर्शन कर पूजा करदे सो दैट इज क्लोज्ड और डिटेल के पर्सनाली हेल्ले मुझे कहबी केमती श्री जगन्नाथ विषय शंकराचार्य केमी जानले आप सर्च कर विकिपीडिया देखूँ जो से भाविले सब मो कम होगा केमी दर्शन है कौन कौन है सब प्लीज सी बट मुझे कहली उत्कल खंड इज रिटेन इन दोज डेज एंड इफ यू स्टडी द हिस्ट्री एंड ऑल्सो आप देखिए मैप रे द ओनली एरिया ऑफ कलिंगा व्हिच इज अ स्ट्रिप फ्रॉम Sundarbans till Srikakulam and down, your Vizag and that. So that is the place which constantly stands. Sabu change hoch. Greece, Europe, dekhive. Many videos are there. You can just go and see, and you'll see that strip constantly remains. I say majire bhangi jauchi about that 360 days when the that Kalinga war takes place. After that again it is re-established during the age of Kharveda. And we are Buddhist, Jain, Hinduism, sabu synthetic, sabu. So Odisha is a really, jota Dr. Devendra Maji koile, really the soul of incredible India. It is really a soul of incredible India. I agree. And many others, say, kouthle je kon kariba, ame सब चेष्टा करिछु. आउ आमर all technical institutions Odisha रे आपण देखिबे सबुटी entrepreneurship encourage करा होछि. And as I said, we cannot compare with other states. Because other states रो डायनामिक्स आर डिफरेंट आमर जो प्रदेश जोटा कहली 25% ट्राइबल पॉपुलेशन फर्स्ट आप एवरेज को आणवे अनदर 20% इज द बैकवर्ड पॉपुलेशन तापर आमर ओबीसी पॉपुलेशन ह्यूज सो इट्स जस्ट नॉट टू कंपेयर एप्पल्स विथ ऑरेंजेस सो देयर इज ए बैकवर्डनेस आम जो टर्मटा को नेगेटिवली न नहीं कि रिलेटिवली बैकवर्डनेस रही सो फर्स्ट इज यू हैव टू मैच दैट then we can, but all this is possible if we have a vision, and I think that it's right time आपण माने ये जो प्रोग्राम करछनी आपण मोर my really great wishes to you, and I would also request आपण 2047 भी करंतु आउ टिके भलो भलो so both you had good panelists. I thank all the team and our Mr. Mishra and Vijaya, thank you very much for inviting me. जहाँ प्रश्न पचार पारे, thank you so much. Thank you very much, Sanjeev Babu. And a good thing, good news for all of you that we thought of having some discussion, but due to paucity of time, we will not discuss further. And no question answer session also, because before we conclude, I'll request Saurabal ji. He has some announcement for you with respect to some startup. So I'll take only 30 seconds to 1 minute to give that information to all of you. So about to Saurabh. There is the NBFC company Ugro. The chairman of the company is Mr. Satyanand Mishra, ex-IAS officer. They are into the SME lending. And about 2 hours back only, mu taku MD ru message paichi ki the desire of Satyanand Mishra ji is that to the SMEs they will give loan on much 2% lesser rate of interest than what they are giving throughout the country. This was one. And one more small thing. As I am a share broker, and as I told you that I have also built up only from Odisha, there is a company called Share India Securities. Tahaku pet 325 crore afchi. 2% they have to spend on CSR. So what they have decided last year in the tribal areas of Bihar, they have trained students for the arbitrage.
They gave a small stipend, and now they are, all of them are of their own and training other people. They have become employer itself. So today I have taken a promise from them that if in the tribal areas of Odisha, they will put many people for the training to start with, and then about 33 to 50% of them can become an employer themselves. Thank you very much. Before we conclude this this panel discussion, I would like to say something, just 1 minute, for the students, those who have come from JNU and Delhi University, and they have been with us since morning. So just a small motivation, inspiration for all of you. I don't hesitate to share it in this platform, which is related to me and my family. And this motivation is not for you, the students, those who are present here, but it is for the entire young generation of Odisha, those who are watching us. The things is like that. When I started my career, that time, 25 years back, I was getting a salary of 12,000 rupees. And that time, my younger brother, and it was very difficult for him to make the graduation. And with difficulties, he was not interested in studies, but he started his career with a small shop. And from my salary, that time, I am talking about, it is 1998, I gave him 2 lakhs, that was service loan. That from the service, every month we repay 2,000 every month, and 2 lakhs rupees I paid him in 1998. And he started his business and entrepreneurship in 1998 with 2 lakhs rupees. And today he has reached to a place where he is in a position to appoint 10 officers like me in his company. So that is a source of motivation and inspiration for the youngsters, the young Odia youth, those who are watching us today. And this is the vision for all of you. And one more thing I would like to say, that my friends, those who are studying with me in the FM college, Balasar, that time I got a job, I left Balasar, I left Odisha, I came abroad. I came out of Odisha. But the friends, those who are struggling, they didn't get any job. Today they are in a position, they are having a number of institutes. कोई दोस्त मेरा किसी का पास 2 इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया उन्होंने, कोई 2 MBA कॉलेज चला रहा है, कोई 2 स्कूल खोल रहा है, कोई नर्सिंग कॉलेज खोल दिया, and they are in a better position today. So what I intend to say is that this entrepreneurship does not prepare or does not help you to learn within these 4 walls. It is the situation which compel you to go for that entrepreneurship. And I see all of you sitting here is an entrepreneur today. So thank you very much. With this message, I conclude this session and over to the management now. Before conclude this session, I just need to share few feelings, few words with you. I am an entrepreneur. What entrepreneur is, they don't follow the leaders, they want to be a leader. So entrepreneur, this is my interest topic. I am an entrepreneur. I have 25 employees under my company, and it's within 10 years, it's now 1.6 year company. So, ମୁଁ गोटे एंटरप्रेन्योर मु जानची मोर मु गोटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब छाड़ी थी एमरसन रु आसिकी बिजनेस करथिली बिजनेस कला पर फर्स्ट 2 ईयर मते समस्ते कहिथिले काहे तमे बिजनेस करछो कोन पे करछो बट जेतबे मु कली मोर सक्सेस स्टोरीटा मो फैमिली को प्रूफ कला एंड दे really appreciate me and encourage others to do business. मो फैमिली रे गोटे बिजनेस ओनर को आ समस्ते सर्विस रे तो एंटरप्रेन्योरशिप एम्प्लॉयमेंट अदर्स and doing your own interest job, it's a great thing. So now I just want to conclude this and actually really this she is a role model for entrepreneurship for all of us today. Please give her a big round of applause. Thank you. And the way she is managing this event and contributing her own time towards this organization also, it is highly appreciated. Thank you very much. Thank you so much. Now I request SK Jana Bhai, please felicitate us our speakers, Sri BK Sabrawal sir.
I request our President, Mr. Suryanarayan Mishra, please felicitate our speaker, Sri Sanjeev Kumar Mishra, IAS. I am an entrepreneur. I always love to see a lady entrepreneur with me and sharing a stage. And I like to, I request SK Jena Bhai, please felicitate our speaker, Dr. Girija Bharat. Request Suryanarayan Bhai, please felicitate our member, Vice President, Dr. Dheeraj Singh. I request SK Jena Bhai to thanks to our speaker, Sri Bibu Prasad Rath. Then I request Suryanarayan Bhai and SK Mishra sir, please thanks to our moderator, Dr. SK Jena. Now I request and hand over my responsibility, my dash to Susant Mahapatra. Thanks to you all for vote of thanks. Before that, thanks to you all, and this is a special invitation for tomorrow event IIMC. It's a Maha Bisubha Sankranti Milana. Tomorrow is a cultural and award ceremony. So please be there up, at 11 o'clock, 11 to 5. Thank you. There is already we arrange a high tea. After this Thanksgiving ceremony, please samase sei potuku jiba high tea pai and I request all JNU DOSA kids students come to the dash for a group photograph with our speakers. And thanks to you all for the kind support and help. धन्यवाद हाँ जय जगन्नाथ धन्यवाद समस्त को मु भावुनी आउ कि शुणवार अवस्था समस्ते अच्छा पछरे हाइटीर व्यवस्था अच्छी निश्चित रूपे ग्रहण करूँ से किसी खाଇବା व्यवस्था अच्छी नास्ता तो करिकिना एपटे जातु समस्ते धन्यवाद एते समय देवाई धन्यवाद समस्त समस्त को मो काली विथ फैमिली इनवाइट करुच्ची समस्ते आसबे अगर आपनकर आसपास के ओडिया फैमिली भी अच्छी